आता. बरं चालेल, ठीक आहे मग पाठवून द्या त्यांना. हा ठीक आहे, दुपारीपर्यंत काय प्रॉब्लेम. हा तुम्हाला भेटायला सांगितलं. चालेल असू द्या. ठीक आहे ना, ठीक. बरं चालेल. काय साहेब काय म्हणता, या मग आतमध्ये तिकडनं या, मग बंद करता येतील. ब्रह्म दक्षाश्विदेवेश भरद्वाज पुनर्वसु हुताशवेश चरका प्रभृतिभ्यो नमो नमः. पातंजल महाभाष्य चरक प्रति संस्कृतैः मनोवाक्काय दोषाणां हर्त्रे अहिपतये नमः. नमो नमः. शासकीय अनुदानित निजी तथा अभिमत विद्यापीठ महाराष्ट्र के सभी महाविद्यालयों के संस्कृत संहिता सिद्धांत विभाग द्वारा आयोजित एक दिवसीय चरकस्तु चिकित्सिते द क्लिनिकल इंपॉर्टेंस ऑफ चरक संहिता इस राष्ट्रीय संगोष्ठी में मैं डॉक्टर प्रगति वाघमारे आप सभी का हृदयतः स्वागत करती हूँ. मेरी माटी मेरा देश तथा महर्षि चरक जयंती महोत्सव 2023 के उपलक्ष्य में इस संगोष्ठी का आयोजन किया गया है. इस संगोष्ठी का विषय हमारा आयुष हमारा स्वास्थ्य, आयुर्वेद फॉर पोषण एंड हेल्थ फॉर ऑल यह है. यह संगोष्ठी डायरेक्टरेट ऑफ आयुष, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र मुंबई, महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज नासिक तथा महाराष्ट्र काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन मुंबई द्वारा पुरस्कृत तथा संलग्नित है. सभी महाविद्यालयों के संहिता विभागों के साथ एसोसिएशन ऑफ मैनेजमेंट ऑफ आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेजेस ऑफ महाराष्ट्र, गवर्नमेंट एडेड आयुर्वेद कॉलेजेस मैनेजमेंट एंड प्रिंसिपल एसोसिएशन महाराष्ट्र, नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन, आयुर्वेद व्यासपीठ, अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन, नेशनल आयुर्वेद स्टूडेंट्स एंड यूथ एसोसिएशन, बीएमएस ग्रेजुएट्स एसोसिएशन महाराष्ट्र एंड अस्तित्व परिषद महाराष्ट्र, इनका भी इसमें मौलिक योगदान है. इस राष्ट्रीय संगोष्ठी में माननीय डॉक्टर मिलिंद निकुंभ सर, माननीय डॉक्टर रमन घुंगराळेकर सर, माननीय डॉक्टर मिलिंद आवारे सर, माननीय डॉक्टर श्रीकांत देशमुख सर, माननीय डॉक्टर गोविंद खटी सर तथा माननीय डॉक्टर दत्तात्रेय पाटिल सर प्रमुख अतिथि तथा मार्गदर्शक के रूप में उपस्थित है. मैं आपका हृदयतः स्वागत करती हूँ तथा आपको इस आभासी व्यासपीठ पर निमंत्रित करती हूँ. धन्यवाद. इस संगोष्ठी हेतु एनसीआईएसएम के माननीय पदाधिकारी, एमयूएचएस के विभिन्न प्राधिकरणों पर कार्यान्वित अधिकारी वर्ग, महाविद्यालयों के माननीय प्राचार्य तथा अधिष्ठाता, विभिन्न विभागों के विभाग प्रमुख तथा शिक्षक वृंद, पदव्युत्तर विद्यार्थी, पदवी पूर्व विद्यार्थी, चिकित्सक, संशोधक, आयुर्वेद पर विश्वास रखने वाले आयुर्वेद प्रेमी उपस्थित हैं. मैं आप सभी का शब्द सुमनों से स्वागत करती हूँ. मान्यवर अतिथियों से निवेदन है कि वे आचार्य महर्षि चरक की प्रतिमा का पूजन कर उनके प्रति हमारे आदर भाव को व्यक्त करें तथा चरक स्तवन से वातावरण में पावित्र्य बना रहे.
हेलो 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 नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् शिरास्त्रैर्वन्दितपादपद्मम् शङ्खं चक्रं परिविलसन् मौलिमहोजलीन्द्रम् कालाम्भोज्ज्वलाङ्गम् कटितटविलसञ्चारितापराटि वन्दे नीलगगमन् रौरगावादिनीग विपुलावा तदा वेदं साङ्गं सवास्तवान् यत्तश्चर इवायातो यज्ञातश्चित्ततः तस्मात् चरकनाम्नासौ ख्यातश्च क्षितिमण्डले सभाति चरकाचार्यो देवाचार्यो यथा दिवि सहस्रवदनस्यांशो येन धक्षोरुजाकृतः पातैजल महाभाष्य चरक प्रतिसंस्कृतै मनोवाक्काय दोषाणाम् हर्त्रे पतये नमः हर्त्रे पतये नमः। धन्यवादाः। पद्मश्री स्वर्गीय प्रोफेसर R.H. सिंह तथा पद्मश्री स्वर्गीय प्रोफेसर G.P. दुबे, इन्हें श्रद्धांजलि अर्पण कर हम उन्हें नमन करेंगे। इन दो महानुभावों के प्रतिमा को माल्यार्पण कर हम श्रद्धांजलि अर्पण करेंगे। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया अपनी ही जगह पर 2 मिनट खड़े होकर हम इन्हें श्रद्धांजलि अर्पण करें। जूम चला रहा हूं। आज पाटिल सर, कृपया वीडियो ऑन कीजिए।
ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आदरणीय डॉक्टर वैशाली नाखले महोदया से निवेदन है कि वे आज के संगोष्ठी के अतिथियों का परिचय हमें करवाएं। Thank you, Dr. Pragati. A very good morning to you all. A physician who fails to enter the body of a patient with the lamp of a knowledge and understanding can never treat diseases. He should first study all the factors, including environment, which influences a patient's disease, and then prescribe the treatment. It is more important to prevent the occurrence of disease than to seek a cure. Quote, Acharya Charaka. What a holistic approach of understanding the health of mankind. A very good morning to you all. Today, I have been given the responsibility of introducing the stalwart guest speakers attending and blessing us this very august occasion of Charaka Samhita. Today we have Dr. Raman Gungraikar sir, Directorate of Ayush. We are blessed with the presence of Dr. Khati sir, former Dean, R.A. Poddar Ayurvedic College, former Ayush Director, Maharashtra State. He is the torchbearer of this very program and he needs no introduction to all of us. We have Dr. Milind Nikung sir, Pro VC, Maharashtra University of Health Sciences, Nasik. We are blessed with the gracious presence of Dr. Raghuram Bhatt sir and Dr. Atul Babu Varshne sir, NCISM, and all the principals who are attending NIPA training from NCSM. Very good morning to you all. We also have Dr. Milind Aware sir, Faculty Dean, Department of Ayurveda, Maharashtra University of Health Sciences, Nasik. This program cannot be fulfilled with our very favorite Dr. Datta Patil sir. He is the principal of Dhanvantari Ayurvedic College, Udgin. I welcome you all on this August occasion of Charaka Jayanti. We also have Dr. Santa Madam from Poddar Ayurvedic College and all the principals, teachers, colleagues, and the students. We, from the bottom of our heart, welcome you on this program. Thank you, Dr. Pragati. All morning. धन्यवाद मैडम। इस संगोष्ठी की पृष्ठभूमि हमारे सामने रखने के लिए तथा स्वागत पर भाषण के लिए मैं निमंत्रित करती हूं आदरणीय डॉक्टर दत्ता पाटिल सर को। दत्ता पाटील सर सर आम्ही इथून बोलतोय दिल्ली सर आले हॅलो दत्ता पाटील सर हॅलो The national webinar on Charaka Samhita, the clinical importance of Charaka Samhita. Dr. Vaishali Nagle madam, but sir, Vaishali Nagle madam have already. Yes, just now from LCISM, NIPA Center, Honorable Dr. Raghuram Bhatt sir have also joined. I welcome all dignitaries on the platform, including
the president of this national webinar and president of Vishwa Ayurveda Parishad Maharashtra, Dr. Govind, along with Dean Faculty of Ayurveda, Dr. Milind Aware sir, ex-Dean Dr. Shrikant Deshmukh sir, from Directorate of Ayush, Honorable Dr. Raman Gungralekar sir. Within few minutes, our Vice Chancellor, Pro Vice Chancellor, Honorable Dr. Milind Nikum sir is also going to join. On this occasion, I welcome you all from all over India. It gives me immense pleasure to inform you that within a short span, rather period of 5 days, सर सरांना एकदा बोलू द्या 2 मिनिटं मग कंटिन्यू करा प्लीज. registration of more than 11,000 for this national webinar. It itself is a big achievement because of the teamwork which we all the Samhita Siddhant सर department. ते माईक वरून बोलत असल्यामुळे त्यांना मोबाईलचा आवाज जात नाही As far as आपला. paper presentation and poster presentation is concerned, तर त्यांना फोन करून सांगायला more लागेल than कदाचित. 100 paper Oh, presentation, more than 75 poster presentation within a short span of 5 days. Means this is nothing else for the Then I can. I request Dr. Bhatt sir to please share his views. Honorable Dr. Bhatt sir, NCICM, New Delhi. I can scroll down. सर you to address. Namaste to all of you. Yes, Prasad sir. Sir, welcome sir. Prasad sir. Very nice to see all of you. It is a great occasion for me to join the great occasion, the Charaka Jayanti, which is I'm very fortunate to attend this program. And accidentally, I must thank Rajeshwar for making me to be part of this event. And all of you, we all well know the importance of Charaka Samhita and how the Charaka Samhita has in-depthly dealt every aspect of the medicine as well as the human life, and also the medical education also, including the student selection process, and then the ethics also, medical ethics also, and code of conduct for teachers as a code of conduct. Every aspect has been dealt by Samhita, which is the prescribed book for all of us, not only for teaching point of view. It indicates how our lifestyle should be there, even as a professional. So we need to adapt the principles of the Charaka Samhita and implement in that as a medical practice as well as personal life also. Once again, I must thank organizers for giving me opportunity. And here, I think we have nearly 30 principals are there. They're all undergoing the education administration training here. You can just show. So I once again compliment all the organizers for organizing the program. I thank you all. Thank you. Thank you sir. Thank you sir. Thank you Oberande sir. All over India के 13 principals यहाँ पे join है. So please have a look. Near about 10,000 students are joining the चरकस चिकित्सा. Thank you sir. Thank you. Thank you very much, Dr. Oberande sir, the way you have managed all these things. And thank you, Team NIPA, for making this event a part of your training. Thank you. Once again, I welcome all the dignitaries. Instead of going into the details, I want to share one thing, that from all over India, the faculty have planned to organize a classroom session, though presently 11,000 registrations are there, all are there in the concerned colleges classroom, and they are attending the program. And as far as YouTube is concerned, we have made it YouTube Live and Facebook Live also. This grand success is nothing else. Once again, I am quoting that it is the teamwork which we all have shown. Thank you. Now, I request Dr. Pragati Wagmare to proceed with the next schedule. Dr. Pragati Wagmare. धन्यवाद पाटील One more thing, madam, today we have
just paid homage to late Professor Singh and late Professor G.P. Dule, who have departed yesterday only. Definitely in the field of Ayurveda, they have shown a remarkable contribution, which everybody should take a note of it. We have, means I want to quote here that we have gone through his books of Ramar Singh sir and Dubey sir, the way they have elaborated Ayurveda, definitely their contribution from their part had led them to win the Padma Shri Award. Thank you. धन्यवाद आदरणीय पाटिल सर. धन्यवाद प्रसाद सर. Now I request Dr. Shrikant Deshmukh sir for the keynote address. आप सभी से निवेदन है. Very good morning to all of you. This is a very nice occasion to have all of you together here, and this is the occasion because of we are celebrating Charak Jayanti, and the theme of this occasion and this national webinar is Charakas tu Chikitsate. We have here Dr. Milind Nikum sir, who is the Pro Vice Chancellor, and he has the charge of Vice Chancellor of MAHS Nashik. We have Dr. Raman Gungarkar sir. He is the Director of Ayush and Ayush Mantralaya. And we have Dr. Milind Avare sir, who is the Dean of the Faculty of Ayurveda and Unani. And Dr. Datta Patil sir, who is the Chief Coordinator and Organizer of this event. And also we have other chairman of the boards of studies of Ayurveda and Unani, and all other members of different boards in the university also. We have recently we heard Dr. B.S. Prasad sir, who is the President of Board of Ayurveda, NCISM, New Delhi, and so many colleagues are there. He had discussion with directly from the NIPA. As all of us know that NIPA has organized the training for the educational planning and educational administration for principals of Ayurveda and Unani and also Siddha from all over India. And very successfully this training has been organized by the NCSM. And today's session just now started, and Dr. Ubarande sir has made it possible that Dr. Prasad sir has communicated from NIPA, New Delhi. And I have very glad to say here that more than 10,000 students has participated, and faculties, principals, and other professors, HODs, and PG scholars and PhD scholars have joined for this very nice event. And a lot of posters and papers have been submitted for the competition also. And we will be giving them the certificates. And this program is also recognized by the MCM and MAHS Nashik. And as all of us know that the core part of our profession, that is the Charaka Samhita, is the very important for our professional career, as far as academic and professional career, that in the hospital also the principles for each and every patient, or we should adopt these principles. And this is the just reminder for all of us that our gratitude towards our Samhitas. And this has been made successful by the Dr. Datta Patil sir and his team. So once again, I would like to congratulate him, and thanks for giving me chance to communicate with all of you. So thanks once again. Thank you very much. अनुगृहीतः वयं महोदय, धन्यवादाः. Now I request Dr. Milind Avare sir for the keynote address.
Dr. Milind Aware, sir. I think there is some connection issue at Dr. Avarisar's end. Dr. Pragati, I may suggest you to call upon the next chief guest. Okay, ma'am. There could be a problem. अतिथि व्याख्यान हेतु मैं निमंत्रित करना चाहूंगी डॉक्टर रमन घुंघराले सर महोदय को। Friends, by the time Dr. Raman Ghungralekar sir joins us with us, I would request our Pro VC, Dr. Milind Nikung sir, to please address the dais. मॅम सर जॉईन व्हायला वेळ लागेल 15 मिनिटं. प्रगती मॅडम. Yeah, we can see Dr. Raman Ghungralekar sir. Yeah. Yes. I request Dr. Raman Ghungralekar sir, Director of Ayush, to please share his views on the webinar. Dr. Raman Ghungralekar sir. Hello, good morning. Hello. Yes, sir. You're audible. Good morning, sir. Good morning. Good morning. Hello. हाँ, ये आप जो चरक के ऊपर सेमिनार जो रखे हैं वो इसी प्रशंसनीय है. हेलो. नहीं सर आवाज आ रही है आपकी? सब आवाज आ रही है, बोलिए सर. अरे हाँ. और चरक के बारे में प्रशंसा अपन ने करना बोले तो ये बहुत ही असामान्य बात होती है. तो चरक के इसमें जो बोला है कि जो विश्व में है वो चरक में है हो सकता है, मगर जो चरक में नहीं विश्व में नहीं हो सकता है, ऐसा चरक ने ऐसा दावा किया है. इसका माने ये रखता है कि चरक में सब कुछ है जो ट्रीटमेंट करने के लिए, अच्छा जीवन जीने के लिए, आयुष्य निरोगी रखने के लिए, आरोग्य अच्छा रखने के लिए जो चाहिए वो सब चरक में मेंशन किया है. इसलिए चरक का इतने साल पुराना होके भी आज भी एक भी सेंटेंस, एक भी काना मात्रा अभी तक गलत नहीं हुआ है. यही चरक की महानता है. मगर दूसरी बात यह है कि चरक इतना महान होके, चरक इतना अच्छा होके, जितना इतना यूजफुल होके भी सर्वसामान्य लोगों या वैद्य लोगों को भी चरक का स्टडी करना, चरक का जो समझना बहुत ही मुश्किल होता है. क्योंकि चरक की जो रचना है, तो आजकल की जो मॉडर्न की मेडिसिन है, अन्य कोई सी बुक्स है कि जो दूसरी जैसे
खोल के उसका नॉलेज क्या है उसमें मेंशन किया है वो निकाल सकते हैं, मगर चरक में ये निकालना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए उसकी वो चरक की मांडनी जो है, रचना जो है, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड नहीं बोलते, असामान्य, कुछ सरल समझने जैसी नहीं है। तो चरक में जो भी स्टडी कर रहे हैं, चरक के संहिता के जो लोग तज्ञ हैं, उनसे मुझे दावा है, उनसे मैं दावा करता हूँ या अपेक्षा करता हूँ कि चरक की जो अनुवादित प्रतीक निकालना है या सारांश निकालना है, उसका उनका शब्दार्थ, श्लोक शब्दार्थ जो भी करना है, मगर सामान्य सामान्य ज्ञान के जो वैद्य है, वो लोगों को चरक का सिद्धांत या चरक की ज्ञान और जो भी ट्रीटमेंट करना है वो इजी होना चाहिए। तो जितना अभी सरल और इजी चरक में समझना बहुत ही मुश्किल है, और जो मुश्किल है उसको महानता अपन ज्यादा बोलते हैं, मगर जो नहीं समझते इजी उसकी महानता यह हो नहीं सकती, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को समझना चाहिए, और वो भाषा में वो ऐसे समझने की लैंग्वेज में, समझने की इजीली सुलभ ऐसा होना चाहिए। ऐसी मांडनी चरक की आज के जो कई सिद्धांत के अध्यापक है उन्होंने करना चाहिए, इतना मेरा सजेशन है। इतना बोल के मैं ये आपने चरक जो भी उत्सव आपने किया है, सेमिनार आयोजन किया है, उसके अभिनंदन करके मैं मेरे 2 शब्द खत्म करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद सर। अध्यक्षीय भाषणार्थ मैं सादर निमंत्रित करती हूँ डॉक्टर गोविंद खटी सर को। माननीय खटी सर, आपका माइक ऑफ है शायद। हेलो, ठीक है। आदरणीय यहाँ उपस्थित सारे लोग जिन्होंने इस सेमिनार में, वेबिनार में भाग लिया है, जिन्होंने अपने पेपर प्रेजेंट किए, इसके अलावा जिन लोगों ने पोस्टर प्रेजेंट किए हैं और यह बात सुनने के लिए यहाँ पे आमंत्रित है और उपस्थित है, उन सबका मैं अभिवादन करता हूँ। चरकस्तु चिकित्सिते यह सिद्धांत रखते हुए चरक संहिता में पहले अध्याय से लेके 120 अध्याय तक जो कुछ वर्णन किया गया है उसमें सारे सिद्धांत रखे गए हैं, और सिद्धांत के उसकी उपयोगिता यह कालानुरूप बदलती नहीं है, और कालानुरूप जिस प्रकार से जिस व्यक्ति की बुद्धिमत्ता होती है उस प्रकार से उसका उपयोग कर लेता है। हम चरक संहिता को पढ़ते हुए या पढ़ाते हुए हर शब्द का एक बार पढ़ने के बाद जो हमको अर्थ समझ में आता है, वो कई बार पढ़ने के बाद में वो अर्थ नहीं है और अलग ही अर्थ है, हमको महसूस होता है। एवं किस्सा करते हुए ये हमको ज्ञात होता है कि हम पहली बार जिसको हम मान लिया है, जिस अर्थ को हम ग्रहण किया है, वह अर्थ बाद में प्रैक्टिकली हमको और कुछ अलग ही अर्थ ऐसा हमको जानने को मिलता है। और इस प्रकार से जितनी बार उसका अध्ययन करोगे उतनी बार आपको और स्पष्ट हो जाएगा। सूत्र स्थान रहे, शरीर स्थान रहे, इंद्रिय स्थान रहे या कोई अन्य स्थान रहे, उसको बार बार पढ़ने के बाद और विद्यार्थियों के साथ संवाद करने के बाद में हमको यहाँ जान को खुशी होती है कि हम जो पहले दिन पढ़े थे उससे भी गहन अर्थ इसमें निकलता है। बात ऐसी होती है कि उस वेदकालीन ग्रंथ के अर्थ होते हैं सूक्ष्म रूप से होते हैं, और सूक्ष्म रूप से शब्दशाह, शब्दार्थशाह, शब्दावयवशाह, यह हम जब तक जाते नहीं, और शब्द क्या है, शब्दार्थ क्या है, शब्दावयवशाह क्या है, संस्कृत का ज्ञान हमको कितना है और उसका उपयोगिता कितनी है, यह जब तक हम समझते नहीं तब तक चरक संहिता हमको समझ में नहीं आती। मैं गए चरक पढ़ाता हूँ, और जब उसको पढ़ाते मुझे कई सालों के बाद में उसका अर्थ समझ में आया। जब एमडी स्टूडेंट को हम पढ़ाते हैं और एक एक सूत्र का हम अर्थ उनको उनके सामने एक्सप्लेन करते हैं, जब रुग्ण में हम उसका उपयोगिता करते हैं तब हम
जान के खुशी होती है कि हमने जो पहली बार जो विद्यार्थियों को पढ़ाया था वैसा अर्थ नहीं है, प्रैक्टिकली अर्थ अलग अलग होते हैं। और यह चरकस तो चिकित्सित यह सिद्धांत के अनुसार हमको जब चिकित्सा करते हैं तो चिकित्सा करते हुए उसका अर्थ का विमोचन होता है। अर्थ की जो उपयोगिता होती है या अर्थ का जो शब्दशः अर्थ है, यह हमको जानकर खुशी होती है। चरक यह ग्रंथ जो पढ़ता है, जो पढ़ाते हैं, उनको यह समझ में आता है कि बार बार पढ़ने के बाद में उसका जो अर्थ हमको समझ में आता है, उस समझने के बाद में जो आनंद प्राप्त होता है, वह आनंद पढ़ाने के बाद और पढ़ने के बाद भी अच्छी तरह से हमको मिलता है। कई बार ऐसे होता है कि हम विद्यार्थियों को पढ़ाते हुए बहुत से बार विद्यार्थियों को पढ़ाते हुए हमको ऐसा जानता है कि ठीक है, इसका अर्थ यही होगा, लेकिन बाद में यदि विद्यार्थी भी अच्छा होगा और वह प्रश्न पूछता जाएगा तो हमको यह जान के खुशी होती है कि नहीं, हमने जो पढ़ाया था उससे भी गहरा अर्थ इसमें समाया हुआ है। इसलिए जो चिकित्सक रहते हैं, चिकित्सकों के लिए चरक संहिता बहुत ही मूल ग्रंथ है। उसके लिए तो गीता होती है, और जो जितना प्रैक्टिकल करेगा उतना उसको चरक की उपयोगिता अधिक स्वरूप से होगी। और इसलिए बहुत से लोगों ने माना है कि हमको सरल चाहिए, सूफी चाहिए, जो सरल बोलते हैं, भाषा बोलते हैं, वो नहीं प्राप्त हो सकती है। जितना आप पढ़ोगे, जितना आप प्रैक्टिकल करोगे, जितने आप रुग्ण देखोगे, और हर रुग्ण अपने से बात करेगा और चरक में वैसे ही पाया जाएगा। यह प्रैक्टिकल है, बेड साइड क्लिनिक जैसा है। और हमें पढ़ाते हुए सीपी शुक्ला जी होते जामनगर में, हमको पढ़ाते थे प्रैक्टिकली बेड साइड क्लिनिक, और बेड साइड क्लिनिक पढ़ाते हुए बताते कि नहीं, चरक में ये लिखा है और इस प्रकार से लिखा है, तो ये पान में ये लिखा है और इसको हम आप प्रैक्टिकल कर लो। और हम जब उसको प्रैक्टिकल करते थे तब जाके हमारा उस पर विश्वास बैठा, और विश्वास बैठने के बाद में उससे जब हम उसको पढ़ने गए और प्रैक्टिकली करते गए, तब जाके हम चरक पे कुछ भाष्य कर सकते हैं, या कम से कम एक सूत्र पे हम 1 घंटा तक बात कर सकते हैं कि इसका अर्थ क्या होता है। इसलिए सारे जो यहाँ उपस्थित गण हैं उनको यही विनंती करेंगे या रिक्वेस्ट करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा चरक का अध्ययन करिए, और अध्ययन करते हुए संस्कृत का जो कुछ अर्थ होगा तो संस्कृत ज्ञान ही जो होगा उसे हम जान ले, और उसका संस्कृत के भाषा में और संहिता चिकित्सा के भाषा का अर्थ थोड़ा अलग अलग होगा, फिर भी हम उसको जानने के वो जो आनंद प्राप्त होगा वह आनंद बहुत अच्छा होता है। और इसी कल्पना से यहाँ हम सेमिनार वेबिनार जो रख रहे हैं और जो रख रहे हैं, उसमें हमारा यही मकसद है कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट विद्यार्थी चरक संहिता में अच्छी तरह से ध्यान दे, सूत्र याद करे और सूत्र का उपयोगिता करे, और सूत्र की उपयोगिता करने के बाद चरक संहिता में जितने चिकित्सा के सूत्र लिखे हैं उसका ज्यादा से ज्यादा अध्ययन करे। यही मेरी इच्छा है, और इच्छा के अनुसार ये इच्छा के कारण हम ये वेबिनार सेमिनार ले रहे हैं। इतना करके मैं मेरा भाषण समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद खटी सर। मैं पुनः निमंत्रित करना चाहूंगी डॉक्टर दत्ता पाटिल सर को। धन्यवाद डॉक्टर गोविंद खटी सर, माजी संचालक डायरेक्टोरेट ऑफ आयुष एवं अध्यक्ष विश्व आयुर्वेद परिषद महाराष्ट्र। आपने चरक संहिता के संदर्भ में जिस अंदाज से महत्व विषद किया, वैसे तो चरक संहिता में अल्पार्थकत्वे सति बहुअर्थ बोधकत्वम एक सूत्र आता है। उसका स्पष्ट आशय यह है कि कम से कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा जानकारी, और चरक संहिता सूत्र स्थान भी अगर कोई अच्छी तरह से पढ़ता है तो एक अच्छा डाइटिशियन हो सकता है। और आज हम लोग सब लोग जानते हैं
कि हमारे बहुत सारे कारण जैसे रहन सहन या जिस तरह से हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में खुद को साबित करने के लिए प्रयत्न, इसलिए जो बहुत सारे डिसीज जैसे हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, ऐसे अनगिनत व्याधियों का एक अच्छा चिकित्सा चरक संहिता में बताई है चिकित्सा, और इसी को नजर रखते हुए पिछले 3 साल से हम लोगों ने डॉक्टर खट्टी सर के नेतृत्व में यह चरक जयंती का आयोजन करने का प्रयास किया। मुझे खुशी होती है कि पहले साल 16,000 रजिस्ट्रेशन, लेकिन उसके लिए हमने 15 दिन से ज्यादा प्रयत्न किए। पिछले साल बहुत सारे कॉलेजेस नेचुरल कैलेमिटी या एनसीएस इंस्पेक्शन या यूनिवर्सिटी इंस्पेक्शन इस कारणवश इसमें पार्टिसिपेट हुए नहीं थे, फिर भी 6,700 रजिस्ट्रेशन हमने कर लिए थे। आज भी संबंध भारतवर्ष में प्रथम, तृतीय, चतुर्थ यह 3 बीएमएस के परीक्षाएं शुरू है, फिर भी आज हम 11,000 के ऊपर रजिस्ट्रेशन कर पाए। यह सब आप सब लोगों की मेहनत है और उसी का नतीजा है। मैं इस माध्यम से आभार व्यक्त करूंगा और मैं आमंत्रित करता हूं प्रो वाइस चांसलर महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस Honorable Dr. Milind Nikum sir to please share his views and guide us. Thank you, Dr. Milind Nikum sir. 1-2 मिनिटं फक्त चरक प्रतिमा पूजन करून घेतो। हम सभी लोग कितने सौभाग्यशाली हैं जिन्हें चरक संहिता पढ़ने का, सीखने का मौका मिला है। हम सब चरक संहिता का अध्ययन करते हैं और चरक संहिता के विद्यार्थी हैं। ईस्वीसन पूर्व 1000 से लेकर आज तक चरक संहिता तब भी उतनी ही महत्वपूर्ण थी, उतनी ही उपदायी थी, और आज भी चरक संहिता उतनी ही महत्वपूर्ण है। शायद ऐसा भी कहा जा सकता है, यावत् स्थास्यन्ति गिरयः सरितश्च महीतले तावत् चरक संहिता एषा लोके प्रचलिष्यति। आदरणीय निकुम सर। धन्यवाद, धन्यवाद दत्ता पाटील सर। या चरक जयंती निमित्ताने आज महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठामध्ये आपण धन्वंतरी पूजन तसंच चरक प्रतिमा पूजन केलेलं आहे। सर्वांना या चरक जयंतीच्या हार्दिक शुभेच्छा। आज नागपंचमी तसंच चरक जयंती निमित्त आपण महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठात साजरी करत असताना तसेच सर्व महाविद्यालयातील प्राचार्य तसेच शिक्षक खटी सर, माझ्या ते आत्ताचे डायरेक्टर रामन गुंगराळेकर सर तसेच सर्व मान्यवर या ठिकाणी उपस्थित आहेत। या चरक जयंती निमित्त आपण जी आयुर्वेदाची नीव ठेवत आहोत आणि सर्व महाविद्यालयांमध्ये आयुर्वेद जोपासावा आणि आयुर्वेदाची प्रॅक्टिससाठी प्रवृत्त करण्यात यावं या दृष्टीने आपण ही करत असतो। या चरकाचार्यांच्या सूत्ररूपी जे काही आपण गुंफलेले जे काही पद्म होते त्या चरकांच्या विस्तृत ज्ञानाचा या ठिकाणी आपण उहापोह करत आहोत आणि सूत्रस्थानातील जसे 30 अध्याय आहेत या 30 अध्यायांचं विस्तृत वर्णन प्रत्येक टीचरने करावं, तसंच या महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांना सुद्धा त्याचा अर्थ बोध करून द्यावा, जेणेकरून या चरक जयंतीचं महत्व सार्थ होईल। धन्यवाद। धन्यवाद सर।
Now I request Dr. Milind Avare sir for the keynote address. नमस्कार. इथे सर्व उपस्थित मान्यवरांचे मी स्वागत करतो. श्री चरक जयंतीच्या सर्वांना शुभेच्छा. गेल्या काही वर्षात आयुर्वेद क्षेत्रात जे उत्तम बदल दिसत आहेत त्यापैकी एक म्हणजे आयुर्वेद दिवस सोहळा व श्री चरक जयंती सोहळा साजरा करणे हे होय. 3 वर्षापूर्वी अशा पावन दिवशी महाराष्ट्रातील सर्व आयुर्वेद महाविद्यालयातील संहिता विभागांनी एकत्र येऊन हा चरक जयंतीचा उत्सव सुरू केला. वैद्य खटी सरांच्या विशेष प्रेरणेने व मार्गदर्शनाने हा कार्यक्रम सुरू झाला. आजचे हे 3रे वर्ष आहे. या निमित्ताने सर्व वैद्य एकत्र येऊन एक दिलाने हे काम करत आहेत. हा मोठा आनंद आहे. हा कार्यक्रम असाच पुढील अनेक वर्ष चालू राहिला पाहिजे ही चरकांच्या चरणी प्रार्थना. या कार्यक्रमात उपस्थित सर्व विद्यार्थीगण, अध्यापक वृंद व व्याख्याते या सर्वांना शुभेच्छा व आभार. या कार्यक्रमाच्या नियोजनात ज्यांनी ज्यांनी सहकार्य दिले त्या सर्वांचे अभिनंदन. धन्यवाद. धन्यवाद सर. ऋणनिर्देशनार्थ डॉक्टर मिलिंद आवारे सर. वाघमारे मैडम 1 मिनट. मैं डॉक्टर मिलिंद आवारे सर का आभार प्रकट करता हूं और यह अपेक्षा व्यक्त करता हूं आप सभी महानुभावों से. हम पिछले 3 साल से यह चरक जयंती का प्रोग्राम वेब प्लेटफॉर्म पे, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ले रहे हैं. बहुत सारे हमारे संहिता सिद्धांत के स्टॉलवर्स यह अपेक्षा रखते हैं कि यह प्रोग्राम ऑफलाइन की तरह आयोजन हो सकता है, इसका नियोजन किया जाए. इस माध्यम से मैं आप सभी से अपील करता हूं, अगर 10 कॉलेजेस तो 60 किलोमीटर के विजिनिटी में ऐसा कोई मध्यवर्ती ठिकान और सभी को इजीली एक्सेस हो ऐसी कोई जगह हम 5 जगह तय करते हैं. फिर उसके बाद में उसमें से एक जगह अंतिम करके कि अगले साल चरक जयंती का प्रोग्राम अगर आप सभी लोग साथ हो तो निश्चित तौर पे हम सब लोगों की जो मंशा है कि यह ऑफलाइन हो उसको हम कार्यान्वित कर सकते हैं. पुनश्च आप सभी का साधुवाद व्यक्त करते हुए मैं अंतिम पड़ाव पर डॉक्टर प्रगति वाघमारे को गुजारिश करूंगा कि वह आभार प्रदर्शन के लिए डॉक्टर वैशाली नाकली मैडम को आमंत्रित करें. 1 मिनिट दत्ता पाटील सर. सर हॅलो. यस सर. सर आपल्या सर्वांच्या यस वतीने विनंती करतो की ऑफलाईन साठी आपण विद्यापीठाचा जो सेमिनार हॉल आहे तो TTI हॉल तो उपलब्ध करावा आणि पुढच्या वर्षीचा प्रोग्राम हा विद्यापीठाची माझी विनंती आहे. अत्यंत चांगली बातमी आपल्या सर्वांसाठी येते आहे. मैं मिलिंद निकुम सर को गुजारिश करूंगा कि आप ही यह उद्घोषणा करें कि अगले साल चरक जयंती महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ नासिक का जो सेमिनार हॉल है वहां पे नियोजन और उनके लिए जो भी सहकार्य हम सभी से चाहिए वह हम करेंगे. निकुम सर आप उद्घोषणा करें. ऐसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा. धन्यवाद. तुम्ही महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठावरती एवढं प्रेम करत आहात तर आपण निश्चितच पुढच्या वर्षीचा चरक जयंती सोहळा ऑफलाईन पद्धतीने महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाच्या TTI बिल्डिंग मध्ये करावा आणि सर्वांना मी आमंत्रित करतो की त्यांनी सगळ्यांच्या सहकार्याने आपण पुढच्या वर्षीचा हा सोहळा इथे साजरा करू. भूरिशः धन्यवादाः महोदय. यहाँ पर उपस्थित सभी आयुर्वेद प्रेमी, सभी शिक्षक, सभी विद्यार्थी और सभी संशोधक आपको शतशः आपके ऋणी है जो आपने अगले वर्ष के लिए नासिक यह स्थान हमें चरक संहिता सम्मान के लिए दिया है. भूरिशः धन्यवादाः. अब मैं निमंत्रित करना चाहूंगी आदरणीय डॉक्टर निर्मल साळवे मैडम को ऋण निर्देश के लिए.
अनम्यूट करा आधी साळवे मॅडम. Sorry, sir. Sorry. A warm and graceful morning to all. We are at the end of inaugural session, and it's my duty to thank all of them who directly or indirectly help us to make this very auspicious morning. First of all, let me start by giving glory to the Almighty of God for making this celebration memorable through His blessings. It's my privilege to propose vote of thanks and acknowledge the contribution of those who really work hard to make this event possible. I, Dr. Nirmal Savle, on behalf of organizing committee, express my sincere thanks to Dr. Honorable Bhatt sir and Honorable Dr. Shikanji Deshmukh sir for delivering his fruitful speech and guidance. Thank you, sir. Thank you very much. We thank Honorable Dr. Milinji Avare sir, who spared time from his busy schedule to grace the occasion. I would also like to extend my heartiest thanks to Honorable Dr. Ramanji Gungrale sir. You are an admirable person, sir, and we have a lot to learn from you. We have an opportunity to hear your thoughts, and this will surely encourage us in all our future endeavors. I owe special gratitude to Honorable Milinji Nikum sir, your presence and invaluable support to us, and thank you for always be there for us. An event like this cannot happen overnight. The wheel started rolling weeks ago. It requires planning, efforts, and bird's eyes for details. Thank you, respected Govindji Khati sir, for presidential speech and guiding us. The axis of wheel, Dr. Datta Patil sir. Hats off to you for everything you have done for this occasion, sir. A special thanks to Directorate of Ayush, Government of Maharashtra, NCI Mumbai, and Maharashtra Arogya Vignan Vidyapith, and all dignitaries and associations. Thank you very much, sir. We have been fortunate enough to be backed by a team of very proactive and dedicated Samhita team. A big thanks to all chairpersons, coordinators, examiners, and all organizing committee for their contribution in this celebration. Also thanks Dr. Vaishali madam and Dr. Pragati madam for conducting this event beautifully. Last but not least, a warm gratitude to each one of you who joined the webinar and made the celebration memorable. We thank you for being with us. Have a great day ahead. Thank you. Thank you so much, Over ma'am. to you, Vagmari madam. Thank you so much, madam. अध्यक्ष महोदय की अनुमति से मैं यह घोषणा करती हूँ कि इस राष्ट्रीय संगोष्ठी के उद्घाटन सत्र यहाँ पर संपन्न हुआ है और आगे के सूत्र माननीय डॉक्टर ज्योत्सना गंगासागरे मैडम को मैं सौंपती हूँ और आप सबको भूरिशः धन्यवाद देती हूँ. धन्यवाद. धन्यवाद मैडम. मैं अगला सत्र शुरू करने जा रही हूँ. गुड मॉर्निंग ऑनरेबल डॉक्टर रमनजी गुंगराळेकर सर, डायरेक्टर आयुष महाराष्ट्र स्टेट. ऑनरेबल गुरुवर्य खटी सर, एक्स डायरेक्टर आयुष महाराष्ट्र स्टेट. ऑनरेबल दत्तात्रय पाटिल सर, ऑनरेबल OVC निकुम सर, ऑनरेबल आयुर्वेद फैकल्टी डीन डॉक्टर आवारे सर, Honorable Dean and Principal of all Ayurvedic colleges, teachers, medical officers, students, and all honorable dignitaries online presented for this webinar. I, Vaidya Mrs. Josna Nagnath Gangasagre, Associate Professor and Head of Department, Sanskrit Samhita Siddhanta, State Govindji Ravji Ayurved Mahavidyalaya Solapur. Welcome everyone in this session. सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागत. प्रथमतः आप सभी को चरक जयंती की शुभकामनाएं. चरकस्तु चिकित्सते, चिकित्सा में चरक का स्थान विशेष है. आज का वेबिनार भी विशेष है. आज के वेबिनार में कोऑर्डिनेटर, इमिनेंट स्पीकर्स, चेयरमैन, को चेयरमैन सभी महिलाएं ही है. नागपंचमी के दिन में ये बहुत अच्छी सी बात यहाँ पे संयोग से जुड़ी हुई है.
यह सम्मान देने के लिए मैं सभी महिला वैद्य की ओर से आयोजकों का धन्यवाद देती हूँ। अभी चरक जयंती के अवसर पर आयोजित नेशनल वेबिनार चरकस्तु चिकित्सते द क्लिनिकल इम्पोर्टेंस ऑफ चरक संहिता का उद्घाटन सत्र संपन्न हुआ। इसके पश्चात चरकाचार्य को नमन करते हुए मैं आज के वेबिनार के प्रथम सत्र का प्रारंभ करती हूँ। प्रथम सत्र का विषय डिकोडिंग चरक संहिता सिद्धिस्थान फॉर क्लिनिकल इम्पोर्टेंस। इसके स्पीकर ऑनरेबल डॉक्टर शुभांगी कामरे मैडम, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ बेसिक प्रिंसिपल्स, इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेद, जामनगर, इनको मैं व्याख्यान देने के लिए वेद मंच पर आमंत्रित करती हूँ। गुणत्रय विभेदेन मूर्तित्रयम् उपेयिषु त्रयीभुवे त्रिनेत्राय त्रिलोकीपतये नमः। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मतिप्रदे वसत्वं मम जिह्वाग्रे सर्वविद्या प्रदाभव। आज श्रावण महीने के शुक्ल पंचमी अर्थात नाग पंचमी के अवसर पर आचार्य चरक की जयंती पर आचार्य चरक को सादर नमन करते हुए मैं अपने व्याख्यान का प्रारंभ करना चाहूंगी। व्याख्यान से पूर्व सबसे पहले यहाँ पर वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर, जूम मीटिंग के वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर उपस्थित सभी आदरणीय महानुभावों का मैं हार्दिक स्वागत एवं उनको सभी को सादर प्रणाम करती हूँ। इसमें विशेषतः मेरा आदरणीय गुरुवर प्रोफेसर गोविंद खट्टी सर, इसके साथ साथ सभी जो आयोजक है उन सभी का मैं स्वागत एवं धन्यवाद दोनों करना चाहूंगी कि today I feel privileged as well as honored that the opportunity to share my views and thoughts on clinical importance of Charaka Samhita Siddhisthana that has been given by the organizing committee to me, and for that purpose I would like to say I would like to convey my heartfelt thanks to all the dignitaries present over here. Also in the inaugural session, all the dignitaries were present and who blessed with the keynote addresses and speeches. That is Dr. Raman Ghungrade sir, Director of Ayush, then Melin Nikum sir, Pro VC and in charge VC of MHS, and Professor Raghuram Bhatt sir, Professor B.S. Prasad sir, Dr. Milind Avare sir, Dr. Shrikant Deshmukh sir, then Datta Patil sir. I would like to say thank you first of all to all of you. And now let's start with our today's presentation. Kindly give me the permission to share my screen. I hope the PPT is visible. Sir, kindly give me permission to share the screen. Yes. I hope the PPT is visible. Madam, excuse me, madam. Yes. एक मिनिट पीपीटी दिसत आहे. 2 मिनट के लिए वेट कीजिए. Okay, okay. I hand over to Dr. गंगा चक्रे मैडम. थोड़ी सी इनकन्वीनियंस हुई है मैडम. मैं पहले आपका अभिवादन करूंगी, परिचय स्मिता धोड़े मैडम देंगी, उसके पश्चात आपको व्याख्यान डिलीवर करना है. सॉरी फॉर दैट. Okay, it's okay, madam. No problem. प्रथम सत्र के चेयरमैन ऑनरेबल डॉक्टर जया जानी मैडम, प्रोफेसर संहिता डिपार्टमेंट KVPR आयुर्वेद कॉलेज बोराडी, धुले, महाराष्ट्र तथा BUS मेंबर MHS नासिक, इनको इस मंच पर मैं आमंत्रित करती हूँ. इस सेशन के को चेयरमैन ऑनरेबल डॉक्टर स्मिता धोड़े मैडम,
Professor and HOD Samhita Siddhanta, Department CSMSS आयुर्वेद महाविद्यालय औरंगाबाद महाराष्ट्र, आपको इस वेब मंच पर आमंत्रित करती हूँ। प्रथम सत्र के कोऑर्डिनेटर ऑनरेबल डॉक्टर मधुमती नावकर मैडम, संहिता सिद्धांत डिपार्टमेंट अकोला, मैडम को इस सेशन में जुड़ने का अनुरोध करती। डॉक्टर कामले मैडम, डॉक्टर जया जानी मैडम, डॉक्टर स्मिता धोटे मैडम, डॉक्टर मधुमती नावकर मैडम, आपको मैं शब्द सुमनों से के साथ सहर्ष स्वागत करती हूँ। मैं डॉक्टर स्मिता धोटे मैडम जी को इस सेशन के वक्ता डॉक्टर शुभांगी कामळे मैडम तथा ऑनरेबल गेस्ट इनका परिचय कराने का अनुरोध करती हूँ। डॉक्टर स्मिता धुर्डे मैडम जी। Om Dhanvantaraye Namaha. Good afternoon to everyone. I am Dr. Smita Dhurde. On the auspicious occasion of Mahasi Charak Jayanti and Shravan Purnima, I wish best wishes to all, and I am happy to introduce honorable speakers for this scientific session. Our guest speaker is Dr. Shubhangi Kamble, Associate Professor, Department of Basic Principles, Institute of Teaching and Research in Ayurveda, Jamnagar. She is MD, MA Sanskrit, PhD in Samhita from IPGT and RA Gujarat Ayurveda University, Jamnagar. Teaching experience is 18 years. She worked as Medical Officer Group A at PSC Nandre, Sangli, Maharashtra. She has participated in basic level workshop on manuscriptology and paleography held in Jamnagar by National Mission for Manuscripts, New Delhi, and awarded A grade according to proficiency. She is guide and co-guide for PG and PhD scholars, co-investigator for project Lexicon edition of Charaka Samhita, which is in progress, co-author of a book Anusandhana Paddhati Parichaya, published 45 research papers, 15 oral papers and 3 poster presentations, 60 research papers presented by her. She delivered 26 guest lectures as a resource person. She has assignments in scientific journals. She has more experience in administration, working as plagiarism nodal officer, plagiarism prevention officer, coordination of care of patients committee for NAB accreditation of ITRA Jamnagar Hospital, in charge physician, Air Force Base Satellite OPD, in charge of Literary Research Unit, Department of Basic Principles. In academics, she is working as a member, secretary, and convener of DRC, working as an examiner in more than 9 universities, worked as an expert member of Syllabus Reforms Committee of CCIM New Delhi. She has contributed to policy documents of WHO sponsored projects, Ministry of Ayush, Government of India, contributed in Ayush Guru, a web-based educational program. Madam has received many award prizes, Best Paper Presentation Award, Trophy, and cash prize for oral research paper presentation in International Conference on Ayurveda at Pune. She received many awards and prizes. I welcome you, Madam. Dr. Jaya Jani Madam is here as a chairperson for the session. She has completed her BMS MD from Nagpur University, MA in Yoga Shastra, Diploma in Yoga Shikshak, PhD scholar in Yoga Shastra at MUHS Nashik. At present, she is working as a professor and HOD of Samhita Siddhanta and Sanskrit Department at KVTR Ayurveda College, Boradi, Dhule, Maharashtra. Her teaching experience is 24 years. She is a member of College Ethical and Academic Committee, member of Expert Panel Journal of Sanskrit Samhita Siddhanta. She was coordinator for 3 research trials, presented papers on yoga in insomnia, yoga, stress management. She published a book named Dinacharya and Rutucharya. She is active in cultural, extracurricular activities along with academics. She is a winner of Smart Medico in the year 2020, winner of Mediquin Mrs. Maharashtra for social work in the year 2021. She received many awards and prizes. Excellence Award for Social Work from Honorable
Government at Raj Bhavan in 2021. Best Teacher Award from Ayurveda Teachers Association in the year 2022. Dr. Jaya Madam has been elected as BOS member in 2023 at MUHS Nashik. These are the introductions of our session's honorable speakers. I welcome Dr. Kamble Madam and Dr. Jane Madam. I request Dr. Josna Gangasagar Madam to please take over. Thank you. Thank you, madam. मैं डॉक्टर शुभांगी कांबळे मैडम को व्याख्यान देने का अनुरोध करती हूँ. प्लीज मैडम. Thank you, madam. I hope my screen is visible. And yes? Yes, madam. Yes. Yes, madam. Visible. Yes. सभी आदरणीय गुरुवर्यों को मेरा सादर प्रणाम. इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर उपस्थित संहिता सिद्धांत विभाग के सभी प्राध्यापक, विभाग प्रमुख, सभी शिक्षक एवं फेसबुक लाइव और यूट्यूब लाइव से इस नेशनल वेबिनार से जुड़े हुए सभी विद्यार्थी, शिक्षकगण एवं आयुर्वेद के सभी स्टेक होल्डर्स को मेरा सादर प्रणाम. Very good morning to all of you. As we are, I think, somewhat running behind the time, without wasting much time, I would like to directly start with my today's presentation. This presentation, the particular decoding the Charaka Samhita Siddhisthana for clinical importance, is the some outcome or the total outcome of what I have learned in my UG and PG. My undergraduate BMS I have done from Vasantdada Patil Ayurvedic College, Sangli, and my post-graduation I completed in R.A. Poddar Ayurvedic Medical College, Varadi, Mumbai. So what I have learned from my UG teachers, PG teachers, as well as I did my PhD at IPGT and RA Gujarat Ayurveda University, Jamnagar. So it is the total outcome of what I learned during my education, as well as what I have been teaching since last 18 years. What I had thought or what I have understood the Charaka Siddhisthana, from what are my particular thoughts regarding Charaka Samhita, its clinical importance, and particularly out of the 8 sthanas of Charaka Samhita, particularly Siddhisthana I have chosen for today's topic or today's elaboration. And sole purpose or the most important purpose for selecting this Siddhisthana is that most of the times when Ayurveda persons or Ayurveda teachers or physicians or the scholars, when they are talking about the Charaka Samhita, the focus is given to Sutra Sthan, Viman Sthan, but along with those sthanas where the fundamental principles of Ayurveda have been given, the Siddhisthana is also the important one. Most of the times, what we as a teacher or a students or PG and PhD scholars of Samhita Siddhanta department, or even we teachers since so many years, we face one problem that Samhita Siddhanta department is thought as, or it is understood as, the non-clinical department. But at the very beginning or at the very outset of my lecture, I would like to convey one message, or I would like to take this opportunity that through this virtual platform, I would like to convey the message to all the Ayurveda stakeholders that Samhita Siddhanta department is not non-clinical at all. It is the most clinical department, because whatever the knowledge of Kaya Chikitsa or Panchakarma, what we see in today's subject related books is coming from the Samhitas only. And out of the Bruhatrayi, Charaka Samhita is the most important and the
most valuable Samhita from physician's point of view. And if one has a mastery on Charaka Samhita, he will be able to treat each and every disease. It may be the Ukta or Anukta, whatever we may face some newer pandemics or epidemics in near future, what we already seen in Corona. And we can successfully treat any patient, or we can fulfill the sole purpose of the Samhita, that is Dhatu Samya, only after learning and decoding the complete Samhita. And for that purpose, we have to see from when we are learning from the Samhita point of view, first and foremost, we have to see regarding the placement and arrangement of the sthana and the each and every adhyaya. If we see the placement of the Siddhisthana, it is the 8th section of the Charaka Samhita. It is the last but the most important. And after gaining the knowledge of Sutrasthan, Nidan Sthan, Sharir, Viman, Indriya, Chikitsa and Kalpasthan, lastly, our Acharyas have placed the Siddhisthana, and the name itself gives its importance. That is the Siddhi. It is nothing but the Siddhehe Abhidhanakam Sthanam Siddhisthana. The section of the Samhita or the Sthan of Samhita, which is depicting all the fundamental principles which are useful for achieving the Siddhi or the success of the treatment that has been given in this particular Sthan. While giving the definition of the Siddhisthana, Acharya has himself given the definition in the last chapter of the Siddhisthana, that is Karmanam Vamanadinam Asamyak Karanapadam Yatroktam Sadhanam Sthane Siddhisthanam Taduchyate. That is Vamanadi Panchakarmas, all the details or the detailed procedures. Am I audible? Any problem? Yes, ma'am. Yeah. So the details or all the SOPs related to the 5 Panchakarmas as per Acharya Charak, that is Vaman, Virechan, Niruha Basti, Anuvasan Basti and Shiro Virechan. Also the Vyapad, that is the untoward complications or untoward effects which are occurred during the due course of the treatment, if anything has been gone wrong due to the Vigunata of either Vaidya, either Bheshaj, either Paricharak or either Rugna. And also the management strategies or the treatment protocols of all these complications, they have been well described by the by our Acharyas in the Siddhisthana. And for that purpose only, the Siddhisthana has been designated, or it has been given by Acharyas. And if we see as our Guru Varya, Professor Khati sir, well described in his presidential speech, that when we have to learn Charaka Samhita or any Samhita, we have to adopt the teaching learning methodology given by that particular Samhita. Just like Acharya Charak in Sutrasthan 30th chapter has given, that when we have to learn the Samhita or read the Samhita, we have to follow the methodology of Vakyashaha, Vakyarthashaha and Arthavyavashaha. And when we are learning the Siddhisthana from that aspect, first and foremost, it is necessary that we should understand the different meanings or different shades of meanings of the word Siddhi. And if we go to the Monier-Williams dictionary for that purpose, we can see that there are so many different meanings of Siddhi word, that generally the most of the times only the meaning of success has been given or is understood, but along with that, accomplishment, performance, mastery or perfection in treatment, also the fulfillment of the purpose, or then final outcome, and also the outcome should be also the good or the successful, and the complete attainment, that is the Prayojana Siddhi. To fulfill all these purposes, the Siddhisthana has been written or has been formulated by our Acharyas. And some myths or misunderstandings are there regarding the Siddhisthana of Charak. Mostly for all the scholars, all the UG and PG scholars who are attending this webinar through virtual platform, I would like to
say a few things mainly for the scholars, that there is a myth or misunderstanding that in Charaka Samhita Siddhisthana only Basti Chikitsa has been given, or it depicts only regarding the Panchakarmas, the processes and all these. No, it's not like that. Though Siddhisthana is talking about the Panchakarma, but also the emergency treatment in Ayurveda. Again, how to avoid the complications. The most important is, if you don't want to come across the complications during your due course of your treatment, so what precautions should be taken by the physician for achieving the final success? That has been also depicted well by the acharyas in the Siddhisthana. And if we see the bija मैडम आप अनम्यूट करो मैडम मैडम yes. So, am I audible, sir? yes you are audible. तो सिद्धिस्थान के बीज सूत्र जो है वो हमें चरक संहिता के पूर्व स्थानों में मिलते हैं, क्योंकि किसी भी स्थान का प्लेसमेंट और अरेंजमेंट जब हमें स्थान का विचार करना है तो सबसे पहले जरूरी है कि हम उन संहिता के स्थान और अध्याय का पूर्वापार अनुसंधान या पूर्वापार क्रम संबंध देखें। और सिद्धिस्थान के बीज सूत्र जो है हमें it is okay that I should talk in Hindi, English mix, or what language will be preferred by the organizers? Either Hindi, either English or mix. Let me know, please, someone. Hello, am I audible? Madam, please continue. Any language can be useful. Okay, thank you. So, the Bija Sutras or Uddesh Sutras, as per the Uddesh Tantrikti, we can find it in the Charaka Samhita Sutrasthan, 4th chapter, first at all. That is Samyak Prayogam Chaiva Karmanam Vyapannanam Cha Vyapat Sadhanani Siddhishu Upadikshama. Also in the Charaka Sutrasthan, 15th chapter, that is the Upakalpani Adhyay, the purpose, the very purpose or the prayojan behind the depiction of the Siddhisthana at the end of the Samhita, that has been well described by our Acharya, that is Samyak Prayoga Nimittahi Sarva Karmanam Siddhi Ishta. If the physician is properly organizing all the things, that is the Karana, that is Bheshaj, then the suitability of the karma in that proper patient, or also your paricharak or your supporting nursing staff should be also well trained. And when we are administering the proper treatment or the suitable treatment in that proper patient or suitable patient, then only we can get the proper success, or what the success what we expect. And if we do not administer the proper treatment protocol, then the vyapadas or the complications will be occurred, and that's why the Siddhisthana has been depicted. Also, in Charaka Samhita Vimansthana 8th chapter, while talking about the Pranabhisar Vaidya, or when the Shavidha Pariksha Bhavas have been described, at that place, Acharya Charak has said that Karanam Bhishak iti Ugram. Vaidya is pradhan karan of the chikitsa, and amongst the qualities of a pranabhisar vaidya or a good physician, one quality has been given by the Acharya Charak, that is pratipattidyata. And if we see the Chakrapani commentary of this particular word or the pada, it is said as pratipattihi utpannayam apadi jhatiti kartavya karanam, that when any untoward complication is occurred, at that time, what emergency treatment or what instant action regarding the treatment should be taken by the physician, that has been also needed, or a good physician will be the Pranabhisar Vaidya only if he knows the emergency treatment of the complications. And that for that purpose also the Siddhisthana has been formulated. Slides are not changing.
Please. Yes. And what is the scope or what is the relevance of the Siddhisthana? And that has been again given in the Sutrasthana itself. In the second chapter of Sutrasthana, Acharyas have said that Matra Kalashraya Yukti Siddhi Yukto Pratisthita Tishtati Upari Yukti Jno Dravya Jnanavatam Sada. So if we want the success, and that success, if we can understand the logical reasoning or the Karya Karana Bhav behind the Siddhi in our treatment or the treatment protocol, that is dependent only on Yukti. And the Yukti or the rational analysis, that is dependent on the Matra and Kal. So ultimately, all the success is dependent on the Matra and Kal, that is the proper dose fixation and the proper time of administration of any treatment, though it may be the Panchakarma or though it may be the Shaman Chikitsa. And for that purpose, the whole success of all our treatment protocols, that is dependent on the Tarka. And not only the Ayurveda physician should not only rely on the knowledge in the Samhitas. Along with the knowledge in the Samhitas, he should learn to read in between the lines on the basis of the Tantra Yuktis, and also he should use his or her own Uyya and Tarka, and on the basis of that, one should plan the treatment protocol. Then only we will get the final attainment, that is success. If we are getting the success by chance, that is called as the Yadrucha Siddhi, then it is not the complete success. It is the success by chance. And if we see again the total chapters of the Siddhisthana, if we go one by one, we know all that there are total 12 chapters in this particular sthana. So the first one is the Kalpana Siddhi, second one is the Panchakarmiya Siddhi, third one is the Basti Sutriya Siddhi, fourth chapter is the Sneha Vyapadiki Siddhi, fifth chapter is Netra Basti Vyapadiki Siddhi, seventh chapter is the Vaman Virechan Vyapad Siddhi, the next chapter is Basti Vyapad Siddhi, eighth chapter is Prasruti Yogika Siddhi, ninth chapter is again the most important chapter amongst the 12 chapters of Siddhisthana, that is the Trimarmiya Siddhi, 10th chapter is Basti Siddhi, 11th chapter, that is Phalamatra Siddhi, and lastly the concluding chapter or the 12th chapter of the Siddhisthana and the whole Charaka Samhita, that is the Uttar Basti Siddhi. So we will go one by one in very short period, that what are the major concepts or the fundamental principles they have been depicted or well described by Acharyas in this particular 12 chapters, and how they are even clinically relevant today, that we will see one by one. And that for that purpose, I have selected the major fundamental principles. We are not going detail by sutra to sutra or one by one. So the first and foremost chapter of Kalpana Siddhi, if we see the purpose, that it is formed or it is depicted in the form of Guru Shishya Samvad, including the 12 questions. And at the beginning only, Agnivesh asks 12 questions related to the Panchakarma to his revered Guru, that is Punarvasu Atreya. And as answers to these 12 questions, the Siddhisthana has been well formed or by the Acharyas. And again, we come across one Nyaya in Charaka Samhita, that is the Na Prushto Guruvo Vadanti Nyaya. Unless and until the good queries or good questions are not asked by the disciple to his Guru, the Guru Buddhi is, as Acharya has said, Na Gurur Buddhi Prakashati. And for that purpose, if we want to gain more and more knowledge from our acharyas, we should ask more and more scholarly questions, and that has been done by the Acharya Agnivesh, as he was the most buddhiman or the most intelligent disciple of the amongst the 6 disciples of the Punarvasu Atreya. So here 12 questions have been asked by the Agnivesh, that is Ka Kalpana Panchasu Karma Sukta, that which sequence should be followed, or how the treatment protocol of Panchakarma should be planned by Ayurvedic physician, what should be its ideal or proper sequence or the standard sequence, what are the Ayog, Atiyog and Samyak Yog Lakshanas, and also of the Vaman Virechan, these 2 karmas.
also the regarding the basti, then sankhya, that is the numbers of bastis, or the how that plan should be executed, in what numbers, what should be the duration, or in between gap or spacing should be given. Their gunas, the qualities of woman virechan, then kim gunaha basti, keshu cha kascha basti, which type of basti should be administered in which type of patients. Again, kim varjaniyam prati karma kale, that which things should be avoided, that is regarding the patya, and mainly here apatya has been focused, that what should be avoided by the patients during this panchakarma protocol treatment. Krute kriyanva pariharakala, after successful completion of the panchakarmas, for how much duration all these apathya should be avoided, and that is called as the pariharakal. Then praniyamanascha nayatikena, when the basti has been administered in any patient, there is the fundamental principle is that after a certain period of time, after a certain retention time, that basti should be expelled out from the body of the that patient's body through the Guda Marga. And if it is not the proper expulsion is not being happening, then why it is early expulsion of the basti is happening, or also the late expulsion, why the basti comes after so much time duration, what are the reasons for when the duration is more, retention time of the basti, why it is more, and why it is not expelled out, that all the things has been discussed. And also the sadhya gadaha svaihi shamaneshcha keshit kasmat prayuktahinna shamamrajanti, even after the proper administration of the treatment protocol, what are the reasons due to which even if the sadhya or the curable diseases are not elevated. And all these discussions have been given in this particular chapter. And if we see from the contemporary point of view, we can see that in today's era, our administrative bodies have done compulsion that every hospital, it may be the Ayurveda hospital, it may be the teaching hospital of any Ayurveda institute, they should go for the NAC as well as the NABH accreditation. And mainly the NABH accreditation talks about the standards of the regarding the patient care, and all the contents of the NABH standards, or the 10 chapters of the NABH standards, the description from our Acharya's point of view we can see in the Siddhisthana, because we know most of the teachers or even the PG PhD scholars, they are well versed that in NABH standards there are 10 chapters, and amongst those first 5 chapters are related related to the patient centric services, and the last 5, that is 6 to 10 chapters, are related to the organization, mainly regarding the administration and the availability of the facilities in that particular hospital. So Siddhisthana, or the 10 chapters, 12 chapters of the Siddhisthana, in these 12 chapters, mainly all the standards or all the SOPs of the Panchakarmas, along with how the care should be administered to the patients, how the patient safety should be focused, how the equipment standardization, then medications should be, how they should be managed. Again, the patient's rights and education, they have been also well described in the, while describing the Panchakarma protocols, that what care should be taken, how we should take the consent, and hospital infection control, that any iatrogenic disease should not be occur in a particular patient when he is taking treatment in any Panchakarma clinic or Ayurveda hospital. Those all points have been focused mainly in the Siddhisthana by our Acharyas. And also the organization center, that is what facilities, what are the responsibilities of the management, what facilities the organization should provide to the patients, how patient should safety should be taken care of, and also the human resource management, that is well-trained hospital staff as well as the physicians, how they should be well-trained continuously for the continuous quality improvement
of the organization for the care of patients. All the things have been very well described by our acharyas in the Siddhisthana itself, because for proper siddhi, it is important that in Charaka Samhita Sutrasthan Khudak Chatushpad Adhyay, acharyas have given the Chikitsa Chatushpad, that 4 qualities are necessary in each of the 4 factors of the Chikitsa, that is Vaidya, then Bheshaja, Paricharaka, and Rugna. And amongst in Sutrasthan, in Bija Swarup, in Uddesha Swarup only, in short, the qualities have been given. But Siddhisthan mainly talks about the Nirdesh, or the detailed description of those qualities of the Vaidya, as well as Aushadha, as well as Paricharaka, and as well as the Rugna, that which qualities should be there, should present in these 4 factors which are responsible for the successful management of a disease, and also which qualities should not, which doshas or which vaigunyata should not be there in these Vaidya, as well as Bheshaja, as well as Paricharaka, and Atur, that is Rugna. They have been given or they have been described very well in the Siddhisthan, as an overview of Siddhisthan if we see. And in this first chapter, after describing the treatment protocol, that is first Purva Karma, that is Snehan, Svedan, after that Vaman Virechan Yoga and Vaman Virechan Krutalinga, that is Ayoga, Tiyog, Lakshanas, they have been given. And after that, one important fundamental principle is given, that is the Samsarjan Kram. And here if we see, this is the Ahara Samsarjan Kram, because after the Shodhana Chikitsa, when in Vaman and Virechan, there is a massive expulsion, or the Acharya Chakrapani says that Bhuri Dosha Nirharanat, there is Agni Mandya, or diminution of our digestive fire, and to again re-establish the digestive power to its normalcy, the Ahara Samsarjan Kram is important. That is Peya, Vilepim, Akrutam, Krutam, Yusham, Rasam, Tridvi, Rathaikaish, Kasha, Kramena Sevet, Vishuddha Kaya, Pradhana Madhyavar Shuddhi Shuddha. That is depending on the type of Shuddhi, that is either Pravar Shuddhi, Madhyam Shuddhi, or Avar Shuddhi. This Peya, Vilepi, Akruta and Kruta Yusha, and Akruta and Kruta Rasa, they should be used for respectively 3 Ahar Kalas, then 2 Ahar Kalas, and 1 Ahar Kala, according to the type of Shuddhi. And accordingly, in Pravar Shuddhi, it's we use it for 7 days. In Madhyam Shuddhi, generally we use for 4 to 5 days, and for Avar Shuddhi, we use it for the 3 days, that Samsarjan Kram. And here the Drushtant has been also given by acharyas, that is Yatha Anus Agni Truna Gomayadde Sandukshamano Bhavati Kramena. As we see in the external universe, that when there is when we want to make the Agni Sandukshana, that when we want to stimulate the Agni in external universe, we use the fuels one by one, that from small, gradually we increase the Agni, and then only the Agni becomes stable. The same is true with our digestive fire or the Jatragni also, that when with Laghu Ahar we have to start, and then only we have to move forward to the Guru Ahar. As per the Deepan Pachan, we have to give the Laghu Ahar first, which is easy for digestion, and which is digested in very less time. And accordingly, when the Agni is stimulated, then only we will come to the normal Ahar, or the routine Ahar, or routine diet of the patient. And here, this Ahar Samsarjan Kram is it is as useful as in Shodhan Chikitsa, but in Shaman Chikitsa also, when any Jirna Vyadhi, any chronic disease is there, in any chronic disease, even after the Langhan, we can apply this Samsarjan Krama. And even in other diseases, while giving the Shaman Chikitsa also, at the very beginning, when there is Samavastha, in that Samavastha also, for Deepan and Pachan purpose, and for the
proper gradual stimulation of our Jaఠરાગ્નિ, we can use this Samsarjan Kram. And that is again clinically relevant, or it is again most important concept for the clinical practice. Here in this particular adhyay, the Chaturvida type of Shuddhi of Vaman Virechan has been given by acharyas. That is Jaganya Madhya Pravaretu Vegash Chatvar Ishta Vamane Shadashtu, as you all are very well versed in the sutras, and we can get the sutras directly in the Samhita. So here in this particular sutra, 4 types of Shuddhi have been given in regards to the Vaman and Virechan. First one is the Vaigiki Shuddhi, that is dependent on the how many Vegas are coming in, or we found in particular type of Shuddhi, depending on the number of Vegas, then depending on the matter which has been expelled out from our body, from the patient's body during the Vaman and during the Virechan, and also the which signs and symptoms we found at the end of the Shuddhi. Mainly the Vaman is said as the Pittantam Ishtam Vamanam and Kafantam Cha Virekamahu, that at the end of the Vaman, the Pitta should be expelled out from the Amashay, and at the end of the Virechan, the Kapha should be expelled out from the Pakvashay. Then only we say that it is the Pradhana Shuddhi, or it is the Uttama Shuddhi. And also the most important amongst the 4 Shuddhis is the Laingiki Shuddhi, as per Acharya Chakrapani has said. Even if there are 4 types of Shuddhis, one Ayurveda physician should most focus on the Laingiki Shuddhi, that is for which purpose we have administered that particular Vaman or Virechan karma. If we are achieving the Samyak Yoga Lakshanas of the Vaman and Virechan at the end, and also if we see the Rug Upashaman or Vikar Upashaman, that for management of which disease we have administered that particular treatment protocol, if we achieve that Rugupashaman, or the relief in the signs and symptoms of that particular disease, that is called as the Laingiki Shuddhi, and it is said to be as the most important Shuddhi amongst the 4 types of Shuddhis. Moving to the next in this particular chapter, also the importance of Basti as Ardha Chikitsa has been well highlighted by our acharyas. That is, in Vaman and Virechan, there are certain contraindications that we cannot administer Vaman and Virechan in each and every patient. But in Basti, if we follow the proper treatment protocol, Basti can be administered even in the critical cases, even in the lifestyle disorders, even in because Vaman and Virechan, most of the times we see that there should be Bahu Dosha Avastha or the Dosha Utklesha Avastha. But in Basti, we can administer the Basti in Shakhagat Rog, Koshtagat Rog, as well as the Marmasthi Sandhigat Rog. And mainly, Basti is acting upon the vitiated Vata Dosha, and that's why as we all know that Vata is Pradhan Dosha amongst the 3 doshas, that is Pittam Pangu, Kapha Pangu, Pangavo Maladhatava, Vayuna Yatra Niyante, Tatra Varshanti Meghavat. So for proper elevation of the Vata Dosh, the Basti treatment is important, and that's why Acharyas have said that Tasmat Chikitsardhamiti Bruvanti, that we can say Basti as Ardha Chikitsa, that 50% of the success of any treatment protocol, if we administer the Basti, we will get the more success in this, in any disease. And also the definition of Basti is very well given by our acharyas in this particular chapter of Kalpana Siddhi. Generally, when in today's era, when there is contemporary relevance and everyone is talking about the globalization of Ayurveda, so many times one mistake or not is done, that one-to-one English translations of certain Ayurvedic terms are given most of the times, but Basti is not equal to enema. Many of the times in English translations or in subject related books, or you can see on so many web pages, Basti is translated as enema, but enema is having very limited meaning. But
if we see the Karmukta or the mode of action of Basti, that mode of action of Basti has been given by our Acharyas in this 48th and 41st Sutra of Kalpana Siddhi Adhyaya, that is Nabhi Pradesham Katiparshva Kukshim Gatva Shakrut Dosha Chayam Vilodya Samsneha Kayam Sapurisha Dosha Samyak Sukhe Neti Chaya Sabasti. That means the medications which we administered through Basti or through Buddha Marga, when they will reach to Nabhi Pradesh, also the Kati Pradesh, Parshva Pradesh, Kukshi, and after that, the Purisha Chaya, Purisha Sanchaya as well as the Dosha Sanchaya, they will liquefy all those untoward or unwanted subjects which have been accumulated in our body. After the, along with liquefying all these unwanted substances or along with this, the Basti will also do oleation or the snehan of our complete body, and after doing all these karmas, it should again come out of the body, or it should be expelled out from our body along with the Purisha as well as the vitiated doshas. And this pratyagaman or this expulsion of Basti should be again Sukhapurvak. Samyak Sukhe Neti. Eti, that means it is coming back or it is returning, it is expelled. The Basti Dravyas are being expelled out from the body. But at that time, they should be again expelled out with Sukhapurvak. If there are any pain while expulsion of this Basti, it is the Basti we had not administered it properly. Then moving to the next, if we see all these principles have been, the sequence has been well narrated in the Kalpana Siddhi. When we come across to the second chapter, that is the Panchakarmiya Siddhi, mainly the indications and the contraindications of the all the Panchakarmas in Vyasta and Samasta form, they have been given in this Panchakarmiya Siddhi. आज के डेट में अगर हम इसका रिलेवेंस देखते हैं तो मॉडर्न फार्माकोलॉजी में भी एक डिस्क्रिप्शन है कि even if you don't know the indications of a medicine, it is okay or it is understandable, but first of all you should know the contraindications of that particular medicine or the medication, that where you should not administer that particular medicine. The same is true with the Panchakarma procedures or the Shodhana procedures, and that's why this particular chapter has been mainly highlighted by acharyas, that first of all, for gaining the success or for achieving success, the physician should know that where he should not administer the panchakarmas, that is where these panchakarmas are contraindicated. And at the very beginning of this chapter, acharya have been given a list of the patients in which any of the panchakarma should not be administered, and there the list is a long list, that is Chandaha, Sahasikaha, Bhiru, Krutagnaha, Vaidyamaninaha, and also they have given that Krutagna, that this type of patients should not be given any type of treatment, and also mainly the Panchakarma treatment. Why? Because if we administer the Panchakarma treatment in this particular patients, we will not get the success, or we don't achieve the final outcome what with what purpose we have administered those treatments. And if we see just a new happening or in the last 10 to 15 days, that NMC, that is National Medical Council, has now also given a new gazette or made some new regulations, that now the doctor, the registered medical practitioner can refuse the patient who is a violent or who is abusive, and the doctor may refuse that patient from or refrain himself from giving treatment or treating this patient. And that has been very well said or already explained by our acharyas in this Panchakarmiya Siddhi, that if in these type of patients, if you are giving the treatment, you are not going to get the success, and rather the physician gets the backlash or the bad popularity or bad words from the society. And for that purpose, our selection, proper selection of patient is most important
and accordingly we should administer the suitable panchakarma or the suitable treatment protocol in the suitable patient. And here the most focus is given on the contraindications first, because in contraindicated patients, if we are giving these treatment protocols, there are more chances that we will not get the success, rather we will get the bad publicity. And that's why physician should examine the patient properly, and then only he or she should administer the treatment protocol. And here also the 5 drishtantas have been given by the acharyas, that how this Vaman, Virechan, Asthapan Basti, Anuvasan Basti and Shiro Virechan, they are working on this particular vyadhi, or how what is their mode of action. And some drishtantas, what we see in the external universe, they have been given by the our acharyas in this particular chapter. If we just, for example, if we see the mode of action or the karmukta of Vaman, there the drishtanta has been given that Kedar Setu Bhede Shalyadi Ashosha Dosha Vinashvat, that when we are watering to any field or the farm of if we break the water providing bodies, that is the Kedar Setu, if we break that Kedar Setu, all the water will flow out from that field, and finally that shali or whatever the grains they have been there in that particular field, they will not get the proper nutrition, and they will become shushk or they will be dried. Similarly, when with the Vamana, the Utkleshita Kapha dosha or the Vikruta Kapha dosha is expelled out from our body, that the vyadhis or the disease does not get the fortification from that Vikruta Kapha dosha, and automatically due to that expulsion of the Kapha dosha, we get the vyadhi Upashaman or the Ruk Upashaman. Similarly, the same drishtantas have been given that regarding the Virechan, that Agni Upashame Agni Gruhavat, that when we again for Asthapan Basti, that Vanaspati Moolat Chedavat, and that when we break all the roots of the any tree, then automatically the tree gets dried or destroyed. Similarly, with Asthapan Basti, when we are breaking or when we are doing the chedan of the mool of the root cause of the diseases, automatically the disease gets elevated and we get the siddhi in the chikitsa. In Anuvasan Basti, mainly the Moola Druma Prasaikavat, the exactly opposite drishtant has been given by Acharya, that if we are giving proper nourishment to the Vata dosha with the Signa Basti, then how after watering the plant properly at its root, there is the Pallava and the new leaves and the flowers and fruits, they are coming in the tree. Similarly, with the use of the Anuvasan Basti, there is the Vata elevation, and we get the elevation of the Vata predominant diseases. Next, at the end of this chapter, particularly, the Acharyas are talking about the Yadrucha Siddhi, that if we are how we are getting the success in our treatment, if we are not able to give the rationality or the logical reasoning behind the success, or if behind the success in our treatment, if we are not able to define the mode of action of our treatment protocol, that how we are achieving the relief in the signs and symptoms of this particular disease with this particular treatment protocol, that is called as the Yadrucha Siddhi or the success by chance. And this success by chance is not repeatable or the reproducible, because when we want to become expert Ayurveda physician or a successful Ayurveda physician, the results of our treatment protocol should be repeated. Repeatedly we get success, repeatedly we get the final outcome as the Ruk Upashaman or Swasthya Rakshan or Vyadhi Parishaman. And for that purpose, we should be able to elaborate the mode of action behind our
treatment protocol, and that is again well highlighted in this particular chapter. Moving to the next, in the third chapter, again in the Guru Shishya Samvad Swarup, we get the Basti Sutriya Siddhi, sorry, we get the Basti Sutriya Adhyay. Here again, the 10 questions regarding the whole treatment protocol of the Basti, they have been given by the acharyas, and the indications, contraindications, their quality, along with their dose fixations, then the sequence of how we should mix the Basti Dravyas with each other, what is their proper sequence, in which position, mainly the Vama Parshva position, that is the Basti should be administered, in which type of patients, which type of Basti should be administered, and the Bastis are beneficial for which type of patients. All these descriptions have been given in the Basti Sutriya Siddhi Adhyay. Along with that, their Ayog, Atiyog Lakshanas, and also the Laingiki Shuddhi has been again well depicted in this particular Adhyay. Again, this is the important aspect or the silent feature of the Siddhisthana, that this particular Adhyay is again narrated in the form of Guru Shishya Samvad, that is 10 questions regarding the Basti have been asked by the disciple, and acharyas have been depicted the Adhyay as the answers to these 10 questions, and all the queries are again sorted out regarding the Basti. Moving to the next chapter, we are going somewhat fast so that to complete all the 12 chapters, their major fundamental principle. In the fourth chapter, that is in Sneha Vyapadiki Siddhi Adhyay, mainly the Vyapadas or the complications of the Sneha Basti, that is Anuvasan Basti, have been given, along with certain yogas of Sneha Basti. The major yogas of Sneha Basti have been given in this particular chapter, and the effects or the benefits of the Sneha Basti have been again narrated by Acharya. That is Vyadhi Vyayama Karmadva Kshina Bala Nirojasam Kshina Shukrasya Chativa Sneha Basti Balaprada. That is the major indications of the Sneha Basti. When there is a Vata Prakop mainly due to the Dhatu Kshay, or what we can say that when in the Nirupastambhita Vata Prakop, we have to administer the Sneha Basti, and this Sneha Basti gives the benefits of this Sneha Basti is that mainly Adho in Adho Sharira, that is below Kati or below mainly the Adho Shakha, in Adho Shakha Gata Vyadhis, the Sneha Basti is most important, and also in the treatment of the infertility in male patients as well as the infertility in the female patients. In those type of infertile patients, we can administer the Sneha Basti. And in today's era also, we can see that there is a rise in infertility along with the other lifestyle disorders, and for that purpose, we can successfully use different kinds of Sneha Bastis given in this particular chapter, or also particularly in the Siddhisthana. And here, one important fundamental principle has been given by our acharyas, that when we are administering sneha in human body, in any purusha, we should not administer sneha with both the margas. As we know that is there are two ways mainly for administration of any medication, that is urdhva marga, that is mukha marga, and adho marga, that is the guda marga. So when we are administering in basti, particularly this sneha basti or anuvasan basti, at that time we should not administer the snehapan or the abhyantar snehapan, or we should not give the snehapan with the mukha marga, because when we are administering when we are giving sneha with urdhva as well as adho marga, there will be the ama formation, and again there the abhishanda will be created, and mainly our Jatragni will become again diminished, and Jatragni Mandya will be there. And that's why again that Jatragni Mandya will again
increase the vata prakop, and that's why we should not administer the sneha with both the margas, that is urdhva and adho marga, simultaneously. In this chapter, again, the complications of sneha basti, that is snigdha, 6 vyapadas have been given, that is vatavritta, pittavritta, kaphavritta, annavritta, purishavritta sneha basti, as well as abhukta sneha basti, that what are their signs and symptoms and what is their treatment. Along with this, the again one important concept is highlighted in this particular chapter, that is the matra basti, that during while we are giving bastis, either niroh basti or anuvasan basti, or when we are using karma basti, kala basti, this type, or yoga basti protocols, we have to follow certain rules and regulations, certain pathya, but when we are minimizing the dose, that with minimal dose, when we are giving the matra basti, particularly it is a type of sneha basti or the snigdha basti, and here the specific indications of matra basti have been given, and also the benefits of matra basti have been well highlighted in this particular chapter, that matra basti can be administered in the patients who are durbala, then there is karshana due to the karma, that is the panchakarma, then vyayama, then bhara, advayana, stri karshiteshu. These indications have been given, and the most important is yatheshta ahara cheshtasya sarvakalam niratra. मात्रा बस्ती जो है हम सभी रुग्णों में दे सकते हैं, और इनके लिए जरूरी नहीं कि है कि हम किसी पथ्य का पालन करें, और मात्रा बस्ती के प्रणिधान के पश्चात व्यापद उत्पन्न होने की संभावना बहुत ही कम होती है, और यहाँ पर आपको पथ्य का अगर रुग्ण पालन नहीं कर पा रहा है या कोई भी क्रिटिकल केस है, वहां पर भी हम मात्रा बस्ती दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अत्यंत ह्रस्व मात्रा में हम यहाँ पर स्नेह बस्ती देते हैं। और स्नेह बस्ती के जो गुण और कर्म बताएं, उसमें वो सबसे इम्पोर्टेंट बताया कि ये बल्य है, सुखोपचार्य है, यानी सुखपूर्वक हम इस बस्ती ये बस्ती प्रदान कर सकते हैं। सुखपूर्वक यह पुरुष का निगमन करती है, पुरुष का एक्सपल्शन करती है, और सबसे इम्पोर्टेंट ये बस्ती ब्रोहण है, और सभी वात रोगों का नाश करने के लिए ये मात्रा बस्ती जो है वो उपयुक्त है। अब अगले अध्याय की जब बात करते हैं हम नेत्र बस्ती व्यापदी की सिद्धि, तो यहाँ पर हमें मिलता है वर्णन कि सबसे पहले शुरुआत में बस्ती नेत्र दोष, बस्ती पुटक के दोष और उन दोषों के कारण उत्पन्न होने वाले व्यापद, और इसके साथ साथ बस्ती प्रणेता के दोषों का आचार्य के द्वारा यहाँ पर वर्णन किया गया है। और ये सारे दोष जो है अगर हम देखेंगे तो 8 संख्या में इनका विवरण किया है। द टोटल 8 नंबर्स ऑफ बस्ती नेत्र दोष, बस्ती पुटक दोष और बस्ती प्रणेता के दोष जो है यहाँ पर आचार्यों के द्वारा बताए गए। और इसका अगर हम कंटेम्पररी रिलेवेंस या आज की काल में उसके परिप्रेक्ष्य में इसका विचार करते हैं, तो अगर आपको चिकित्सा में सिद्धि या यश प्राप्त करना है, तो जरूरी है कि चिकित्सा के लिए जो आप साधन या उपकरण आप जिनका उपयोग कर रहे हैं, उन इक्विपमेंट्स का भी स्टैंडर्डाइजेशन होना जरूरी है। वो इक्विपमेंट भी उचित और सम्यक हो, और इसीलिए इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग और इक्विपमेंट स्टैंडर्डाइजेशन से रिलेटेड जो NABH के स्टैंडर्ड्स आज की डेट में हम देखते हैं, एक्चुअली हमारे आचार्यों ने इन स्टैंडर्ड्स का या इन आदर्श मानदंडों का या आदर्श प्रणाली का वर्णन जो है इस सिद्धिस्थान में किया है। क्योंकि अगर आपके उपकरण भी गुणवान होंगे तो ही आपको उचित सिद्धि जो है वहां पर या उचित यश प्राप्त होगा। अगर आपके उपकरण दोषयुक्त है तो जिस सिद्धि की हम या जिस यश की, चिकित्सा के यश की हम कामना करते हैं या जिस इच्छा से हम कोई भी चिकित्सा के लिए प्रयुक्त होते हैं, वो चिकित्सा या सफलता हमें नहीं प्राप्त होगी। इसके साथ ही बस्ती प्रणेता के भी दोष जो बताए हैं वो भी इम्पोर्टेंट है कि फ्रीक्वेंट एडमिनिस्ट्रेशन, रिपीटेड एडमिनिस्ट्रेशन अगर बस्ती प्रणेता करेगा, अगर आपका स्टाफ जो है वो परिचारक हो या वैद्य हो, वो अगर वेल ट्रेंड नहीं है बस्ती प्रदान करने में, तो उसके कारण भी ये दोष उत्पन्न हो सकते हैं और उसके कारण हमें चिकित्सा में असफलता प्राप्त हो सकती है। और अगर हमें चिकित्सा में सफलता प्राप्त करनी है तो हमारा परिचारक गण, हमारा असिस्टेंट स्टाफ
हमारा सपोर्टिंग स्टाफ एज वेल एज जो मुख्य कारण है प्रधान भीषक, वो उस स्टाफ का भी रिपीटेड ट्रेनिंग जो है वो जरूरी है, और तभी हम कंटिन्यूअस क्वालिटी जो है वो प्राप्त हमें मिल सकती है, चिकित्सा में सिद्धि मिल सकती है। और इसीलिए रिपीटेड ट्रेनिंग्स आर नेसेसरी एंड देन ओनली वी कैन अवॉइड दिस टाइप ऑफ दोषास ऑफ बस्ती प्रणेता. Again, if we move to the next two chapters, mainly the sixth chapter, that is Vaman Virechan Vyapat Siddhi and Basti Vyapat Siddhi. In these two chapters, इस छठे अध्याय में वमन विरेचन व्यापत के जो है कुल 10 व्यापत बताए हैं, और बस्ती के 12 व्यापत जो है बस्ती व्यापत सिद्धि अध्याय यानी 7वें अध्याय में बताए, और उनके साथ साथ उनके लक्षण, उनकी चिकित्सा भी इन 2 अध्यायों में जो है आचार्यों के द्वारा बताई गई है. तो द्वश व्यापदों की जब हम बात करते हैं तो वमन और विरेचन इन दोनों में भी हम ये व्यापद उत्पन्न होते हुए देख सकते हैं. अगर किसी भी तरह से प्रेष्य, भैषज, वैद्य या आतुर, इनमें अगर विगुणता है तो इन व्यापदों की उत्पत्ति हो सकती है. और इसीलिए जरूरी है कि ये चिकित्सा के चारों पाद जो है वो हमेशा गुणवान हो, गुणयुक्त हो, अपने अपने क्वालिटीज से वो युक्त हो. ऐसे ही बस्ती के व्यापद 12 व्यापद कुल हमें देखने को मिलते हैं. आचार्य ने इनका वर्णन जो है वो 7वें बस्ती व्यापद सिद्धि अध्याय में किया है. उनके लक्षण भी बताए, उसके साथ साथ उनकी चिकित्सा भी बताई. और यहाँ पर इसी अध्याय में हमें एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट मिलता है, वो है मात्रावत औषध के लक्षण. ये इस विषय का वर्णन या इस कंसेप्ट का वर्णन हमें कुछ इसके बीज स्वरूप जो वर्णन है वो कल्पस्थान के अध्यायों में भी मिलता है. कल्पस्थान के अंतिम अध्याय में कि अल्पस्यापि महातत्वम प्रभुतस्य अल्पकल्पताम, कि अल्प मात्रा में भी हम औषध कैसे प्रयुक्त करें और उससे अधिकाधिक कर्म की सिद्धि या चिकित्सा यश की सिद्धि हम कैसे प्राप्त करें. और उसी के कंटिन्यूएशन में ये कंसेप्ट या एक सूत्र हमें मिलता है, अल्पमात्रम महावेगम बहुदोष हरम सुखम लघुपाकम सुखास्वादम प्रीणनम व्याधिनाशनम अविकारी च व्यापत्तौ नातिग्लानिकरम चयत गंधवर्ण रसोपेतम विद्यात मात्रावत औषधम. और यहाँ पर जो मात्रावत औषध के ये जो लक्षण बताए हैं, ये केवल शोधन औषधि को नहीं लागू होते. ये नियम जो है, और दीज रूल्स आर एप्लीकेबल टू द शमन औषधि ऑल्सो, कि जब हम कोई भी औषध प्रयुक्त कर रहे हैं किसी भी रुग्ण में, तो हमें उस औषध के इन लक्षणों का विचार करना जरूरी है कि वो अल्प मात्रा में होना चाहिए, उससे अनेक दोषों का या बहु प्रमाण में, अधिक प्रमाण में दोषों का सुखपूर्वक निर्हरण होना चाहिए. वो औषध जो है उसका प्रयुक्त करना भी सुख होना चाहिए. इट शुड बी पैलेटेबल. द कन्वीनियंसी इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर ड्रग इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. लघुपाकम अर्थात दैट औषध शुड बी इजीली डाइजेस्टेड बाय दैट पर्टिकुलर पेशेंट, बिकॉज एज वी ऑल नो रोगाः सर्वेपि मंदग्नो. रुग्ण है अर्थात उसकी अग्नि मंद है. तो उस अग्नि मंद में अगर हम ऐसी औषधि देंगे कि जो गुरुवीर्य होगी या गुरुपाकी होगी, तो उस औषध या निर्वीर्य अवीर्य औषधि होगी तो भी हमें जो अपेक्षित कर्म है चिकित्सा सिद्धि का वो प्राप्त नहीं होगा, रोग का व्याधि का उपशमन नहीं होगा. और इसीलिए जरूरी है कि वो औषध लघुपाकी हो. सुखास्वादम, दैट इज पैलेटेबिलिटी इज ऑल्सो वन इम्पॉर्टेंट इशू. और आज की डेट में अगर हम फार्माकोलॉजिकल एस्पेक्ट से अगर हम स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ न्यू मेडिसिन देखते हैं या उसके स्टैंडर्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस की बात करते हैं, तो यहाँ पर पैलेटेबिलिटी of the drug or the medicine as well as the conveniency of its administration, these 2 points or the 2 qualities are most important points, and they have been already given by our acharyas in the Charaka Samhita Siddhisthana. Because if we want to get siddhi, our bheshaj or the second path of our chikitsa chatushpad or the second factor should be also gunwan, or it should be again it should be also endorsed with its own qualities, and for that purpose we should
focus on the matravat aushadha lakshanas. That gandhavarna rasopetam is also important, that appropriate smell, appropriate color, and appropriate rasa. That is, again, these are nothing but the standard manufacturing processes of a drug, what we can see in today's era. Then next, we have already discussed, that is Vaman Virechan Vyapad, that is 10 Vyapadas are due to are happening in the due course as untoward complications of the Vaman and Virechan, that is Adman, Parikarti, Strav, Rudgraha, Gatragraha, then Jivadan, Sabhra, then Vibhransh, Stambha, Upadrava, and Klam. And these could be again due to either Ayog or Atiyoga of Vaman and Virechan. And the reason or the karana for occurrence of these untoward effects are mainly the Preshya Bhaishajya Vaidyanam Vaigunya Taturasya. When Chikitsa Chatushpad is not endorsed with its own, their respective own qualities, there are chances that we can come across this untoward complication. The same is true with the Basti also, that we can get 12 Vyapadas or the 12 complications of the Basti, that is Ayog, Atiyog, or then Klama, Adman, Hikka, Rutprapti, Urdhvagaman, then Pravahika, Shiroarti or Shirashul, then Angashul or Angamar, the Parikartika and Paristrav. Moving to the next, the 8th chapter is the Prasruta Yogika Siddhi. And here in this particular chapter, the particular Basti yogas have been narrated by our acharyas, which are depending on their measurement, that is depending on the prasrutas, that is the measurement we can administer the different bastis, that is pancha prasrutiki basti, ashta prasrutiki basti, and all that. And mainly these bastis should be administered in the complications which are occurred in as a untoward effect of the basti chikitsa. So as a treatment protocol or as the management of the complications of basti, for the management of the 12 Vyapadas of Basti, we can use this Prasruta Yogika Siddhi Adhyay, mainly the different Prasrutik Niruhas. And also the Rasakalpa, Ghruta, and Yavagu, they have been also given in this particular chapter. And mainly the different types of Atisaras which are occurring as an untoward effect of the Basti or as a complication of Basti, they will need a specific particular treatment or precise treatment, and for that purpose this particular chapter has been narrated by the acharyas. Moving to the next is the 9th chapter, that is Trimarmiya Siddhi. Again, this chapter is the continuation of the Trimarmiya Chikitsa Adhyaya in the Chikitsa Sthan, because when the complications of this particularly Shodhana karmas or the Panchakarmas and also the Shaman Chikitsa, they are occurring in the 3 marmas. As we all know, there are 108, total 108 marmas in our human body. And amongst those, 3 marmas are said to be the most important one or the most special one. And these 3 marmas are nothing but the Rudhay, Shira, and Basti. And the diseases or the complications which are occurring at these 3 marmas as a complication of the Shodhan karma or Shaman karma, they are particularly given in this Trimarmiya Siddhi. And this Trimarmiya Siddhi, if we see from a contemporary point of view or clinical importance point of view, what are the all emergency conditions or the critical conditions which are occurring during our practice, those can be well addressed by the knowledge or by the expertise in this particular chapter, that is Trimarmiya Siddhi. If the Ayurveda physician is very well trained and he or she is having a sound and expert knowledge from this Trimarmiya Siddhi Adhyay, he can easily treat any kind of critical condition or any kind of emergency condition. Just I want to add one point here, that in last month only in Jamnagar there was one Ayu emergency yatra. There is that is an initiative started by the ICU, that is a new organization, non NGO,
based in the Kerala, and along with the complete support from the Minister of Ayush and all the national institute and all the major institutes of Ayurveda throughout our country, they are organizing the emergency treatment protocols or the training programs for all the Ayurveda practitioners, that is IUICU, that is Ayurveda emergency. And if any Ayurveda physician wants to become good emergency Ayurveda practitioner, not allopathy practitioner, emergency Ayurvedic practitioner, he should have a sound knowledge of this Trimarmiya Siddhi Adhyaya. And the importance of these three marmas have been given in this particular chapter, that is Rudhe Murdni Bastau Chandrunam Pranaha Pratishtita Tasmat Tesham Sadayatnam Kurvita Paripalani. अगर किसी व्यक्ति को अपने प्राण की प्रतिष्ठा करनी है, अपने प्राण का परिपालन करना है, तो जरूरी है कि वो ये तीन मर्म जो है हृदय, शीर और बस्ती, इनका हमेशा जो है इनका प्रोटेक्शन, इनका संरक्षण करना जरूरी है। और मर्म परिपालन के लिए त्रिविध कर्म बताए गए हैं। उसमें सबसे पहला जो बताया है आबाध वर्जन, अर्थात जिन कारणों से या जिन हेतुओं से मर्मों पर आघात होने की शक्यता है, उन सभी कारणों का निराकरण करना या उनको अवॉइड करना। देन नेक्स्ट इज द नित्य स्वस्थानुवर्तनम, हमेशा हर एक व्यक्ति के द्वारा, प्रत्येक पुरुष के द्वारा हमेशा स्वस्थ वृत्त के सभी नियमों का पालन किया जाना, जिसमें दिनचर्या, ऋतुचर्या, इन सभी का अंतर्भाव होता है। इसके साथ साथ उत्पन्नार्ति विघातश्च, यानी अगर किसी कारणवश अगर कोई इन मर्मों पर आघात होता है और उसके कारण प्राण को भय उत्पन्न होता है और कोई भी व्याधि उत्पन्न होता है, तो उस उत्पन्न व्याधि की चिकित्सा के लिए मेनली ये त्रिमर्मीय सिद्धि अध्याय का वर्णन जो है वो किया गया है। और इसमें भी बहुतांश जो योग है वो बस्ती योग जो है दिए हैं। और त्रिमर्मीय सिद्धि अध्याय के पूर्ण विषय वस्तु का अगर हम वर्णन देखते हैं तो इसमें मर्म चिकित्सा के साथ साथ उत्तर बस्ती का विधि बताया गया है। वो ये एक विशेषता है, एक विशिष्ट आयुर्वेद का पंचकर्म है कि जो मूत्र मार्ग, पुरुषों में मूत्र मार्ग से और स्त्रियों में योनि मार्ग से जिस विशिष्ट बस्ती का प्रणिधान किया जाता है अल्प मात्रा में, उस उत्तर बस्ती विधि का पूर्णतः वर्णन हमें त्रिमर्मीय सिद्धि अध्याय में मिलता है। तो क्रिटिकल कंडीशंस में, इमरजेंसी कंडीशंस में भी हम उत्तर बस्ती का उपयोग कर सकते हैं। इसके साथ साथ मेनली अगेन वंध्यत्व की चिकित्सा में भी एक मेजर रोल हमें उत्तर बस्ती चिकित्सा का आज भी देखने को मिलता है। इसी उत्तर बस्ती विधि का विधान जो है मेनली बस्तीगत दोषों के लिए किया हुआ हमें प्राप्त होता है, उसका वर्णन। और साथ ही शिरोविरेचन, जो अंतिम पंचकर्मों में से जो पांचवा कर्म बताया है आचार्य चरक ने या चरक संहिता के अनुसार, उस शिरोविरेचन के विधि, उसके प्रकार, इन सभी का वर्णन जो है वो हमें त्रिमर्मीय सिद्धि अध्याय मिलता है। इसके साथ साथ मर्मगत व्याधि के लक्षण और उनकी चिकित्सा, विशेषतः हृदय, बस्ती और शिर, इन तीन मर्मों में उत्पन्न होने वाले अत्ययिक व्याधियों के लक्षण और उनकी चिकित्सा, जैसे सूर्यावर्त हो, अर्धावभेदक हो, इन व्याधियों की चिकित्सा भी हमें इस अध्याय में मिलती है। 13 मूत्र दोषों का वर्णन, उनके लक्षण और उसके साथ साथ चिकित्सा, और मर्मों का महत्व। 108 मर्मों में से इन त्रिमर्मों का क्या महत्व है प्राण के परिपालन में या हमारी दीर्घायु के कामना में, ये भी यहाँ पर आचार्यों के द्वारा अत्यंत उचित स्वरूप में इसका वर्णन जो है किया गया है। 10वां अध्याय जो है वो है बस्ती सिद्धि अध्याय, और इसमें विशिष्ट व्याधि के अनुसार विशिष्ट बस्ती योगों का वर्णन आचार्य के द्वारा किया गया है। और इसके साथ साथ बस्ती की उपयोगिता या उसके एडवांटेजेस क्या है ये भी यहाँ पर बताए हैं। और बस्ती को अर्ध चिकित्सा क्यों कहा जाता है, इसके कारण भी हमें इस अध्याय में मिलते हैं कि कर्माद अन्यद बस्ती समम न विद्यते शीघ्र सुख विशोधित्वात्। शीघ्र अर्थात अल्प काल में और सुखपूर्वक अगर हमें दोषों का विशोधन करना है तो उसके लिए सबसे उचित या सूटेबल कर्म जो है वो है बस्ती। और बस्ती के कारण हमें आश्व अपतर्पण और तर्पण, ये दोनों भी प्राप्त हो सकते हैं। अपतर्पण जन्य व्याधियों में हम संतर्पण बस्तियों का उपयोग कर सकते हैं, और वैसे ही संतर्पण जन्य व्याधियों में हम
अपतर्पण बस्तियों का उपयोग कर सकते हैं और उनके प्रणिधान के पश्चात, उनके उपयोग के पश्चात हमें तुरंत ही आशु अपतर्पण या आशु संतर्पण हमें प्राप्त होगा। और निरत्यत्वात्, अगेन दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, कि किसी भी कॉम्प्लिकेशन या किसी भी व्यापत का उत्पन्न न होते हुए हमें व्याधि की चिकित्सा में सफलता जो है वो प्राप्त हो सकती। इसी के साथ बस्ती के 3 प्रकार जो है, अनुवासन बस्ती, निरोह बस्ती, उत्तर बस्ती, इनका वर्णन और उनकी विशिष्ट उपयोगिता विशिष्ट व्याधियों में उनके इंडिकेशंस जो है ये बताया। और यहाँ पर बस्ती का जब आप चयन या बस्ती का सिलेक्शन जब कोई भी आयुर्वेदिक फिजिशियन कर रहा है किसी व्याधि में या किसी रुग्ण में, तो जरूरी है कि उनको सभी भावों का पूर्णतः सकल या संपूर्ण विचार करना जरूरी है कि दुष्यम देशम बलम कालम प्रकृतिम वयः, इन सभी भावों का विचार करना कि जो विमान स्थान के पहले अध्याय में बताए हैं, उसी के साथ साथ फिर से बस्ती प्रणिधान के पहले या कोई भी पंचकर्म या कोई भी शमन चिकित्सा देने से पहले भी जरूरी है कि पेशेंट एग्जामिनेशन जो है वैद्य के द्वारा सभी प्रकार से की जानी जरूरी है इन द्वादश भावों के आधार पर। और उसके पश्चात ही संतर्कम विनियुज्य, आफ्टर द प्रॉपर ऊह्य एंड तर्क, प्रॉपर लॉजिकल रीजनिंग ओनली, द physician or the vaidya should administer the basti or any type of treatment protocol in any patient. That has been again highlighted in this basti siddhi adhyay. Then next one is the phalamatra siddhi adhyay. Here again it is the important or the silent feature of the Charaka Samhita that certain tadvid sambhashas we found or we came across the complete Samhita, and one of that tadvid sambhasha we found in the Siddhisthana, that is in the at the beginning or at the outset of the Phalamatra Siddhi, that which fruit is important or which medicinal fruits are used for the Panchakarmas, and amongst those different fruits, mainly the Upyuktanga of Aushadhas, which fruit is said to be the best medicine or the best fruit for which is useful for all kinds of Panchakarmas, not only in the Vaman or not only in the Virechan, along with that in the Basti also, which fruit is the best one, that Tadvid Sambhasha has Tadvid Sambhasha, the symposium that occurred during between the all the Ayurvedic seers, very expert Ayurvedic seers, they put their opinions regarding the utility of the Madan Phal, their qualities, then Krutavedan, Kutaj, Dhamarga, Katutimbi, and also the Jimutak. And at the end of the chapter or at the end of the Tadvid Sambhasha, Punarvasu Atreya, as a concluding remark, they have given the Nishchayatmak or Nirvachanatmak, that Madan Phal is the Shrestha Aushadhi for all the Panchakarmas and mainly the Basti. And the reason has been given as the Madanam Sarva Gada Virodhitu. That means in almost all kinds of diseases, Madan Phal can be administered by utilizing its 133 kalpas, which have been already depicted in the Madan Kalpadhyaya, the very first chapter of the Kalpasthan. And also in this particular chapter, one important in this particular chapter, again, we get the leads about the Pashu Ayurveda, that is the Bastis or the Basti Yogas, which can be administered in the different diseases of the elephants, that is Ashwa, then Gau and Hasti. They have been also narrated in this particular chapter by the Acharya. That means it is the indication that not only Ayurveda talks about only the human health or only the physical, the psychological health of the only human beings. Rather, the Ayurveda for one health, what the WHO is talking nowadays, that the globalization of Ayurveda or the Ayurveda for the global health, and not only for the human health, but Ayurveda for one earth, that
the aim can be achieved by properly knowing or properly learning and studying the Siddhisthana, and the same has been depicted in the Phalamatra Siddhi, that Pashu Ayurveda, and that it is the indication that Pashu Ayurveda was also at the peak period, or it was also very well developed, and branch or the expertise of the Ayurveda, and the indications we find in this particular chapter. Next, the most important concept we found is the Sadatur Purush, that the organizers had said while communicating the topic of the today's presentation. Sir has told me that madam tried to cover most of the important concepts from the exam point of view also, that for mainly our audience will be the UG and PG scholars, so at least they should have a gist about this Charaka Samhita Siddhisthana and what is its clinical importance in today's era. So here Sadatur Purush is again the most important concept what has been narrated in this chapter of Phalamatra Siddhi, that is the Kshotriya, Rajasevak, Vaishya and Panyajivi. These are the four types of the patients, they are, or the four kinds of the persons, they have been said by acharyas, they are always ill. Sadatur, Sada is the Nitya, they will always ill, and they will be always suffering from this or that kind of some disease or sign and symptom, and the reasons for their behind their illness, they have been described, that they are always busy in their particular karmas or their particular lifestyle, and the reason is that mainly they are suppressing the non-suppressible urges, that is sadaivate hi agata vega nigraham samacharante nacha kala bhojan. The two major reasons for occurrence or for the manifestation of the diseases is that suppression of the non-suppressible urges. जो 13 अधारणीय वेग बताए हैं, उन 13 अधारणीय वेगों का धारण हमेशा जिन व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है, उसमें केवल क्षत्रिय, राजसेवक, वैश्य और पण्यजीवी नहीं, बल्कि जो भी सभी व्यक्ति अपने उदीरित वेगों का निग्रह करते हैं और काल भोजन नहीं करते हैं, वो सभी व्यक्ति जो है वो सदातुर हो सकते हैं. मेनली जब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो सदातुर पुरुष ये क्वेश्चन अगर थ्योरी में या फिर वाइवा में भी अगर स्टूडेंट को पूछा जाता है तो जनरली वो बताते हैं कि केवल 4 ही लोग जो है सदातुर है, या 4 ही कैटेगरीज है सदातुर की, क्षत्रिय है या जो द्विज है या वेद पाठी ब्राह्मण है, राजसेवक है, वेश्या है और पन्यजी. किंतु ऐसा नहीं है, ये सिर्फ 4 मेजर कैटेगरी जो है वो आचार्यों ने बताई है. और सबसे इस सूत्र की जो लास्ट लाइन है या जो लास्ट श्लोक है वो इम्पोर्टेंट है कि ये अन्य भी सदातुराश्चिति, जो भी लोग अधारणीय वेगों का धारण करते हैं और काल भोजन नहीं करते हैं, वो सभी जो है वो सदातुर होते हैं या सदातुर हो सकते हैं, वो हमेशा रुग्ण रहेंगे. और आज की डेट में अगर हम देखते हैं तो आज का जो इरा है वो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स का है या नॉन कम्युनिकेबल डिसऑर्डर्स का है, और हम जो भी मैक्सिमम प्रीवैलेंस और मैनिफेस्टेशन जो है लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स का, उनमें जो मुख्य हेतु है वो 2 ही है आज की डेट में भी, कि अधारणीय वेगों का धारण और काल भोजन नहीं करना. बिकॉज आज की डेट में सभी जो है कंपटीशन जो भी बढ़ गई है, जो भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इरा है, और जो भी चेंज्ड लाइफस्टाइल्स है या ब्लाइंड फॉलोइंग ऑफ वेस्टर्न लाइफस्टाइल्स है, उसमें काल भोजन नहीं किया जाता है. जनरली लोग जो है अलग अलग प्रकार के डाइटिंग के मॉड्यूल्स यूज करते हैं, या तो फिर देयर आर सर्टेन फैट्स वी विल सी दैट रिगार्डिंग द डाइट्स, दैट कीटो डाइट एंड vegan diet and that so many types of dietings are there, but they are all breaking the rules of the kal bhojan as for Ayurveda, because in Agra Sangraha Acharya has given the list of agryas, and there they have mentioned as kala bhojanam arogya karanam, that when we are expecting the dirghayu and nirogi ayu, the kal bhojan is one of the important factor or important reason for achieving that dirghayu. So this is again the important. And lastly, the Uttar Basti Siddhi Adhyay. This is not the last and the least, but it is the last and the most important adhyay of
Siddhisthana as well as the Charaka Samhita, because as per the Panchavayu Nyayavakya, after completion of the Pratijna, Hetu, Udharana, and Drishtanta, Upanay, lastly it is the Nigaman, that is the concluding remarks or the conclusion of the complete text or the complete Tantra of Charaka Samhita, as well as the Nigaman of the Siddhisthana. So we can see this Adhyay as the Nigaman or Upasamhar of the particular 8th sthan, that is Siddhisthana, as well as the complete Nigaman of the complete 120 chapters of the Charaka Samhita. And here, in the beginning of this particular chapter, the Shresth Uttar Basti, that means the Shresth Basti or the superior Bastis yogas have been given by the Acharyas, that if we use these Bastis, the Basti yogas mentioned in this particular chapter, no doubt we will get the Siddhi, or we will accomplish our final attainment. Our prayojan of Dhatu Samya can be well achieved by using these Bastis. These are all Shresth Bastis. If we see the Vakyarthasha, Arthavyavashaha, the Uttar, there are the different shades of the meanings of the Pada Uttar. Uttar means the Paschat, Uttar means the Shrestha, Uttar means the Pradhan. So the superior Bastis, the Shrestha Bastis, and there is no doubt or no any Sanshay that after using these Basti yogas, we will get the Nissanshay Siddhi, and that's why the name as Uttar Basti Siddhi Adhyay has been given. And in this Adhyay, again, Rasa Samsarjan Kram and Vyatyas Chikitsa has been narrated by the Acharyas. That in the first chapter, that is in Kalpana Siddhi Adhyay, Ahar Samsarjan Kram has been given. And in the last chapter, the Rasa Samsarjan Kram has been given. That after completion of the all Panchakarma protocol, how the physician should administer the rasas, shadrasas, the sequence of the shadrasas used for the Agni Sandukshana or stimulation of the Jatragni, which has been diminished due to the Panchakarmas or due to the as a effect of the Vyadhi or as a effect of the Shodhan Chikitsa, that has been given here, that Krama. And that Krama is again important one. That is first and foremost Snigdha, then Amla and Swadu. These rasas should be administered, and after that again Amla and Lavan ras. Next is Swadu Tikta, and lastly the Kashai Katuka. These rasas should be administered in the sequence, as well as the one important reference of the Vyatyas Chikitsa. There are very few places throughout the Charaka Samhita where we get the concept of Vyatyas Chikitsa, and one of that reference comes in the Siddhisthana 12th chapter, that is while Prakriti Gaman, that after completion of the all complete Panchakarma protocol, while re-establishing the Prakriti or the normalcy of the Dhatus, or the while recreating the Dhatu Samya, here Snigdha and Ruksha Rasa should be used alternatively for the proper re-establishment of the Prakriti. Again, Yapana Basti. This is one specific type of bastis, which are very precise bastis, and those can be administered in very wide varieties of the diseases. There have been, the yogas have been given, that is the Mustadyapan Basti, Erandamuladayapan Basti, Sahcharadyapan Basti, Bruhatyadyapan Basti, Baladyapan Basti, Hapushadyapan Basti. You can get all the details in the Siddhisthana 12th chapter itself. And mainly, what is the importance or the relevance of Yapan Bastis in today's year? There are certain limitations of the modern medicine, that modern neurology having certain limitations. Even they are saying previously that the neurons can't be regenerated and all those regarding the nervous system concepts. But if Ayurveda physician wants if he wishes or he wants to successfully treat all the neurological disorders as
all the neurological disorders, then they should use the Yapan Basti widely, because mainly these Yapan Bastis, they are working on the Vata doshas and all the nervous system disorders. It could be the central nervous system disorder, parasympathetic, sympathetic nervous system disorder, or what we can see, the lower motor neuron disease or the upper motor neuron disease. In all kinds of these neurological disorders, we can use successfully the Yapan Bastis. And even at our hospital, in our department, when we have seen the results of these Yapan Bastis in certain kind of neurological disorder. Just for example, I would like to give an example that we were having one chorea patient. If you see, the chorea is the diagnosis Huntington's chorea or dancing chorea, that the patient is not able to control his limb movements. There are the involuntary limb movements, and in that chorea patient, we used the Yapan Basti and we got very successful results. And what it is actually a autoimmune disorder where the ANA antibodies are formed in the human body, and due to that ANA antibodies, this nervous disorder is seen, and the involuntary movements are seen. And even the modern neurologist, they appreciated the results, and even the patient and the patient's relatives appreciated the results of the Yapan Basti. And we are having that appreciation letter with us also at Jamnagar, particularly our department, because we are having the IPD and OPD also here in our ITRA hospital. So I would like to say that if a Ayurvedic scholar wants to become a successful practitioner, they should use Yapan Basti in their regular practice. They should develop their own expertise while using this. Then the Varja Karma, that is the Ashtamahadoshkar Bhavas, that is Uchcher, Bhashyam, Rathak, Shobha, Chankramana, Asana, Ajirna Bhojan, Ahita Bhojan, Diva, Swapna, Maithuna. These 8 factors which should be avoided during the Panchakarma treatment protocol and also in the Parihar Kal, that have been described in this 12th chapter, because for success we should also know what should be avoided, and these 8 factors should be avoided by that particular person or the patient who is undergoing the Panchakarma treatment. Also, not only Panchakarma treatment, but if we are undergoing any Shaman Chikitsa or any type of Ayurvedic Chikitsa, we should train or we should treat our patient. That is the responsibility of that Ayurvedic physician only, that Ati Bhashya, Rathak Shobha, Chankraman, Ajirna Bhojan, Ahita Bhojan, that should be avoided by that patient. Because if even after the physician is expert, he is giving the good medicine, quality medicines, even the paricharak or the supporting staff is also well trained and qualified, but if the patient is not following the pathya properly, there are the chances of occurrence of the untoward effects or the complications. And to avoid those complications arising due to the from the patient's point of view, we should teach our patient the proper things or the proper pathya. Rather, in written format, we provide all the pathya, and it includes these 8 factors. If the patient is not following these 8 factors, or he is not avoiding, there are the chances the complications will arise, and again we will not get the success. And here the physician is not at fault, but the physician may get the backlash or the bad popularity due to the as the patient is not following the pathya. And to avoid it, it is necessary that we should train our patient properly, and we should teach them all these things. Lastly, the Tantra Nigaman has been given at the end of the chapter, that is Dirghamayu Yashaswasthyam Trivargam Chapi Pushkalam Siddhim Chanuttamam Loke Prapnoti Vidhita Patan. That what you will get, because every time when we are learning any new text or any new tantra, the most important thing is that what will be what we gain or what we will achieve after learning this. That Tantra Nigaman or Yasha, Tantra Siddhi has been given at the end of this 12th chapter.
And lastly, the Pratisamskarta Karma, that we all are well aware that the Siddhisthana has been it is a Pratisamskarta Sthan, and Acharya Drudhabal, that is the Pratisamskarta of the Charaka Samhita, the credit goes to Acharya Drudhabal, that he has worked very hard after going through all the texts which were available at his time during the 4th century AD, as the 1/3 of the Charaka Samhita was unavailable at that time. So the 17 chapters of the Chikitsasthan and the 12 chapters of Kalpasthan and the 12 chapters of Siddhisthana, that is total 41 chapters, were Pratisamskrit by the Acharya Drudhabal. And for this Pratisamskaran, he used the Shiloncha Nyaya. That Nyaya has been again described in this by Acharya Chakrapani in his commentary. And the most important is that just in the presidential speech or the keynote address, our director of Ayush, respected Raman Ghungrale sir, talked about that we should rewrite, or we should reform the Samhita or the Charaka Samhita as per the need of today's contemporary era. So I would like to say that already the Navikaran, or already the redaction of the Charaka Samhita has been repeatedly done by our Acharyas, and the methodology what they used, that is the Vistareti Leshoktam and Sanshipati Ati Vistaram, Sanskarta Kurunate Tantram Puranam Chapunarnavan, that methodology has been also well described by our Acharyas. And rather rewriting or reforming the Samhita, if we make such efforts, that we should understand the sutras written in the Charaka Samhita properly by using the tantrayuktis given by the Acharyas only, then it will be more beneficial for all the Ayurveda stakeholders, for Ayurveda scholar, for Ayurveda teacher, as well as the Ayurveda practitioner. And then only we can achieve our final outcome, that we will be able to globalize the Ayurveda, and we will be able to give the solution of each and every disease which is present, or which is manifested in today, or in near future, or in near offshore. If we come across in any new pandemic or epidemic, on the basis of the fundamental principles depicted in Charaka Samhita, we will be well trained, and we will be well expertised to treat all the diseases. So at the end of the Samhita, importance of the tantrayuktis have been also given by the Acharyas, that how they are useful. And here only the Nama Sankirtan of the 36 tantrayuktis, that their description we don't get in the 12th chapter. Only the names of the 36 tantrayuktis have been given by the Acharya in the last chapter, and as the very last topic of the Samhita. But their description has been given by the very first commentator, that is Bhattar Harishchandra, in the 6th century AD. And at the beginning of his commentary, he has given a particular chapter, that is the Tantrayukti Adhyay he has given. And in that, Acharya Bhattar Harishchandra has again added more 4 tantrayuktis, and the number of tantrayuktis becomes 40 tantrayuktis as depicted by the Bhattar Harishchandra. But so many Ayurveda scholars or teacher, they don't use the Bhattar Harishchandra commentary for learning the 36 tantrayuktis. Actually, I want to say that Bhattar Harishchandra was the first person to talk in detail more about the 36 tantrayuktis, along with the 4 new more tantrayuktis what he proposed. And the same descriptions have been followed by Acharya Chakrapani in the 11th century AD. Chakrapani had just copied, or they have been the major descriptions of the 36 tantrayuktis given by the Acharya Chakrapani in Chakrapani commentary are based on the Bhattar Harishchandra's description only. And the same is true with the Arundatta, that Arundatta has also followed, that is the most famous commentator of Ashtanga Hridaya. He has also followed the Bhattar Harishchandra while narrating the tantrayuktis. So
without going in depth in the 36 Tantra Yuktis, I would like to say that at the end of the Samhita, Acharya has given the Tantric Yuktis have been placed at the end of the complete Samhita, and the reason is that because after the part there is the methodology of the avabodh, and then the anushthan will be there. That is, after learning the Samhita, there will be the deep understanding of the Samhita, and for that deep understanding of the Samhita or reading in between the lines, or for the complete description and narration of the Alpakshari Sutras, to get the maximum knowledge from those sutras, Tantriktis are important. The knowledge of Tantriktis is important, and that's why the Acharyas have placed the Tantriktis at the last of the Tantra, that after for reading, for repeated reading, and for gaining the expertise and for complete knowledge, we should repeatedly use the Tantriktis. Then only we will be able to understand the Samhitas properly. Lastly, coming to the conclusion, that knowledge of the Charaka Samhita Siddhisthana is must and most essential for an Ayurveda practitioner to become a Siddha Vaidya. That means to get the complete mastery or to become a successful Ayurveda physician or pure Ayurveda physician. What we say that Shuddha Ayurvedic Chikitsak in today's era. Lastly, in the words of the Acharya Charak only, I would like to conclude the session that Yadi hasti tadanyatra yanne hasti na tatvachit agnivesha krute tantre charaka prati samskrute. So whatever the descriptions of the Ayurveda fundamental principles or Ayurveda clinical practice you get in the Charaka Samhita, you will that is the same what you will find in the other text or other Samhitas. What has been not told here, not described here, that you will not get in any other Samhita. And that's the most important asset we have today with us, that is the Charaka Samhita. Thank you. Thank you all. I am thankful to all the organizing team for their successful teamwork, that in very short span of time, they have very well organized this webinar. And there are more than 10,000 registrations. I think this is the record break registrations for the any national webinar in India. So I would like to end here. Thank you. Thank you all. Over to you, Ganga Sagre madam. थैंक यू मैडम। पंचकर्म आयुर्वेद शास्त्र का एक प्रमुख चिकित्सा उपक्रम है। औषधि निर्माण विधि, पंचकर्म विधि, इनका सम्यक प्रयोग करना चाहिए। इनके असम्यक प्रयोग से कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं। पित्त का अधिक मैम इट्स नॉट ऑडिबल। गंगा सागरे मैम। हो एक मिनट। Ma'am, your mic is on, I am audible? but voice is अभी not आवाज आ रही है? audible. I am audible now? यस मैम, यस मैम। मैडम बोला बोला। धन्यवाद मैडम। पंचकर्म आयुर्वेद शास्त्र का एक प्रमुख चिकित्सा उपक्रम है। औषधि निर्माण विधि तथा पंचकर्म विधि, उनका सम्यक प्रयोग करना चाहिए। आवाज येत नाही। अगेन माइक चालू आहे पण आवाज येत नाही मॅडम। एक मिनिट, मैं देखती हूँ क्या हो रहा है। आवाज येतोय मॅडम, बोला। येतोय। हाँ, ओके ओके। पित्त का अधिक उत्प्लेश होता है। अगर वमन दिया जाता है तब विरेचन होता है। अगर कफाधिक्य में विरेचन दिया जाता है तो वहां पे वमन होता है। अतः मैडम जैसे अभी लेक्चर दिया, उसी तरह से सिद्धि स्थान का अच्छे तरह से डिकोडिंग करके समझना और अध्ययन करना जरूरी है। मैडम जी ने सिद्धि स्थान पर बहुत अच्छी तरह से प्रकाश डाला है। धन्यवाद डॉक्टर शुभंगी कामले मैडम जी। मैं को चेयरमैन माननीय डॉक्टर जया जाने मैडम जी को सेशन कंक्लूडिंग के लिए आमंत्रित करती हूँ।
जाने मॅडम. अनम्यूट करा मॅडम, अनम्यूट करा, म्यूट आहे तुमचा माईक. Ma'am, is there any question answer session? Ganga Sagre ma'am. Yes. Yes, yes. Hello. किसी को कोई क्वेश्चन है इसमें तो पूछ सकते Yeah. हैं. Yeah. I would like to request Shubhangi ma'am to share her experiences regarding the clinical studies carried out related to Siddhisthana in Jamnagar. I know she has prepared this presentation within a short time, but if she can explain or she can share the experiences or the studies, outcome of the studies. Shubhangi ma'am. Yes, sure, madam. Thank Yeah, you thank for you. the question. Actually, in Jamnagar, not only in the Samhita department, but in Panchakarma department, in Kaya Chikitsa department also, there are so many works have been carried out in particularly in the lifestyle disorders, that is diabetic neuropathy, as well as again the Amvat, rheumatoid arthritis, then again as a supporting treatment or the add-on therapy to the cancer patients. Some sorry, the works have been carried out, but I thought that organizer has told me that mainly that you should focus on the theoretical as well as the clinical importance. If I could have been more time, I tried my level best to decode that 12 chapters of the Siddhisthana, mainly the Mustadi Yapan Basti that has been worked out by the scholars of the Panchakarma department. Right now, I am not having the data because I would like to say that currently I am not in Jamnagar. I am in Maharashtra only due to some untoward sad reasons. I am here in my in-laws town here only in Maharashtra. So the exact data what you want, that is presently not with me because I had prepared the PPT only yesterday night. That's why I could not share it with the chairman Professor Jayajana madam and also the Datta Patil sir. But if you need the exact data while returning to Jamnagar, I will give all the data what you need. But I could say that so many research works have been carried out, mainly the efficacy of the woman, different kinds of woman yogas, different kinds of Virechan yogas, and they have been taken from the Charaka Samhita Siddhisthana only. And already they are available with the ARD because so many people they will be must be knowing about the Ayurvedic research database where sorry, where the all the PG thesis right from the 2001 to 2008 from all the departments of the erstwhile IPGT and RA, they have been published online free of cost, and anyone can refer to those if they are interested more in particular any disease or in a particular yoga. Okay, thank you, madam. Yeah, thank you, ma'am. Sorry. थैंक यू मैडम. इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं. मैं को चेयरमैन माननीय डॉक्टर जया मैडम जी को इस सेशन का कंक्लूडिंग के लिए आमंत्रित करती हूँ. जाने मैडम. Hello. कंक्लूडिंग करना है मैडम. Ma'am, you are audible. मैडम आपको कंक्लूड करना है. जाने मैडम. जाने मैडम. आवाज आ रही है मेरी? स्टार्ट करा जाने मैडम.
हेलो जाने मैडम मॅडम आवाज येतोय का? हो येतोय, माझा येतोय. हा हो तुमचा येतोय मॅम. She explains very well. Her lecture was very useful for UG, PG students and teachers too. I must say that her lecture was very informative. Once again, thanks to all and Dr. Datta Patil sir. Such a nice initiative and webinar conducted by Department of Samhita Siddhant and all colleges from Maharashtra. Thanks to organizing committee. This webinar proves that hard-working teachers are base of institutions. अभी समय में हम लोग थोड़ा लेट चल रहे हैं, इसलिए मैंने थोड़ा जल्दी में कंक्लूड किया है. ऑलरेडी वी आर लेट, अबाउट 1 hour लेट. ओके, दिस इज अ लंच ब्रेक. थैंक्स कांबळे मैडम सो मच. ओके, थैंक यू ज्योत्सना मैडम. मैडम थैंक यू. यू आर कंक्लूडेड वेरी वेल. न अर्थार्थम न पि कामार्थम अतभूतदयां प्रति वर्तते चिकित्सायां स सर्वम् अतिवर्तते. चरकाचार्य के अनुसार जो वैद्य अर्थ प्राप्ति या किसी कामना को ध्यान में रखते हुए केवल प्राणियों के दुख या रोग निवारण के लिए चिकित्सा करता है, वह श्रेष्ठ चिकित्सक है. मुझे कोऑर्डिनेटर का अवसर देने के लिए नेशनल वेबिनार चरकस चिकित्सक के आयोजकों की मैं आभारी हूँ. इस सत्र का अंतिम भाग आभार व्यक्त करने के लिए मैं डॉक्टर मधुमती नावकर मैडम जी को अनुरोध करती हूँ. A wonderful afternoon to all the dignitaries and the friends on this virtual platform. Nearing the end of this excellent scientific session, I am here to propose vote of thanks. It gives me immense pleasure to show the gratitude to our honorable guest speaker, Dr. Shubhangi Kamble ma'am, for her speech, which is full of knowledge and experience. I really like the idea that you have correlated Siddhisthana with NABH accreditation, and also you have given the clinical example of Korea. That was really excellent, ma'am. And it was indeed helpful for all of us. I am thankful to the chairperson of this session, Dr. Jaya Jani ma'am, for her visionary concluding remarks. I am grateful to the co-chairperson, Dr. Smita Durde ma'am, for wonderful introduction of the guest and her cooperation. Thank you, Ganga Sagre ma'am, for the anchoring. Thank you, all the wonderful audience for the program. Last but not the least, I would like to grab the opportunity to thank the organizers of all the associations behind this program. A special thanks to our patrons, Dr. Khati sir, Dr. Deshmukh sir, Dr. Avare sir, Dr. Gungrale sir, Dr. Datta Patil sir. And with this remarks, I would like, with the permission of the organizing committee, I would like to end this scientific session. Thank you all. Thank you all. थैंक यू. सभी मेरे शिक्षक ही है, सभी मेरे गुरुजन हैं, सभी अध्यापकों को मेरा सादर प्रणाम आज इस चरक जयंती के अवसर पर. और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आज मुझे इस उचित समझा और ये अपॉर्चुनिटी आज मुझे दी. थैंक यू. थैंक्स मैडम. थैंक्स मैडम. थैंक यू मैडम. प्रथम सत्र की समाप्त हुआ यह मैं घोषित करती हूँ. थैंक यू एंड ऑल. Ma'am, message from Dr.
Patil sir, that we will have 15 minutes break before moving towards the next scientific session. Okay, sir. Okay, thank you. Access to all the participant delegates that there will be lunch break of short span of 15 minutes before moving towards the next scientific session. Second scientific session will begin at 2:15 p.m.
Dr. Kamlesh, sir. You can start. Am I audible? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? Ma'am. हेलो. Yes, ma'am. You are audible. Okay, thank you so much. नमस्कार. नमस्कार. सर्वप्रथम चरक जयंती के उपलक्ष्य में इस वर्चुअल मंच से जुड़ने वाले समस्त जनों का मैं हृदय से स्वागत, अभिवादन और अभिनंदन करती हूं। इस चरक जयंती की संकल्प के लिए संकल्पक, संयोजक एवं समन्वयक समस्त जनों का मैं हृदय से आभार मानती हूं और इस द्वितीय सत्र के संचालन के लिए मुझे जो उत्तरदायित्व दिया है उसके लिए मैं जया जाने मैडम को आभार व्यक्त करती हूं। साथ ही पुनश्च एक बार श्रीमान खटी सर, निकुम सर, श्रीकांत देशमुख सर, श्री आवारे सर, श्री दत्ता पाटिल सर, डॉक्टर घुंगराड़े सर, इन सबका मैं पुनः एक बार मनःपूर्वक अभिवादन, अभिनंदन करती हूं तथा हमारे द्वितीय सत्र की शुरुआत करते हैं। इस द्वितीय सत्र के साइंटिफिक सेशन में आज हमारे साथ जो व्याख्याता के रूप में हमारे साथ देने वाली हैं वो हैं डॉक्टर वैशाली माली और हमारे साथ में हमारी चेयरपर्सन डॉक्टर योगिता जमदाड़े मैडम। को चेयरपर्सन के रूप में हमारे साथ हैं डॉक्टर माधुरी पाचघरे मैडम और स्वयं मैं डॉक्टर सतीजा आयुर्वेद महाविद्यालय पुसद सूत्र संचालक के रूप में उपस्थित हूं और मेरे साथ मेरी साथी डॉक्टर चारुता पारेलेवार। इन पांचों ही हम सब सदस्यों को मैं इस मंच से जुड़ने का औपचारिक निमंत्रण देती हूं और पुनः उन सभी का अभिवादन करती हूं। और इसके बाद मैं हमारी माधुरी पाचघरे मैडम को इस बात के लिए आमंत्रित करूंगी कि वो वैशाली माली मैडम के विषय व्याख्यान के विषय चरकोक्त आहार प्रिंसिपल्स एवं प्रैक्टिस इसका प्रास्ताविक दें। लेकिन उससे पहले मैं माधुरी मैडम का एक परिचय देना चाहूंगी। डॉक्टर माधुरी पाचघरे मैडम पोद्दार शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं और प्राध्यापक के रूप में 30 वर्ष का प्रदीर्घ अध्यापन अनुभव उनके साथ जुड़ा हुआ है और प्रगाढ़ अभ्यासक वो आयुर्वेद की रही हैं। पीएचडी फैकल्टी वो हैं MUHS और तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ की और पदव्युत्तर अभ्यासक्रम में भी वह गाइड के रूप में भी कार्यरत हैं। विद्यार्थी मार्गदर्शन में है उनके तथा पदव्युत्तर MD अभ्यासक्रम की भी वो सक्षम गाइड रही हैं और हैं और इतना उपलब्ध उनकी उपलब्धियां मुझे पता है वे उससे भी कहीं ज्यादा उपलब्धियों की मालकिन है। और अब मैं पूरी विनम्रता के साथ हमारी माधुरी पाचघरे मैडम से आग्रह करूंगी कि वह वैशाली माली के व्याख्यान के लिए एक प्रस्तावना प्रस्तुत करें। धन्यवाद। माधुरी। Hello. Audible? I am audible? Yes, madam. Thank you. Welcome to all and thanks Satesha madam for the brief introduction
respected dais, all the dignitaries, and all the participants. Once again, welcome to all for this session. First of all, I am thankful to organizer as they are giving me the opportunity as a co-chairperson for this session. Today's topic of this scientific session is Ahar Kalpana, Ahar and principles of Ahar and practices. Everybody knows that modern science explains the balanced diet very well and in brief, but they are not explaining how to consume that balanced diet. But it is explained by only Ayurveda. That is, Ayurveda explains Ushnam Ashniya, Dhirnam Ashniya, which are very, very important because diet is nourishing us, but maybe if unwholesome diet or if not the wholesome diet and we are not consuming in the proper way, it may be the positive factor. That's why we are saying that the Ahar is Upastambha. Ahar is Upastambha and it support for our stambha, that is Vatadi dosh. But we all knows that Rogaha Sarve Api Bandhavanau. And that digestive fire is only depend on the how we can eat, how we consume the diet, how we are follow the Ashtavid Ahar Visheshatayani and Ahar Vidhi Vidhan. And that's why I am grateful to organizer that they are choosing the very important topic here, that is Ahar principle and practice. Definitely, Dr. Vaishali Madam give the very weightage to that topic, and she enlightens the more briefly this topic. May I request to Satecha Madam, please give the introduction, brief introduction of Vaishali Madam. Please, Satecha Madam. Okay, thank you, Madam. आज की हमारी जो व्याख्याता हैं डॉक्टर वैशाली माली मैडम, इनका मैं परिचय देना चाहूंगी। इन्होंने पुणे यूनिवर्सिटी से सन 2000 में बीएमएस किया। उसके बाद पदव्युत्तर एमडी कोर्स इन्होंने गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी जामनगर से किया। उसके बाद 2004 में इन्होंने पीएचडी किया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद जयपुर। इस वक्त ये चौधरी ब्रह्म प्रकाश आयुर्वेद चरक संस्थान न्यू दिल्ली में प्राध्यापक के रूप में कार्यरत हैं। इनका अध्यापन का अनुभव 18 साल के लगभग है और यह सीसीआईएम संस्थान से भी एक समय संलग्न रह चुकी हैं और शी इज द रेसिपिएंट ऑफ डीएचआर फेलोशिप ऑल्सो। इतना उपलब्ध परिचय मेरे पास है उनका और अब मैं उनसे सविनय रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अपने विषय की शुरुआत हमारे सामने प्रस्तुत करें। मैं वैशाली माली मैडम को आमंत्रण दे रही हूं कि वो अपना शुरुआत करें। Thank you very much, ma'am. Am I audible? Yes, you are audible, madam. Yeah. Let me share my screen. Is my screen visible, ma'am? Yes. And are my slides moving? मैम स्लाइड्स मूव कर रहे हैं क्या? मैं जस्ट ट्रायल ले रही हूँ ताकि Yes, ma'am. Yes.
They are moving. Very much. Very good afternoon to all of you. Respected all the faculty members, Siddhanta, our chairperson, co-chairperson, my colleagues and friends and dear students. On the occasion of this very auspicious occasion for the Ayurveda people, that is Charaka Jayanti, and I firstly thankful to the organizers for giving me this platform to share my views. So we will start with offering prayers to Lord Dhanvantari. Just a request to ma'am that if in between there will be any problem in my audio or video, please interrupt me and let me know. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwaraha, Guru Sakshat Parabrahma, Tasmai Sri Gurave Namaha. The topic of my today's discussion is Charakokta Ahara Sankalpana, Principles and Practices. The objective of the session are, at the end of the session, the student will be able to recognize the importance and role of Ahara in maintenance of health, differentiate the various classes of dravyas, decode the various principles of Ahara, recognize the role of Prakriti in selection of Ahara, and appraise the importance of dietary guidelines, and explain the impact of environmental factors in selection of Ahara. Dosha dhatu malamulam hi shariram. In human physiology, as per the Ayurveda principles, dosha dhatu and mala, they are considered as the fundamental units which governs the physiology. And all these three units, they're told the three supportive units, that are Ahara, Nidra and Brahmacharya. Though doshas termed as Sthuna, Tristhuna in references, but I think all these three units, they are the fundamental units and they should be considered as the principal pillars, and Ahara, Nidra and Brahmacharya should be considered as the supportive pillars. Among these three supportive pillars, Ahara works very differently as compared to the Nidra and Brahmacharya. It actually plays and involves in maintenance of these three units. So today we will discuss how Ahara principle has been taken up by the Acharya Atreya in Charaka Samhita. So if you will see the composition of Charaka Samhita, the Sutrasthana, they have adopted the Chatushka Shaili. So in the Chatushka Shaili, the health tetrad, that is the Swastha Chatushka and Annapana Chatushka, they are exclusively elaborating the concept of Ahara, and along with the Chatushkas, in Vimanasthana, the Rasavimana Adhyaya and the Triveda Kukshiya Adhyaya, these two chapters, they are had shed a light on the concept of the Ahara. So in my further deliberation, I have highlighted the concepts from this chapter along with the other supportive chapters. So all we are aware of the importance of Ahara, but it is essential to know what the perception of the ancient acharyas about this. So it said that the praninam aharat eva utpatti sthiti nirdesheta. So Ahara is essential for utpatti as well as the sthiti. So quality formation of Shukra and Shonita is subjected to Ahara, and along with that the continuation of healthy life is also subjected to Ahara. So the Ahara is essential for it forms the basis for continuation of the health as well as the creation of the new progeny. All we are aware that Shukra Shonita, which are essential for the new progeny, they themselves
are formed by the ahara. In Charak Sutrasthan 25th chapter, 27th chapter, at the end, the Charaka explains that kimartam annapana vidhavetat ahara dravyam parikshet. Okay, so to answer this question, he has stated the sutra that annam pranaha pranabhutam annam लोके अभिधावति वर्ण प्रसाद सौस्वर्यम जीवितम प्रतिपासुकम तुष्टि पुष्टि बलम मेधा सर्वमन्य प्रतिष्ठितम. Okay, so in this shloka, as we could see here, that all the physical entities, they are highly depend on ahara, but along with that, the pratibha, that is prajna, that is intellect or wisdom, and the medha, that is the retention power, is also depend on the quality intake of ahara. And in the same sutra, the Charaka has said that there are three karmas which has been described. That is the worldly happiness, spiritual, Vedic karma, Laukik karma, Vedic karma, and the hello. Hello. Ma'am, you are audible. Thank you. So if we see these three karmas, that is Laukika karma, Vedika karma, and the karma for the Upavarga, that is for the salvation. For Laukika karma, the ahara is essential, that is okay. But it is said that for Vedika karma and for the Upavarga also, the ahara is essential. So Chakrapani raised the question that how for Vedika karma and for the spiritual salvation also the ahara is essential. Then he has clarified that nirannasya dehasthiti abhavena sarva sambhava abhavat. So if the dehasthiti is depend on the anna, and if in absence of ahara, there will be no existence of the life, and if no existence of the life, then how you can achieve the spiritual salvation and the Vedic sacrifices. So in this way, the ahara is essential for all types of karma. We all know that for the 4 basic pursuits has been prescribed by the Ayurveda, that is dharma, artha, kama, and moksha. For all these, the prerequisite is the good health, and the good health naturally depend upon the ahara. So if in Sutrasthan chapter 1st, the Charaka has comprehensively termed that Tri Sutra Ayurveda, that is Hetu Linga Aushadha Jnanam Swastatura Parayanam. So this Tri Sutra Ayurveda has been transferred from the Pitamaha to the further descent, we all know. So in this Tri Sutra Ayurveda, where we have to put the ahara, so the Chakrapani shed a light on this, that Aushadha Grahanena cha Sarva Pathya Avarodha, means here in Tri Sutra Ayurveda, the ahara is included in the Aushadha itself. Now, further looking into this importance of ahara, now let us explore that how Acharya Atreya has taken up this ahara concept in their discussions. So in the first chapter, after explanation of the rasa principle, Shad rasas are mentioned, and then he states that the empirical classification of the dravyas. So in this empirical classification, that he states that prabhava bhedena dravya bhedamaha. So there are 3 types of dravyas. Now here the dravya term is used for the karya dravyas. I mean, whatever the sarvam dravyam panchabhautikam asminarthe. So in that sense, the dravya term is used, and that dravya is classified into 3 categories: dosha prashamana, dhatu pradushana, and swastha vrittau matam kinchit, yani swastha vritti mata dravyas. And here is the this is the first shloka where they have specifically mentioned that ahara dravya, they are separate classification, they are separately classified, and for those ahara dravyas classification, group of ahara dravyas, they have used the term swastha vritti mata dravya. Now, what is swastha vritti mata dravyas? So the Chakrapani further illustrate the term swastha vritti mata as sushtu avatishtate nirogatvena iti swastaha. Yani nirogatvena avatishtate iti swastaha. And further, what is swastha? Swastha iti nothing but the dhatu samya for him, because dhatu samya kriya chokta tantrasya asya prayojanam. So for this dhatu samya and tasya vritti swastha rupadaya anuvartanam tatra swastha vrittau matam abhimatam pujitam iti yavat. So dhatu samyartha
for dhatu samya, to achieve dhatu samya, they have specifically elaborated this swastha vrittimata gana. And here, what is dhatu samya? That samadhatunam, or what these drugs really do in body physiology. For that he further explains कि स्वस्थ वृत्तिमत द्रव्य क्या करते हैं. तो समधातुनाम अवर्धकत्वेन, यानी अगर धातु साम्यावस्था में है तो वो वर्धन नहीं करेंगे, बिकॉज इफ it will be further increased, then it will be a विसिएशन, वो विकृति हो जाएगी. अक्षयकरत्वेन च, उनका धातु साम्यावस्था में जो धातु है उनका वर्धन भी नहीं करते हैं, क्षपण भी नहीं करते हैं. एंड रसादि स्रोतसाम च अनुगुणत्वेन, और वो रसादि स्रोतसों के अनुगुणत्व है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, एंड these three qualities they do possess in the swastha vrittimata dravya, and so that is why they are responsible for maintenance of dhatu samya, and that is why maintenance of swastha also. So here I have explained this samadhatunam avardhakatvena akshayakaratvena cha. This is first function which is attributed by the swastha vrittimata dravya. Then rasadi srotasam anugunatva and धातु साम्य अनुवृत्तिकरम. सो इसीलिए धातु साम्य की अनुवृत्ति करता है, रिस्पॉन्सिबल कंटिन्यूएशन ऑफ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ धातुस. सो दैट्स व्हाई दे आर टर्म्ड एज द स्वस्थ वृत्तिकर द्रव्य. Though here we are exclusively considering and talking about Charaka Samhita, but it is highly pertinent to say that Acharya Shushruta in Shushrut Sutrasthan 20th chapter, he has, that is Hita Hitani Adhyaya. So in that Hita Hitani Adhyaya, he has classified all the dravyas in three categories, that is Ekanta Hitani, Ekanta Ahitani and Hita Ahitani. So Ekanta Hitani dravyas are responsible for maintenance, are responsible to maintain the state of health. So Ekanta Hitakara dravyas are nothing but the Swastha Vrittimata dravyas, which are explained by Acharya Charaka. And here they state that how it is possible that it will be Ekanta Hitakara, hai na? Then the Dalana says that Ekanta Hitani Jati Satmyat. Jati Satmyat इति मनुष्य जाति सत्म्यत. मनुष्य जाति के लिए ये एकांततः हितकर है, इसीलिए हमने इन द्रव्यों को अलग से क्लासिफाई किया गया है. So thus the above reference further clarifies that the dravyas which falls under the group of swastha vrittimata or ekanta hitakara dravyas are always best suited to all human beings. Now, okay, we have come to know the term, coined the term ekanta hitakara dravya or swastha vrittimata dravya. Further, in the 25th chapter, where the Annapana Chatushka has started, so in the first यज्ञ पुरुष है, यानी पुरुष और विकार की उत्पत्ति कैसे होती है, उससे उस अध्याय का नाम पड़ा यज्ञ पुरुष है. So in that chapter, first उत्पत्ति, पुरुष और विकार की उत्पत्ति कैसे होती है, ये संभाषा परिषद होने के बाद, then the Agnivesha raised the question कि what are the reason for वृद्धि. ओके, उत्पत्ति तो हो गई, अभी पुरुष की वृद्धि का क्या कारण है. तो उस संदर्भ में आचार्य आत्रेय कहते हैं कि हित आहार उपयोग एक एव पुरुष वृद्धि करो भवति, है ना. द प्रिंसिपल फैक्टर बिहाइंड द ग्रोथ ऑफ लिविंग बीइंग इज हित आहार. ओके, सो हियर दे हैव कॉइन्ड द टर्म हित आहार. नाउ हित एक एव, स्टूडेंट्स इफ दे आर हियर, तो चरक पढ़ते हुए एक बात ये जरूर याद रखना कि जब एव टर्म आती है ना, तो थोड़ा सा कान जो है वो ओपन करने हैं, क्योंकि दे आर emphasizing the importance of that concept in that sutra. तो हित आहार का इंपॉर्टेंस इतना है कि वो ही सबसे सर्वोपरि है. इट इज द प्राइम फैक्टर फॉर द पुरुष वृद्धि. तो इसीलिए उन्होंने टर्म यूज की है एक एव, है ना. लेकिन चक्रपाणी वहां पे कमेंट्री करता है कि एक एव यानी यही एक फैक्टर जो है वृद्धि के लिए कारण नहीं है. देयर आर अदर फैक्टर्स ऑल्सो, बट द प्रिंसिपल फैक्टर इज हित आहार. और वो फिर आगे कहता है कि हित आहार यानी क्या है. तो चरक जो है वो उसको डिफाइन करता है कि समांश एव शरीर धातुन प्रकृतौ स्थापयति विषमांश समीकरोति इति एतत् हितम तदहि विपरीतम तु अहितम इति हित अहित लक्षणम अनपवादम. इसका मतलब ये है कि जो आहार समांश एव शरीर धातुन प्रकृतौ स्थापयति,
the ahar which maintain the state of equilibrium of the dhatus. Then again it simulated with the concept of the swastha vrittimata dravyas. Then vishamanshcha samikaroti, and also it is not just maintain the state of equilibrium of dhatus, but if the dhatus are in the vishama avastha, either they are increased or they are decreased, then that vishama state will also be resumed by the continuous intake of the hita ahara. So vishamanshcha samikaroti, that is, it resume the equilibrium of vitiated dhatus by providing that proper nourishment to the dhatus. So ye anapavad, so that means hita ahara will contribute the three ways, that it maintains the state of dhatus, it resumes the equilibrium of vitiated dhatus, and it provides the proper nourishment to the dhatus. Now, so we have come to know that hita ahara is there. Then in 5th chapter, the Charaka has explained the nitya shilaniya dravyas and nitya ashilaniya dravyas. So after that, in 7th chapter, na vega na dharaniya, 7th chapter, after explanation of vyayama, the Charaka says that swastaha cha prakriti bhedena nana prakaraha. Okay, that okay, you have told that these groups are the group of these drugs, these dravyas. They are termed as ahara dravyas, and they are highly essential and highly wholesome for the body physiology. But यहाँ पे तो क्या है, प्रकृति स्वस्थ जो है, the स्वस्थ people on the basis of prakriti, they are of different types. So that is why swasthasya prakriti bhedena nana prakara. So अतः तेषां हितम अपि नाना प्रकारमेव. तो इसीलिए वो अलग अलग प्रकार के लोगों के लिए जो हितकर है वो भी नाना प्रकार का होगा. एंड तेन प्रतिपादनार्थम प्रकृति भेदमाह, और वो बताने के लिए इस संदर्भ में वो जो है वो नाना जो प्रकृति के जो भेद है वो यहाँ पे एक्सप्लेन करता है. तो उस संदर्भ में फिर उन्होंने यहाँ पे सूत्र कहा हुआ है. दिस इज द फर्स्ट sutra in Charaka in 7th chapter, where they have explained the 7 types of prakriti. So it says that samapitta nila kafaha kechit garbhadi bandhava. The few group of people will be they have the equilibrium state of all the doshas. They will be termed as the sama prakriti. But drushante vatalaha kechit pittalaha shlishmalaha tataha. Okay, so लेकिन बाकी के लोग कैसे हैं, केचित वातला, केचित पित्तला, केचित श्लेष्मला. तो this at this point Charaka differentiates from the other acharyas. He never has mentioned vata prakriti, pitta prakriti and kapha prakriti like terms. He has not accepted that vata is a prakriti or pitta is a prakriti. He termed these prakriti people as vatala, pittala and shleshmala. Kyun? Tesham anatura purve vataladya sadaturaha. So he accepts that sama prakriti is the only prakriti which is ideally expected. And वातलाद्य सदातुरः, वो तो सदातुर ही है. फिर दोष अनुशयिता ही येषां देह प्रकृति उच्यते है. एंड वो जो सदातुर व्यक्ति है उनको उन्होंने कहता है, उनके लिए एक टर्म उन्होंने यूज की, दोष अनुशयित. सो व्हाट इज मीन बाय दोष अनुशयित? तो दोष अनुशयित के लिए उन्होंने कहा कि उल्बनवातादि भाविता अव्यभिचारिणी देश स्थिति. अब उल्बनवातादि भाविता यानी the prakrutistha doshas are on higher side in those constitution, but those higher side status of doshas will never change till death. क्योंकि प्रकृति सुश्रुत का जो श्लोक है वो भी वहां पे चक्रपाणी कोट करता है कि प्रकोपो वा अन्यथा भावो क्षयो वा न उपजायते प्रकृतिनाम स्वभावेन जायते तु गतायुषी. इसलिए भले ही वो प्रकृतिस्थ दोष हायर साइड में है लेकिन उसमें वो कोई चेंज नहीं होता. और इसीलिए वातलादीना मुख्यम स्वास्थ्यम नास्ति तर्हि उपचार स्वस्थ, इनके लिए जो कहता है वो उपचार स्वस्थ है. और इसीलिए प्रकृति समान रोगोत्पत्तो न प्रकृति भूतस्य वृद्धि, ये एक अलग कंसेप्ट यहाँ पे दिया गया है. अगर मोस्ट ऑफ द respected members might have aware कि अष्टांग संग्रह में 2 प्रकार के दोष कहे गए हैं. एक तो प्राकृत दोष एंड विकृत दोष.
है ना। तो जो प्राकृत दोष है, इस तरह का दो ग्रुप जो है उन्होंने कहा हुआ है, और वही कंसेप्ट जो है, वही सपोर्टिव जो रेफरेंस है, यहाँ पे हमें पता चलता है कि प्रकृति समान रोगोत्पत्तौ न प्रकृति भूतस्य वृद्धि। अगर प्रकृति समान यानी वात प्रकृति के व्यक्ति को अगर वात जो रोगों से अगर वो पीड़ित होंगे, तो वो जो प्रकृति में जो दोष है उसकी वृद्धि नहीं होती है। किम तर्हि हेत्वंतर जनितस्य वातादेहे तत्र विकारकारितम। लेकिन जो विकृत दोष है, जो एक्चुअली फिजियोलॉजी में पार्टिसिपेट करते हैं, उनकी वृद्धि होके वो विकार उत्पन्न होते हैं। एंड प्रकृतिभूतः तु दोषः तत्र उपदर्शको। यहाँ पे प्रकृतिभूत दोष एक्चुअली विकार में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, तो वो क्या है, प्रकृतिभूतः तु दोषः तत्र उपदर्शको भवति। वहां पे प्रकृतिभूत दोष क्या है, सिर्फ उपदर्शक का काम करते हैं। और इस तरह से ये प्रकृति का कंसेप्ट बताने के बाद जो है आगे इसी कंटिन्यूएशन में अगर आप चरक विमान स्थान 6 अगर देखेंगे, तो वहां पे ये जो 4 प्रकृति के लोग हैं, उनके 4 प्रकार के अग्नि जो है वो विशेषतः स्पेसिफिकली चरक वहां पे कहता है कि एते चतुर्विधानाम भवन्ति अग्नयः चतुर्विधानाम एव पुरुषाणाम। चतुर्विधानाम एव पुरुषाणाम यानी 4 प्रकार के पुरुष है, उनमें 4 प्रकार की अग्नि होती है। लेकिन यहाँ पे एक बात जो है वो ध्यान देने की है कि वातलानाम तु वाताद्भिभूते अग्निधिष्ठाने विषमा भवन्ति अग्नयः। मीन्स if in vatala individual, if the seat of agni will be afflicted by the vata dosha, then and then only in that vata prakriti person the agni will be vishamagni, otherwise not. Okay, so ये बात जो है वो बहुत clearly जो है वहां पे चरक कहता है। Then now we have come to know that for different types of prakriti people, the different the hita ahara will be different. So how to take up this? So basis for selection of ahara dravya according to prakriti. So चरक सूत्र 7 में ये कहा गया है कि विपरीत गुणः तेषां स्वस्थ वृत्तेः अभिहितः समसर्वरसम सात्म्यम समधातोः प्रशस्यते. Means for the individual which are having the predominance of 1 or 2 doshas in their constitution, for them diet and regimen having opposite property to that of constitutional doshas are to be prescribed for maintenance of health. And for samaprakriti individual, the diet having all rasas in proper quantity are to be prescribed. यानी विपरीत गुण का आहार, प्रकृति से विपरीत गुण का आहार जो है वो लेना है एक दोषज और द्विदोषज प्रकृति को। ये बात जो है वो यहाँ पे विपरीत गुणः तेषां से चरक में यहाँ पे स्पष्ट की हुई है। अब दो फॉर समप्रकृति पीपल सर्व समरसम सात्म्यम कहा हुआ है, लेकिन ये क्लियर है कि वो जो समत्व है रसों का वो क्वांटिटेटिवली वहां से नहीं लेना है, न तुल्यमानत्व। तो क्या है, अनुरूपत्व अभिप्रेत करते हैं। बिकॉज वी नो कि षड्रसात्मक आहार तो भी है, लेकिन फिर भी वो मधुर रस प्रधान लेना है, वो यहाँ पे बात जो है वो कहते हैं। और सिर्फ प्रकृतिस्थ और रसों की बात जो है वो सिलेक्शन ऑफ आहार में काम नहीं आती। तो ऋतु, प्रकृति, देश, ये सभी का फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए आपको वहां पे वो आहार सिलेक्शन करना है। फर्दर इन दिस प्रकृति कंसेप्ट दो नाउ द विपरीत गुणः तेषां स्वस्थ वृत्ते विधिरिता वो कहा है। देन व्हाट इज द बेसिस बिहाइंड दिस मैनेजमेंट प्रिंसिपल? क्योंकि अपोजिट जो प्रकृति जो दोष है उसके अपोजिट गुण का आहार सेवन करना है, और बाकी के भी जो रेजिमेंट वात प्रकृति, पित्त प्रकृति, कफ प्रकृति के लिए बताए हैं वो कब तक लेना है और उसका बेसिस क्या है, वो आपको चरक विमान स्थान 6 में चरक कहता है कि अधिक दोषाणाम तु त्रयाणाम दोषाधिक्यम अभिसमीक्ष्य दोष प्रतिकूल योगिनी त्रीणि अनुपनिधानानि श्रेयस्कराणि भवति। और ये जो दोष प्रतिकूल आहार है और बाकी के भी जो सारे रेजिमेंट्स यहाँ पे चरक विमान 6 में बताए हैं, तो वो कब तक लेने हैं? तो यावद अग्नेय समीभावात, ये सभी जो उपक्रम है ये कब तक करने हैं? बिकॉज प्रकृति नेवर चेंजेस, प्रकृति तो चेंज नहीं होगी, प्रकृति से दोष चेंज नहीं होगे। तो ये विपरीत आहार कब तक लेना है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? द ऑब्जेक्टिव इज टू ट्रीट द अग्नि, विषमाग्नि, तीक्ष्णाग्नि and mandagni. We can treat agni. So in this prakrutistha people, after treating the agni until the agni will achieve the equilibrium state, we have to continue with the dosha pratikula yogini pranidhanani. So this dosha elevating type of ahar should be continued till the attainment of samagni. So it is clear
कि हम प्रकृति को तो चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसके प्रकृति के विपरीत आहार और बाकी के जो पथ्य कहा गया है प्रकृतिस्थ दोषों के लिए, वो तब तक कर सकते हैं, तब तक करना है जब तक उस व्यक्ति का अग्नि जो है वो समाग्नि में परिवर्तित नहीं हो जाता, एंड दैट कैन बी डन बाय द प्रॉपर regimen. So that is why the principle behind the selection of food for Vatala, Pittala and Shlishmal type of individuals are Ahara Dravyas having opposite quality to that of predominant dosha of constitution shall be selected here. Now, by taking only Hita Ahara, it is not possible to achieve the whole qualities of Ahara. So even though a person is taking the Ahara Dravyas which are most wholesome by the nature, one should aware of the regular practices regarding diet to have the total benefits. And taking this concept in mind, the dietary guidelines has been prescribed by the Acharya Charaka here. So for those dietary guidelines, the Charaka has mentioned सूत्रस्थान चैप्टर 18 दैट है ना, शुभ अशुभ समुत्पत्तौ तान प्रकृतितः चाहे वो आहार हितकर है आपके लिए, बट उसका हितत्व और अहितत्व किस पे डिपेंड है, तो आहार से विधाव अष्टो, ये जो अष्टो आहार विधि विशेष आयतन बताए हैं, दिए आयतनों पे दीज आयतना एंड हाउ दे आर प्लेइंग द रोल, ये सभी जो बातें हैं वो आपको अष्टो आहार विधि विशेषायतनानि में बताई गई. सो दीज फैक्टर्स शुड बी इवैल्यूएटेड बिफोर कंज्यूमिंग द फूड, बिकॉज द बेनिफिट ऑफ आहार इज subjected to all these 8 factors. Now in this ahara vidhi visheshayatanani, first come the prakriti. We all know prakriti. Karana iti karanastu sanskaraha. अब ये संस्कार सबको पता है, ये आहार विधि विशेषायतनानि क्या है नए बच्चों को, तो इसलिए मैं इसमें बस जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूंगी कि करण जो है, करण इति संस्कारः, संस्कारम ही गुणांतराधानम. तो उसकी जो कमेंट्री है उसमें चक्रपाणी कहता है कि अगर द्रव्य का गुण चेंज हो गया तो द्रव्य का गुण चेंज कैसे होगा, है ना, तो वहां पे वो क्लियर करता है कि द्रव्य के गुण जो है वो दो, देयर आर 2 occasions वेयर द गुणाज और द क्वालिटीज विल गेट चेंज. एक तो द्रव्य अगर नष्ट हो जाता है तो गुण नष्ट हो जाते हैं, एंड सेकेंड इज द संस्कार. संस्कार इज द वन जिससे गुणांतराधान जो है वो होता है, एंड इट इज एक्सेप्टेड. एंड नेचुरली व्रीहि एंड लाजा, ऐसे अगर हम 2 द्रव्य लेंगे तो व्रीहि जो गुरुगुणात्मक है, लाजा जो है वो लघु गुणात्मक है. तो यहाँ पे सिर्फ गुणांतर नहीं है तो द्रव्यांतर भी हो गया है, तो गुणांतर होने में और वो प्रिंसिपल एस्पेक्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे वहां पे उसको कहना है. फिर संयोग एंड राशि. अब राशि यानी क्या है, तो ये जो सारे अष्टो आहार विधि विशेषायतनानि है वो द्रव्य से रिलेटेड जो है वो आपको लेना है. फॉर एग्जाम्पल राशि यहाँ पे क्या लेना है, तो राशि इति सर्वग्रह राशि एंड परिग्रह राशि. अब देश जो है वो देश यानी द्रव्य की उत्पत्ति प्रचार से देश एक्सपेक्टेड है, और दूसरा तो देश सात्म्य. देश सात्म्य यानी क्या, देश विपरीत गुण सात्म्य जो है वो देश सात्म्य से एक्सपेक्टेड है. काल में हम क्या लेंगे, तो काल में आपको काल नित्यग और अवस्थिक ऐसे 2 प्रकार का है, और नित्यग काल से यहाँ पे ऋतु सात्म्य उन्होंने चरक को एक्सपेक्टेड है. उपयोग संस्था जो है, उपयोग संस्था इति उपयोग नियमः. अब उपयोग नियम से यहाँ पे अष्टो आहार विशेषायतने के अंडर जो उपयोग नियम है उसमें आप आहार विधि विधान यानी अष्टो आहार विधि विशेषायतन बताने के बाद चरक विमान 1 में चरक आहार विधि विधान कहता है, उष्णमश्नियात, स्निग्धमश्नियात, मात्रावदश्नियात. तो उपयोग संस्था से वो सभी नियम जो है वो भी यहाँ पे उनका इंक्लूजन करना है, ऐसे चक्रपाणी उसको जो है वो क्लैरिफाई करता है. और उपयोक्ता यानी द वन हु इज कंज्यूम द आहार, दैट इज कॉल्ड एज उपयोगता, और इस उपयोगता से ओक साथ में लेना है ना. तो इस तरह आहार विधि विशेषायतनानि से बाकी के जो फैक्टर्स है, डाइटरी गाइडलाइंस है, वो यहाँ पे
सभी का इंक्लूजन जो है वो यहाँ पे हो जाता है, ऐसे उनका कहना है. So if you will think what are the factors which are responsible for the complete benefit of Hita Ahara, then that is the Ahara Vidhi. Ahara Vidhi includes both Ahara Vidhi Vidhan and Ashto Ahara Vidhi Visheshayatanani. Then the code and etiquettes for eating. So not just the place, that is Ashto Ahara Vidhi Visheshayatanani and Ahara Vidhi Vidhana. Except these two places, Sadvritta is the place where Charaka has specifically elaborated the code of conduct for eating. Means what etiquettes or what the code a person has to follow while taking the food. So that code for eating is also essential to take into consideration if you wish to have the complete benefit from the Hita Ahara. And then non-suppression of natural urges. Why I have mentioned this? Because when they have started with Navegan Dharaniya Adhyaya, so at the start itself, the Chakrapani shed a light that, okay, in 5th and 6th chapter, we have explained what is Hita Ahara, but that complete benefit of Hita Ahara, when it will be a person will have, when the excretory products, which are the end product of metabolism of Ahara, that excretory product, if they will be excreted from the body timely, then and then only the person will be benefited completely by the Hita Ahara. So this is why non-suppression of the natural urges play a great role to have the complete benefit from the Hita Ahara. The Agni, that we all know, but Agni is depend upon Vyayama. तो व्यायामकृत अग्नि जो है वो बहुत शक्तिमान होता है, वो बहुत अग्नि को सिद्ध करने में व्यायाम का एक बहुत बड़ा रोल है. So that is why Agni and Vyayama both are responsible. Prakriti, we have discussed that Prakriti has plays a major role for the to have the complete benefit from the Hita Ahara. Now, among all these Ashto Ahara Vidhi Visheshayatanani, Swastha Chatushka is the one which exclusively attributed to tell what are the guidelines for maintenance of the health. And if you see this Swastha Chatushka chapter, then that Swastha Chatushka chapter starts with the Matra Shi Syata. Okay, so what does it mean? It means that whatever the factors which are responsible for maintenance of health, among all these factors, Ahara Matra, it plays a principal role. Okay, so that is why they starts with the Matra. They have not mentioned any other, not mentioned Vyayama, not mentioned Brahmacharya, not mentioned Nidra at the start of the Swastha Vritta, but they start with the Ahara Matra. And they have mentioned that Matra Shi Syata. Here Ashi say, while commenting on the term Ashi, the Chakrapani says that Ashihi ayam iha visheshena khadya, prashya, leya, peyanam abhyavahare vartate. So during exploring this concept specifically, it is remarkably we came to know that Charaka has given importance to these 4 types of ahara, and they have given weightage also, that is khadya, prashya, leha and peya. These 4 types of ahara they have given major importance. So while taking ahara, it is also essential to consider that what type of ahara we are taking, whether it is peya, leha, prashya or khadya. So yeah, here the ahara matra is of 2 types, means in 2 aspects they have discussed, that ahara matra punaha agni bala apekshini, and it is of 2 types, Sarvagraha Matra and Parigraha Matra. We all know that Sarvagraha Matra in Vimanstan 1, it is explained that Sarvagraha is Sarvascha Graha Sarvagraha and Sarvatascha Graha Parigraha. That is, here in Ahara Vidhi Visheshayatanani, Dravyani Matra Apekshante, means whatever food you are taking, that food expect the quantity. And then matra, what matra expect? The matra agni अपेक्षित है. द्रव्य जो आप ले रहे हो वो मात्रा की अपेक्षा कर रहा है और मात्रा जो है वो अग्नि की अपेक्षा कर रहा है. So that is why it again re-established that the agni has the utmost importance in the maintenance of health, as it is rightly stated by Charaka that balam arogyam ayuhu cha pranaha shogno pratishtitaha.
अन्नपान ईंधनैः च अग्निः ज्वलति वेति अन्यथा, यानी अन्नपान जो है वो अग्नि के लिए ईंधन का काम करता है. And now this ahara matra, I just would like to highlight this point because it has been mentioned by Chakrapani ki what is parigraha matra. Parigraha matra is madhura amladinam ahara avayavanam prattekam matraya graham. Ab jo prattekam means combined is sarvagraha, and separately what amount of madhura, amla, katu, tikta, all these rasas you are including in your ahara, that is parigraha, and it indicates the importance of proportionate quantity of all the 6 rasas in every meal. Means it is not that only for sake of feeling your tummy you are taking any type of ahara and you will say okay, now my meal has been finished, I have taken the proper meal. So it is not so. Why the parigraha matra is having such a great importance? Because tatra ahara avayava matra vaishamyat धातु वैषम्यम भवति एव अयथा कालम जरा मरणम च गच्छात. यानी अगर आप अवयव मात्रा या परिग्रह मात्रा को प्रॉपर क्वांटिटी में नहीं लेते हैं, देन इट लीड्स टू धातु वैषम्य. इट ऑल्सो लीड्स टू अयथा काल जरा मरण. सो it highly states the importance of parigraha matra, and proportionate quantity of all the 6 rasas in the diet is highly essential. Not the complete matra is will not serve the purpose. We all know that in sequence of rasas, the madhura ahara, we have to start with the madhura rasa, and then in between amla and lavana has been prescribed, and at the close of the meal the tikta, katu and kashaya rasas are prescribed by the acharyas. Now as in various references it has been mentioned that though hitakara ahara is explained by us, but while taking that hitakara ahar, it is highly essential to consider the environmental factor, that in which season which type of ahara is to be taken. That rutu consideration or the seasonal consideration is highly essential, and because of this only the Charaka has specially attributed the Rutucharya to convey all the principles which are related with the Ritu or the season. So there the Chakrapani says that the sun, wind and moon all are governed by time, and the path they follows in a year, they are responsible for the different variation of Kala, Rutu, Rasa, Dosha, Deha and Bala. So this environment, that is sun, moon and wind motions, they affect Kala. Here the Kala term is Kala term means Samvatsara, that Samvatsara and 2 Ayana. For that the Kala term has been used. Then Rutu, 6 seasons, Rasas, Doshas and Deha Bala. So all these factors, they are predominantly affected by the seasonal variations on body physiology. They will have the utmost effect, and that is why the Kala concept or the Kala aspect or the environment in which we are living, that has to be taken into consideration in selection of the ahara. So the factors taken into consideration, they are the Agni, Dosha Sthiti, means in perspective of season we are talking here, that what is the status of Agni, then what is the dosha sthiti in that specific season, whether that in that specific season whether ruksha is predominant or the snigdha guna is predominant, whether ushna is predominant or shita is predominant, and along with that whether it is the rutu of kledadikya or what. For example, varsha rutu is considered as the kledadikya, and sharad is also considered as this kledadikya. So to control that kledadikya, specifically the use of madhu or the honey is prescribed there, and it has been mentioned that madhu is to be added with the all type of ahara dravyas. Now the next concept which comes with the ahara is the pathya concept. Now here I only highlight all we are aware of the terms of pathya. So in Chakrapani, while commenting on this term pathya, he has beautifully explained the term pathya. He has mentioned the 3 meanings of the term pathya. The first term is patha iti
Sharira margat sroto rupat. So patyam patho anapetam. So what is mean by patha? So patha is first sroto rupat. Patha से एक तो स्रोतो मार्ग लेना चाहिए. Then patho grahanena pathyo vayyaha doshaha dhatavah. The dosha and dhatus which are traversing through those srotasas, they are also need to be considered by the term patha. Then patho nirvartaka dhatavo gruhyante. Means nirvartaka means nishpadyanta. Means the dhatu which are not constraints to the srotasas. That is, we generally term them as the sthayi dhatu. So sthayi dhatu, they are not residing in the srotasas. So those sthayi dhatus are also need to be considered by the term patho. And here combinedly they are saying that तेन कृष्णमेव शरीरम गृहीतम भवति, यानी संपूर्ण शरीर ही पथ शब्द से लेना चाहिए. And for this sharira, the ahara dravyas which are anupagati, na upaghatakara, na apayakara, all those dravyas, they are termed as the pathya. But this definition is an incomplete definition. So what is complete definition? Unless and until you will add the mental factor to this, the definition will be incomplete. So that is why they have further added that manasharira anupaghati pathyam iti pathya lakshanam anapavadam. Now it is a complete definition. There is no exception for this definition, that manasharira anupaghati pathyam. मन शरीर के साथ साथ मन के लिए भी जो अनअपायकारक है, that will be termed as the pathya. Along with pathya, now the next term which is coined in this is mean by सात्म्य. चरक विमान 1 में सात्म्य का वर्णन किया है. देखेंगे तो त्रीणी द्रव्यानि न अति उपयुंजित. That is a क्षार, लवण and पिप्पली. Okay, so if some people they are of habitually using these 3 drugs, then he has mentioned that suddenly they should not stop these drugs. So they have to taper off what is ahitakara and what is not wholesome and pathyakara for this body physiology. If you are habitual to consume such ahara dravyas, then slowly taper off those dravyas. And in this context, he has explained the definition of satmya as satmyam nama tad yat atmani upashete. सात्म्यार्थो ही उपशयार्थः, यानी आत्मा के लिए जो सुखकर है, जो उपशयकर है, वो सात्म्य है. And Chakrapani shed a light on this, that in this definition the term satmya नाम ओक सात्म्य. सात्म्य से यहाँ पे क्या एक्सपेक्टेड है? तो ओक सात्म्य है. So what is ओक? ओक इति अभ्यास सात्म्य. And what is अभ्यास? We all know that अभ्यास इति सतत परिशीलनम अभ्यासः. So for the thing which needs to be accustomed to the body, that padartha is to be taken continuously. उसका सतत परिशीलन, सतत अभ्यास करना जो है वो आवश्यक है, तभी वो अपने शरीर के लिए सात्म्य होगी. So and if the thing is satmya, satmyam api kramena apanirvartyamanam. If the person is habitual for the unwholesome food, dietary items, then he has to taper off that food items. Why? Because if he will suddenly stop, then it will lead to the dosha prakopa. And if he'll slowly taper off the things and then completely excretion, then what it will lead to? A dosham alpa dosham va. यानी वो दोषकर नहीं होते या तो अल्प दोषकर होते हैं. Now here in Charaka Samhita 7, he also explained the same thing. What is the place of this sutra? That after explanation of vyayama, he has explained that kramena apachita doshaha, kramena upachita gunaha, santo yanti apunarbhavam aprakampya bhavanti cha. यानी अगर kramena apachita dosha, if you will taper off the things slowly, and if you will introduce the हितकर आहार slowly, then क्रमेण हमने अपचय किया है, तो इसीलिए संतो यांति अपुनर्भावम. Those doshas, those vitiated state of doshas will not relapse again. And because through hitakara ahara, as we have introduced the positive gunas slowly, so that is why what
benefit the body will having aprakampya bhavanti. Aprakampya bhavanti means whatever the positive or the healthy properties that ahara dravya will be having, that will leads to the stairya. It will leads to the dhatu stairya. So aprakampya means apracharya. उससे धातु स्थिरत्व आ जाएगा. So that is why pathyam api. Am I audible? Yes, ma'am, you are audible. Okay, thank you. So pathyam api hi anabhyastam sahasa upayujyamanam aruchi agnivadhadin jayate. So here this is very important shloka, dear students, that pathyam api hi anabhyastam. अगर वो आहार द्रव्य पथ्यकर भी है, लेकिन उसका अभ्यास अगर आपके शरीर को नहीं है और वो अचानक से आप उसको अगर खाने शुरुआत कर जाते हैं, तो उससे क्या होगा? अरुचि अग्निवधादिन जनयति. तो इसीलिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग व्हिच चरका हैज एक्सप्लेन्ड हियर, कि भले ही कितना ही हितकर आहार द्रव्य है, लेकिन उसका धीरे धीरे शरीर को इंट्रोड्यूस करने के लिए उसको आप, और इसीलिए उन्होंने जो है वो पादंशिक क्रम जो है वो वहां पे बताया है कि पथ्य और सात्म्य, दीज आर टू डिफरेंट कंसेप्ट. बहुत ही होलसम है, लेकिन आपके शरीर के लिए अगर वो अकस्टम्ड नहीं है, अगर उसका अभ्यास आपके शरीर को नहीं है, तो अचानक से बहुत ज्यादा मात्रा में उसको मत खाइए, उसको धीरे धीरे खाइए, और इस तरह से वो धातु स्थैर्य करेगा और दोषों को प्रवृद्ध भी नहीं करेगा. So in this way, these three important concepts, pathya and satmya, is also introduced here. Now here, in the start of our lecture, we have discussed that ekanta hitani dravyani, which Sushruta has mentioned. They are mentioned that jati satmya titi manushya jati satmya. But they are while commenting on this sutra, Chakrapani said that though we have very sorry to say, if any query, please let me know. Otherwise, it's a kind request to all the audience. Please mute themselves. Thank you. Jati satmyat iti manusya jati satmyat. And though we have enumerated the Raktashali, Yava, Godhuma, Amalaki, these ekanta hitakara dravya or Shilaniya ahara dravyas, but while during consumption of those Raktashali and ekanta hitakara dravyas also, the satmya concept is highly expected. बहुत ही अपत्यकर है, लेकिन फिर भी रक्तशाल्यादीनाम सात्म्यत्वम अभ्यास अपेक्षा, यानी उनको भी अभ्यास की अपेक्षा है. So that is why in ऋतु सात्म्य also ओक सात्म्य is highly expected. So that is why the satmya concept in Charaka Samhita, it coined in three ways. One is the oka satmya, which is abhyasa satmya, satata parishilanam. Then the desha satmya. So desha satmya is desha viparita guna satmya. आप जिस भी देश में रह रहे हैं, उसके जो भी गुण है, उसके विपरीत गुणों का सात्म्य होना, यानी वो विपरीत गुण का आहार जो है सेवन करना, वो अत्यंत आवश्यक है. उस संदर्भ में देश सात्म्य का वर्णन जो है वो ग्रंथों में आया है. एंड ऋतु सात्म्य, that is kala concept is considered as the nityaka kala and avastika kala. So nityaka kala expect the ritu satmya. In ashtavahara vidhi visheshayatanani, this concept has been explained. So in this way, after explaining this fundamental and nitya hitakara ahara dravya, in 25th chapter, the Charaka classified the ahara dravya with various viewpoints. That is depending on the source, the vegetable product and the stavara and jangama. Then depending on the prabhava, the specific action of that dravya, whether it is hitakara ahara dravya and ahitakara ahara dravya, depending upon the use, chaturvida upyogaha, that is ashita, pita, lida, khadita. Then depending upon the taste, the food articles can be classified into 6 groups, that is the 6 rasas. And depending on the guna, the 20 types of ahara dravya, groups of ahara dravyas we can classify. So these guidelines or these principles, they help us to assess the new ahara dravyas for which their properties are unknown. So this will be helpful principles which can help us to know the properties of new ahara dravyas also. Further, in chapter 27, the Charaka has classified all these ahara dravyas into 12 groups. And
it is pertinent to say that Shushruta, in addition to this, added Lavana Varga, Bhaksha Varga, Anupana Varga, and which are additionally incorporated by the Acharya Shushruta there. And further, here I have just enlisted the Ahara Dravyas, which are termed as the Nitya Shilaniya Ahara Dravyas. So हम बच्चों को ऐसे ही सिखा देते हैं, but that the importance of those group of ahara dravyas is essential to understand that these ahara dravyas, irrespective of the prakriti, we can say that they are highly wholesome for all the human beings. So Charaka, Shushruta and Vagbhata all have explained these Nityashilaniya ahara dravyas. So they have included Shali, Shashtika, Godhuma. I am not going into the reading the list, but the few I will say that Shali, Shashtika, Godhuma, Yava. Then Balamulaka is there. Then Amalaka is there, Mrudvika is there, Gokshira and Gogruta is there, Dadima is there among the Falagrupa, Sandhava is there. Now, though it is mentioned by Acharya Charaka, and so here he has aware that among the Lavana group, I am mentioning here Sandhava. So we being the Ayurveda people should have faith in our principles, that it will, if a person is consuming in their daily diet, he is using only Sandha Namak and he is not using the Tata salt and other Ravan, still he will not be suffer from any type of deficiency. That we being Ayurveda people should have faith in our principles, so that we can prescribe it to our patients and other healthy people also. So among these Nitya Shilaniya Ahara Dravyas, Charaka has enumerated the group of Ahara Dravyas, which he has specifically mentioned that Na Shilayet. The term Shilana again comes to the Satmya and the regular consumption of the Ahara Dravyas. Ki इनका आहार में नित्य उपयोग नहीं करना है means okay, occasionally you can have, because ahara dravyas are rasa pradhana, and if occasionally you will have the consumption of these ahara dravyas, it will not impact or not affect much of the physiology. But if you will regularly consuming this, then definitely it will lead to the dosha prakopa. That is why dadhi, kurchika and kilata, they are nothing but the paneer and type of cheese we can interpret here. Then pork is there, beef is there. So virudhana, sprouted seeds. So there are few principles of Ayurveda we all are aware that we contradict with the modern dietetics. So sprouted seeds are one among those, because the virudha is highly non-beneficial for the eye health. So we are on regular basis, we never prescribed that sprouted seeds you should consume or you should include it in our daily diet. Then the same is with the molasses. That molasses, they are saying among as per the modern dietitian, the molasses are considered as the rich source of ions. But as per Ayurveda principles, they are tridosha prakopa. So for regular use of molasses, we never prescribe to the patients. Now here, this is a very complex slide you could see. The objective of this slide is, here I have just enlisted the hitatama ahara dravya from every group, which Charaka has enumerated at the start of the in 25th chapter. So here you could see all these Lohita Shali, Mudga, Sandhava, Jivanti Shaka, then Tila Taila, Shrunga Bera, Mrudvika, Rohita Matsya. And I wish to highlight this Vasa concept, students, that there are 1, 2, 3, 4, 5 group of Vasas they have mentioned. Vishkira Vasa, Vishkira Pratuni Vasa, Kukkuta Vasa, Aja Vasa. Okay, so I have explored this on the internet, and we could see that these are highly available in the market. And though they may not be in the Indian market, but overseas, where non-vegetarian people are means people are means mostly non-vegetarian,
in those countries, these are available in the market, and the cooking preparation, dietary preparations are also prescribed. For example, the kukkutavasa is used for the seasoning in various dishes. So if you see the properties of these various fats, animal fats, then you will come to know that chuluki vasa, which belongs to the Matsya Varga, they are rich in omega-3 fatty acids. Then kukkutavasa, they are high in linoleic acid and omega-3 fatty acid. Then ajameda is also available in the market, which is rich in omega-3 and controls BP also. Varahavasa is known as lard, and it is used as a cooking fat. So what I wish to convey here, that it is not that only Ayurveda can be practiced in only the Asian countries. Our Ayurveda science, our ancient Ayurveda text has the seeds to convey the proper dietary guidelines for the pure non-vegetarian people also. Now, from this Nitya Shilaniya Ahara Dravyas, only looking into the time constraint, I have taken 3 dravyas for the discussion here. That means I was just thinking on these dravyas, that why only these dravyas might have included as a Nitya Shilaniya Ahara Dravyas. Means all ancient classics, they are specifically giving emphasis on these dravyas, that these dravyas has to be used. And if we will talk about the mudga is such a dravya that for I think in disease conditions, in many disease conditions, specifically in Santarpanotha Vikara, we skin disorders, because I'm looking after the skin OPD. So if you will put patient on the mudga yusha and ज्वार की रोटी, say for miraculous result. But there is a means blame on Ayurveda from the modern people on many platforms. I have heard that if these dietary guidelines of Ayurveda, if they will be strictly followed by the patient, then they will suffer from the malnourishment. So this claim is nowhere stands if you see the properties of these ahara dravyas. For example, for mudga, it is highly easily digestible protein. So it is not having the burden on your digestive system, though it has a very high protein level, that is 19 to 29%. It has a good amount of calcium, potassium, manganese, rich source of most of the all type of minerals. So it is a, and it is a published article. From this published article, I have taken this reference, the citation I have given at the end of my slide, that in combination with cereals such as wheat and rice, mung beans form a balanced amino acid profile with a high protein level. So now they have recognized that yes, sirf dal और चावल हम जो खाते हैं, it is very famous in Maharashtra, that dal chawal is a complete food, है ना? So now the modern science have proved this thing. Now talking about the Shashtika is the rice variety, and if you see the Nitya Shilaniya Ahara Dravyas of Charaka Samhita, first they have mentioned Shashtik and then they have mentioned the Shali, that is Rakta Shali. So there Chakrapani comment that as compared to, if we compare the Rakta Shali and Shashtika, Shashtik is having the giving preference in healthy people. So what are the qualities of this Shashtika? So before explaining the qualities of Shashtika, in 25th chapter, the Chakrapani says in this Varga that there are 3 types of rice variety. The one which is cultivated in Hemanta, that is winter season. The one which is cultivated in Grishma, summer season. So the variety which is cultivated in Hemanta, they are termed as the Shali. The variety which is cultivated in the Shashtika, in the Grishma Rutu, they are called as the Shashtika. Am I audible? Yes. Thank you. So in Grishma Rutu, whatever the rice variety which is cropped, that is called as the Shashtika. And in Sharad Rutu, they are termed as the Vrihiya. And if you see the properties of Vrihi, it is Madhura and Amla. So naturally the impact of environment is there in the food production also. Now, if you see the properties of Shashtika, it is called as the Shita, Snigdha, Agaru. Tridoshagna and Sthiratmaka. So wherever students, the term Sthiratmaka is used in context with the Ahara, we have to consider it as the Dhatu Stairya.
सो धातु स्थिरता जो है वो बहुत आवश्यक है. सो दैट is contributed by the Shashtika here, and it is Raktashalihi Varaha Tesham. Now for the Raktashali they have termed it as Tridoshagna and Malapaha. Now it is further in 27th chapter itself, though the Ahara Dravya Prakrutitaha it is Hitakara, but how you are preparing it, the qualities of that Ahara Dravya on the preparation, it is highly depend, because the Sanskarohi Gunantara Dhanam. So if in today's era, because most of the people there is every third person is suffering from the diabetes, so I think it is essential to share it with the student community that if you are taking rice, okay, so how that rice is prepared. So the method of preparation has a great importance, that how that rice will affect your body physiology. So in method of preparation, the Charak Sutra 27, it Acharya Atreya mentions that Sudhautaha Prasrutaha Swinnaha संतप्तः च ओदनो लघु. तो चावल कैसा बनाना चाहिए? तो पहले उसको सुधौत करना चाहिए, देन उसको प्रसृतः, यानी उसको you have to add a lot of water into it, and once the that rice is cooked, you have to drain that water. Okay, हम आजकल ऐसा राइस नहीं बनाते हैं. So the draining of the excess water is highly essential, and it should be properly cooked, and freshly you have to eat that. Santaptaha cha odhanu laguhu. And if the patient is suffering from some kaphaji disorder, then, and if he is persisting that I have to take rice or without rice I can't survive, then ask them to भृष्ट, उसको थोड़ा सा भून के लेने के लिए कहिएगा, because तंडुलम इच्छन्ति गरश्लेष्मा मयेषु अपि. देन अधौत अप्रसृत अस्विनः शीतः च अपि ओदनो गुरुः. जो हम आजकल के इसमें खाते हैं वो इसी तरह का है. अधौत तो हम करते हैं लेकिन अप्रसृत भी नहीं करते हैं. तो प्रसृत करना जो है वो उसकी क्वालिटीज को बढ़ाता है. जो अगर आप षष्ठी की चावल भी बना रहे हैं तो उसको ओपन में पका के उसको जो एक्सेस वाटर है ड्रेन कर दीजिएगा और फिर खाइएगा. Then all these benefit you will receive from that rice. So for the Shashtika rice, it is a published article now in the domain that the Shashtika rice, it is rich in higher protein. That is 16.5% of protein it has. Then it has a good content of riboflavin and niacin also, and a total dietary fiber content is rich as compared to the other rice. In this article, they have compared the Shashtika rice with other two varieties, and they have come up with this conclusion that total dietary fiber content in this Shashtika was found to be 34.44%, higher than the other variety, and it is significantly higher phosphorus, potassium, magnesium, sodium, calcium. So all micronutrients it will take care of. That stickiness is there. If you ever have eaten that rice, it presents the non-starchy polysaccharides. So that is why the modern dietetics has also proved the importance of the Shashtika. That is why that is the one who is included in the Nityashilaniya Ahara Dravya. The last Dravya which I have taken up here for discussion is the Yava and the Bharti. Let me tell you, student, that if you see this Nityashilaniya Ahara Dravya, though the Vagbhata and Shushruta has added, but Charaka has not added Gehu or the wheat to the Nityashilaniya Ahara Dravya, but he had added Yava to the Nityashilaniya Ahara Dravya. Because if you see its properties, then it is Ruksha, Shita, Agaru, Swadu, Bahuvata Shakrutyavaha, Stairyakrit. Again, it is Dhatu Stairyakrit. Because आहार जो आप नित्य ले रहे हो उसका आपके धातुओं पे क्या प्रभाव है ये देखना बहुत जरूरी है. So it is स्थैर्यकृत सकषायश्च बल्यः श्लेष्म विकारणुत रुक्ष कषाय अणुरसो मधुरः कफपित्तः. And if this balya term is then explained by Shivdasa Sena, that balyatvam cha shroto vishuddhikarattvena samagra rasa sancharena ishtama, because Yava is having the quality of Srota Shuddhikara guna, and due to that Srota Shuddhikara guna, naturally, if all type of obstructions in the Srotasa will be removed, the Ahara which has been taken
after formation of the Ahara Rasa, that Ahara Rasa will be, the nourishment will be received by all the dhatus and they will have the proper nourishment. So that is why in that way the yava is termed as the balya. And if you see the published article to know the more nutritive value for this yava, so all we have know that this is coined as the first, means yava stand first in the list where it has the lower glycemic index. Though lower glycemic index food, it is a high fiber content and it has the flavonoic acid, flavonoid and all these micronutrients also. Antioxidant is there, it lowers the cholesterol, and I think because of all these properties, it is highly prescribed for the modern dietitians. No doubt that Charaka in Prameha Chikitsa, if you see the dietary regimen, he has beautifully explained and all the dietary regimens for the Prameha people, and the predominantly he has used yava there. So though yava is essential for the means essentially prescribed for the dietetic people, but it is it should not be communicated that yava is the food of the diabetes, because yava is one of the drug which is used under Nitya Shilaniya Ahara Dravya under Swastha Chatushkam. It means for all human beings it is healthy and it is beneficial. So concluding by these two slides, that though only ahara, by taking hitakara ahara or the wholesome diet, the complete benefit means the swasthya will not be maintained. So for that, the Charaka said that तच्च नित्यम प्रयुंजित स्वास्थ्यम येन अनुवर्तते, वही खाना चाहिए जिससे स्वास्थ्य का अनुवर्तन हो. So by saying this, he has explained the swastha poshaka hetu. So swastha poshaka hetu has been explained in the first sutra, and the second line he says that अजातानाम विकाराणाम अनुत्पत्तिकरम त्रय, जो विकार उत्पन्न नहीं हुए हैं उसको उत्पत्ति न हो, ऐसे भी जो सभी जो चीजें है, जो चर्या है, वो हमें फॉलो करनी चाहिए. सो इन दिस सेकंड लाइन ही हैज एक्सप्लेन्ड द स्वास्थ्य विघातक हेतु परिहार. Now on commenting on this, the Charaka said that Vishuddha Ahara Acharabhyam Sada Kshiyamana Sharira Poshanena. So in the first, how to nourish the body dhatu, bodily dhatus, they have been explained. And in second, Pratyavaya Hetu Pariharena. Now what is this Pratyavaya Hetu? So they are of two types. Buddhi doshat Vishama Shariranyasadi and Duspariharascha Kalaha. So we have to avoid this hetu also. So not just by having the hitakara ahara and vihara, but the hetus which are vighatakara, we have to restrain ourselves from those hetus also. And in this way, the three factors are highly essential for preservation and maintenance of health, that is ahara, achara and cheshta. So here the 7th sutra of Charaka Sutra, 7th chapter of Charaka Sutra, he states that ahara, achara, cheshtasu sukharthi pretyachecha param prayatnam adishtet buddhiman hita sevane. The intelligent person who is desirous of well-being in the present world and after death also should strive his level best to follow. One is the correct ahara, the second is the vihara and achara. Now here the cheshta is not just vyayama. Please do not misinterpret this, that the cheshta includes, because the Chakrapani explains this, that the cheshta is not just vyayama. Cheshta is whatever the therapeutic procedures, that is abhyanga, udvartana, which are mentioned under the dinacharya, that has to be considered as the cheshta. And achara means शास्त्र विहित अनुष्ठानम, जो सदवृत्त है उससे आचार लेना चाहिए. तो इसीलिए प्रॉपर आहार, प्रॉपर आचार एंड चेष्टा, all these has to be followed very particularly if you wish to maintain your health. So षट्त्रिंशत् सहस्राणि रात्रिणाम हित भोजनः जीवति अनातरः जंतु जीतात्मा सम्मतः शतम्. अगर आपको 100 साल तक जीना है तो कितने षट्त्रिंशत् सहस्राणि रात्रिणाम, इतने समय तक आप जो है अगर हित आहार करते हैं तो डेफिनेटली योर हेल्थ विल बी कंटिन्यूड. एंड विद दिस वर्ड I
stop these deliberations. I am very thankful to the all organizers, Datta sir and Madam Yogita Madam, Madhu Didi, and other respected faculty members, all the faculty members of Samhita Siddhanta Department of Maharashtra University, who have organized such a wonderful webinar. I could see that along with these presentations, they have engaged students in various activities. They will having their paper presentation also, their poster presentation also, and this is really appreciated. So thank you all of you for the patience hearing and giving me the opportunity to share my views. Thank you. थैंक यू, धन्यवाद वैशाली मैडम। विषय को बहुत ही प्रभावशाली और तर्कपूर्ण ढंग से प्रस्तुत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके इस व्याख्यान के एम आई ऑडिबल? हेलो हेलो, एम आई ऑडिबल? यस कमलेश मैम, यू आर ऑडिबल। हाँ मैडम, हाँ आ रही है, आवाज आ रही है। तो इसके पहले कि मैं योगिता मैडम को इसके विशेष टिप्पणी या इसके ऊपर अपना मनोगत व्यक्त करने के लिए आमंत्रण दूं, इसके पहले मैं एक आमंत्रण दूंगी, यदि इस विषय पर किसी को कोई प्रश्न पूछना हो तो उनका स्वागत होगा। यदि कोई पूछना चाहता है वैशाली मैडम से तो मुझे लग रहा है कि किसी को फिलहाल पूछने की आवश्यकता नहीं है। शायद फिर से एक बार आमंत्रण देती हूँ, अन्यथा फिर मैं डॉक्टर योगिता जमदाड़े मैडम को उनकी मनोगत के लिए आमंत्रण दूंगी। Anybody wants to ask something? ठीक है, तो इसके क्रम प्राप्त तरीके से अब इसके बाद में हमारे इस वैज्ञानिक सत्र की चेयरपर्सन डॉक्टर योगिता जमदाड़े मैडम, इनके अभिप्राय के लिए मैं आमंत्रण दूंगी, पर उससे पहले मैं उनका एक परिचय देना चाहूंगी। डॉक्टर योगिता जमदाड़े मैडम इस समय PDEA कॉलेज ऑफ आयुर्वेद एंड रिसर्च सेंटर निगड़ी पुणे यहाँ पर प्राध्यापक पद पर कार्यरत हैं और उनका अध्यापन का अनुभव अब तक 23 साल का है। उनकी क्वालिफिकेशन के बारे में उपलब्ध जानकारी जो मुझे है उसके अनुसार BAMS उन्होंने किया है पुणे यूनिवर्सिटी से, MD उन्होंने किया है गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी जामनगर में से। इसके अलावा उन्होंने MA संस्कृत विषय में MA किया है। इसके साथ ही वह PhD स्कॉलर हैं MUHS नासिक से। और इसके अलावा शी इज द रेसिपिएंट ऑफ वैद्य साइंटिस्ट फेलोशिप। इसके साथ ही उन्होंने PG के 13 विद्यार्थियों को गाइड किया है। इस वक्त प्रेजेंटली वो PhD के 4 विद्यार्थियों को गाइड कर रही हैं और अनेक वर्कशॉप्स में इन्होंने अपने रिसोर्स पर्सन के तौर पे अपनी भूमिका निभाई है, तथा साथ ही इन्होंने अनेक अपने रिसर्च पेपर्स भी प्रस्तुत किए हैं। ये रहा हमारे योगिता जमदाड़े मैडम का जो परिचय उपलब्ध था मेरे पास। अब मैं उन्हें सविनय आमंत्रण दूंगी कि वह वैशाली मैडम के व्याख्यान पर जो कि उन्होंने बहुत प्रभावशाली तरीके से किया था, उस व्याख्यान पर अपना अभिप्राय व्यक्त करें। योगिता मैडम, thank you Kamlesh ma'am for this kind word. Dignitaries present on this online, that is virtual platform, and participants of this webinar, good afternoon. Before starting the concluding or chairman remarks, I would like to mention the quote of respected C.P. Shukla sir. Khati sir have mentioned name of C.P. Shukla sir in inaugural session. He was a great physician and
he used to quote the references from Charaka Samhita while examining the patient. And he used to teach us that Ayurveda has paid more attention to digestion rather than nutrition. So with this quote, I would like to go furthermore. First of all, I would like to congratulate Dr. Vaishali for completing this Herculean task of explaining Ahara, and that too from principles to practices in the stipulated time. Very good, Dr. Vaishali. Before starting the lecture, he has stated objectives clearly. Yeah, Upakrama is clearly stated. Yeah, it's good. Dr. Vaishali has explained concept of Hitahara, clearly mentioned, clearly differentiated Prakriti Bhuta dosha and dosha responsible for Vikruti. And accordingly, selection of Ahara is stated by her. And how long that Ahara should be used, that duration that is up to attainment of Samagni state is also specified by Dr. Vaishali. It's good. Hello. Hello. Am I audible? Am I audible? Yes, ma'am. Yes, Am I yes. audible? Yes, ma'am. Dr. Vaishali, am I audible? Yes, Hello? ma'am. Yeah. So Dr. Vaishali has also mentioned factors for complete benefit of Ahara, such as Ahara Vidhi Vidhana, Prakriti, Vyayama, etc. So she also emphasized importance of Ahara Avayav, taking into consideration about Ahara Avayava Matra. Mention impact of environment on selection of Ahara. Rightly stated, Pathya Lakshanam, that is Manas Sharir Anupaghati. Mentioned about Trini Dravyani Nati Upayunjita. Explained importance of Padanshika Krama. She has also told about how to assess properties of new Dravya. And I like the part that she mentioned the importance of Mudga Sevana with the help of published articles. So also she incorporated updated information about Chashtikar rice, that is high in protein, highlighted Yava as a Nitya Sevaniya Dravya and its Valya Karma with the help of Shivadasa Senetika. So she has perfectly used the references of Tika. And thank you, Dr. Vaishali, for enlightening us with this knowledge of Ahara. I just, one more task is assigned to me by organizers, that I have to just throw some focus on practical applicability of Ahara. We all know that maximum part is covered by Dr. Vaishali regarding Hitahara Sevana. And she also mentioned that Aushadha, in term Aushadha, all Pathya Avarodha is. Pathya is included in term of Aushadha. So in treatment of each Vyadhi, Pathya Ahara is mentioned. She has mentioned in case of Prameha, Yava Pradhanastu Bhavet Pramehi. In the same line, in case of Pandu also, Chali, Shashti, Goduma, then Mudgadhaki, Masuraisha, Yusha, everything is mentioned as per the condition of Vyadhi. And if we prescribe this pathya, and also in this time, patient demands us what pathya should be followed. So we have to prescribe this specific pathya as per the disease condition. So the specific pathya, as it is stated as Atisaras for Sambhana, we can prescribe Masura Yusha for the patient. So such type of practices we are using, such type of Ahara Kalpana we are prescribing for the patient, and that is because of the Charaka. So this is with these words I would like to conclude, and before concluding my remarks, I would like to thank the organizers for giving me this opportunity to chair the session. Thank you very much. धन्यवाद मैडम। जमदाड़े मैडम, आपका बहुत धन्यवाद आपके अमूल्य अभिप्राय को देने के लिए। और इसके साथ ही मैं पुनश्च एक बार हमारे इस द्वितीय सत्र के समस्त संलग्न
नामांकित व्यक्तियों का फिर से एक बार मैं धन्यवाद करना चाहूंगी। डॉक्टर वैशाली माली, इनके व्याख्यान के लिए मैं धन्यवाद कहना चाहूंगी। जमदाड़े मैडम के अभिप्राय के लिए, साथ ही रिस्पेक्टेड माधुरी पाचघरे मैडम का भी फिर से एक बार धन्यवाद। और इसके साथ ही अब हम आगे बढ़ते हैं इस कार्य, और मैं जाने मैडम को भी एक बार से धन्यवाद कहूंगी कि उन्होंने मुझे इस कार्यक्रम के सूत्र संचालन का उत्तरदायित्व दिया। और अब इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं इस कार्यक्रम के आभार प्रदर्शन की ओर, और इसके लिए मेरे इस ग्रुप में है आज डॉक्टर चारुता पार्लेवार मैडम, और ये मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड रह चुकी हैं और हम लोग काफी फ्रिक्वेंटली मिलते जुलते रहते। और ये इनका मैं जो परिचय देना चाहूंगी थोड़ा कि है मोजरी आयुर्वेद महाविद्यालय में पिछले लगभग 23 साल से अध्यापन में कार्यरत हैं, और इस वक्त वो अपना पीएचडी का काम कर रही हैं। और मैं उनसे अनुरोध करूंगी कि वह इस कार्यक्रम के समापन की ओर बढ़ते हुए आभार प्रदर्शन की जिम्मेदारी लें। तो ओवर टू चारुता मैडम। चारुता धन्यवाद सतीजा मैडम। धन्यवाद मैडम। आई एम ऑडिबल? Yes, very well audible. Thank you, yes. Good afternoon, one and all. Myself, Dr. Charuta Parlevar from Shri Gurudev Ayurved. I am a Siddhisthana department. I am working here from 24 years. मुझे आज इस कार्यक्रम का आभार प्रदर्शन देने के लिए यहाँ आमंत्रित किया गया है, तो इसके लिए मैं आयोजकों का धन्यवाद करती हूँ। ये कार्यक्रम जो आज यहाँ पर रखा गया है और इसकी थीम जो रखी गई है चरकस चिकित्सते, तो इस कार्यक्रम की नींव जो रखी गई है वो नींव माननीय सर डीन सर थे, खट्टी सर, उन्होंने इस कार्यक्रम की नींव रखी। और उन्होंने इसकी नींव रखने के बाद ये कार्यक्रम 3 साल से सतत शुरू है। तो सबसे पहले मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इस कार्यक्रम की शुरुआत की। फिर आज के हमारे जो स्पीकर थे, व्याख्याता थे, डॉक्टर वैशाली माली मैम, उन्होंने, आप सभी ने उनका लेक्चर सुना, पूरा क्रिटिकल एनालिसिस उन्होंने आहार का किया, आपने देखा। तो उन्होंने जो सारी संहिताएं, टीकाएं, इनसे सारे संदर्भ निकालकर हम सबको जो ज्ञान अभी दिया है, उसके लिए मैं उनके व्याख्यान की सराहना भी करती हूँ और साथ ही तहे दिल से उनकी शुक्रगुजार हूँ और उनका आभार प्रदर्शन करती हूँ। उसी तरह इस कार्यक्रम में जो को चेयरपर्सन थी हमारी जमदाड़े मैडम, वो भी, उन्होंने भी अपनी चेयरमैनशिप भली भांति निभाई है। लेक्चर तो सुना ही, लेकिन लेक्चर पर जो स्पेशल रिमार्क उन्होंने दिए वो भी सराहना के लायक है, इसलिए मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। हमारे टीम के दूसरे जो को चेयरमैन है डॉक्टर माधुरी पाचघरे मैम, मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। उसके बाद ये कार्यक्रम का आयोजन जिन्होंने किया, जैसे दत्ता पाटिल सर और उनके साथ जो बीओएस के मेंबर जया जाने मैडम, सवई सर, पेठे सर, ये इन्होंने सबने साथ मिलकर 2-3 दिनों में ये कार्यक्रम आपके सामने प्रस्तुत किया और इतनी अच्छी तरह से प्रस्तुत किया, इसलिए मैं इनका हार्दिक आभार मानती हूँ। और हमारे जो डीन सर है मिलिंदा, डॉक्टर मिलिंदा आवारे सर, उन्होंने इस कार्यक्रम के लिए अनुमति दी, इसलिए मैं उनका भी तहे दिल से आभार मानती हूँ। वैसे ही इस कार्यक्रम को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में बहुत लोगों ने सहकार्य किया, शायद वो स्क्रीन पर नहीं आ पा रहे हैं, तो उन सारे लोगों को मैं धन्यवाद देती हूँ और उनका आभार प्रकट करती हूँ। और ये सेशन यहीं पर समाप्त हुआ, ऐसा आपको बताती हूँ। ओवर टू सतीजा मैम। थैंक यू सो मच चारू डियर, इस आभार को प्रकट करने के लिए। और पुनश्च एक बार इस कार्यक्रम के संयोजक, समन्वयक सभी का आभार करते हुए मैं पुनः सभी का एक बार अभिनंदन करते हुए और अपने सूत्र संचालन में यदि कोई त्रुटि हो तो उनके लिए क्षमा चाहते हुए इस कार्यक्रम की और इस सत्र का समापन हुआ ऐसा घोषित करती हूँ। अनेक धन्यवाद। और मैं यहाँ जाहिर करती हूँ कि ये कार्यक्रम या द्वितीय सत्र फिलहाल यहाँ पर समाप्त हो गया है। धन्यवाद।
Thank you. बढ़िया रहा सत्यजा मैडम. Thank you, madam. Thank you so much. Thank you. न जाने क्यों सब पे सतीजा मैडम का बहुत ही भरोसा है और सबका सतीजा मैडम पे. धन्यवाद सर. Yes. Thank you so much. मुझे ऐसा लगता है हम अंतिम पड़ाव पे है. मैं डॉक्टर रूपाली भांबारे मसे मैडम से गुजारिश करना चाहूंगा कि वह वैलिडिटी फंक्शन का शुरुआत करें. Hello. Yes, madam, you are audible. Please go ahead. Very good afternoon to all participants, dignitaries, vaidyas, principals, teachers, and students for this national webinar on Charakas to Chikitsate. Today, each of us experience unique Tadvidya Sambhasha, Buddhivardhananam Sreshta. The Ukti today is very well implemented by the organizers. I am very much honored to coordinate as a coordinator for this valedictory function of this seminar. I would like to ask all dignitaries and speakers to call on this web platform. I would like to ask faculties to reflect their experiences with the viewers and inspire our young Ayurveda graduates. For my further coordination, I would like Dr. Namrata Chaurgade to introduce our guest speakers to audience. Dr. Namrata Chaurgade, madam. नमस्कार, श्री धन्वंतरे नमः. चरक जयंती के इस पावन पर्व पर MUHS द्वारा आयोजित समारोह समारोह में मैं नम्रता आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ और चरक जयंती के पावन पर्व की आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ देती हूँ और इस आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने मुझे इस मंच पर आने का मौका दिया है. आज के इस समारोह समारंभ में हमारे साथ हैं डॉक्टर श्याम सुंदर भुतड़ा सर. आप PR कॉलेज में प्रिंसिपल के रूप में कार्यरत, अमरावती में प्रिंसिपल के रूप में कार्यरत हैं. हमारे साथ हैं ऑनरेबल डॉक्टर तुषार सूर्यवंशी सर. आप नीमा MSB महाराष्ट्र में प्रेसिडेंट के रूप में कार्यरत हैं. साथ ही हैं डॉक्टर धनंजय कुलकर्णी सर. आप आयुर्वेद व्यासपीठ न्यू दिल्ली में सेक्रेटरी के रूप में कार्यरत हैं. और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर मंगरीश रांगलेकर सर. आप BGA महाराष्ट्र में प्रेसिडेंट के रूप में कार्यरत हैं. आप और हमारे साथ है प्रोफेसर US निगम सर. आप विश्व आयुर्वेद परिषद न्यू दिल्ली में वाइस प्रेसिडेंट के रूप में कार्यरत हैं. आज हमारे साथ हैं डॉक्टर रामदास अवार्ड सर. आप नेशनल ऑर्गेनाइजेशन कमेटी आयुर्वेद महासम्मेलन न्यू दिल्ली में प्रेसिडेंट के रूप में कार्यरत हैं. और साथ ही हैं डॉक्टर खटी सर. आप विश्व आयुर्वेद परिषद महाराष्ट्र के प्रेसिडेंट के रूप में कार्यरत है. मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ और आगे के कार्यक्रम के लिए डॉक्टर रूपाली को आमंत्रित करती हूँ. बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you, madam. May I call Dr. Shyam Sundar Bhutada sir for his welcome speech. Bhutada sir. Bhutada sir. Bhutada sir. I would like to ask for his keynote speech by Dr. Tushar Suryavanshi sir, NEMA President, MSB Maharashtra. धन्यवाद. नमस्ते मैडम. Am I audible? Yes sir, please. सभी को मेरा आवाज आ रहा है ना? जी सर. आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी महानुभाव और स्पेशली भुतड़ा सर, धनंजय कुलकर्णी सर, रांगणेकर सर, US निगम सर,
मेरे परम मित्र और आदरणीय रामदास आवाड़ जी, उसके बाद में गोविंद खाटी जी, इन सभी का मैं स्वागत भी करता हूँ निमा महाराष्ट्र की तरफ से। और अभी आप सभी ने जो आज ये ज्ञान यज्ञ किया है, इस ज्ञान यज्ञ के लिए आप सभी को हार्दिक बधाइयां। वैसे देखा जाए तो चरक को चिकित्सा कहा जाता है, पर चरक संहिता का सिर्फ चिकित्सा स्थान ही महत्वपूर्ण नहीं है, ऐसा मेरा खुद का मानना है। क्योंकि 23 सालों से जो मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो चिकित्सा स्थान के अलावा सूत्र स्थान में भी ऐसे बहुत सारी चीजें हैं कि जिसका हम उपयोग करें प्रैक्टिस में तो अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं। यानी जो आदरणीय सुरानी सर थे, जिनके गाइडेंस के बाद में हमने चरक का एक अलग तरह से प्रैक्टिस करने के लिए सोचा। उन्हें वो हमेशा कहते थे कि हमेशा व्यक्ति को ज्ञान की जिज्ञासा चाहिए, ना कि शंका चाहिए। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि मैं शंका उपस्थित करूंगा तो मुझे ज्ञान मिलेगा, वैसा नहीं है। तो जिज्ञासा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जानने की जरूरत होनी चाहिए तो ज्ञान मिलता है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमें ज्ञान मिले तो हमें जिज्ञासा पूर्वक हर एक दृष्टिकोण से देखना चाहिए कि ये क्यों कहा है चरक संहिता ने। जब भी हम कोई कहानी लिखते हैं तो कहानी लिखते वक्त हम आगे क्या सोचते हैं कि इसके आगे क्या होगा, इसके आगे क्या होगा। हम अगर इस प्रकार से कोई भी संहिता पढ़े कि अरे इसके आगे मैं क्या लिखूंगा, तो हमें अपने आप संहिता की रचना की मालूम पड़ जाती है। और चरक का यह वैशिष्ट है कि हर एक अध्याय का जो रचना है उसकी वो वैशिष्टपूर्ण है। और इस अध्याय के बाद दूसरा अध्याय क्यों आया है तो उसका एक विशिष्ट कारण है। जब कोई भी चिकित्सक ये जान देता है तो उसको संहिता का उद्देश्य और सबसे पहली बात तो उसकी रचना का जो वैशिष्ट है वो मालूम पड़ जाता है। चरक की खुद की बहुत सारी विशिष्टताएं हैं, जैसे कि उसका विमान स्थान जो है वो एक अलग विशेष निमित्त जैसे बोलते हैं, विशेष ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो उसने कहा गया है। तो खाली विमान स्थान की अगर हम अभ्यास करें तो अच्छी तरह से भी चिकित्सा में उसका उपयोग कर सकते हैं। तो चरक का एक एक स्थान जो है वो सिद्धि के लिए काफी है कि कोई भी वैद्य अगर एक ही स्थान का अभ्यास करे ठीक से तो वो उस पर प्रैक्टिस कर सकता है। तो आप सभी महानुभावों का भी यहाँ पे बातचीत होने की जरूरत है। तो मैं अपने विचार यहाँ पे प्रकट कर चुका हूँ। धन्यवाद मुझे इस कार्यक्रम में बुलाने के लिए। और सबसे धन्यवाद तो दत्तात्रेय पाटिल जी के हैं जिन्होंने ये कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया है, और अभी सभी महानुभावों ने जिन्होंने सभी ऑर्गेनाइजेशंस को एक ही प्लेटफॉर्म पे लाया है। थैंक यू वेरी मच। और ऐसी बहुत सारी और सेमिनार्स और वेबिनार्स हो तो जरूरी है कि आयुर्वेद और सभी am I audible? मुझे आवाज नहीं आ रहा है। Yes, sir. तो अगर ऐसे हम बहुत सारी वेबिनार्स करते रहे तो श्योरली मैं कह सकता हूं कि आयुर्वेद का प्रचार अच्छी तरह से होगा और बहुत सारे नए स्नातक आयुर्वेद के हमें देखने को मिलेंगे। और आज जैसे कि जब मैं प्रैक्टिस कर रहा था तब सिर्फ 4 या 5 ही वैद्य थे जब मैं नासिक में आया था जो शुद्ध आयुर्वेद की चिकित्सा करते थे। पर आज देखा जाए तो कम से कम उसकी संख्या जो है वो नियरली 300-400 हो चुकी है। अगर ऐसे ही देखा जाए, ऐसे ही अगर वेबिनार होते रहेंगे तो ये संख्या जो है वो जनरल प्रैक्टिशनर से भी ज्यादा बढ़ जाएगी। और ऐसे बहुत सारे प्रैक्टिशनर्स है जिनको अभी आयुर्वेद की तरफ जिनकी जिज्ञासा बढ़ गई है और जो एलोपैथी छोड़ के आयुर्वेद सीखना चाहते हैं और प्रैक्टिस करना चाहते हैं। तो अभी सभी का धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. Now, I would like to call Dr. Dhananjay Kulkarni, sir, Secretary, Ayurved Vyaspeeth, New Delhi, who recently has contributed on Charak Aushadhi Kalpana by publishing this book. Please, Dr. Dhananjay Kulkarni, sir. Kulkarni, sir. मैडम तब तक दूसरे Sir, I would like to call Dr. Mangesh Yangnekar, sir, President, BMS Graduate Association, Maharashtra. Sir, please. Mangesh Yangnekar, sir, please. Yeah. Thank you, madam. Good afternoon. Can you hear me? Yes, sir. Yes. Yeah. A warm welcome to all the dignitaries. Thanks to Dr. Dattatreya Patil and his institution to invite me to speak on Maharishi Charak and the seminar that has been held. The most important factorial of holding such a seminar is we keep on, believing in our ancient texts. Maharishi Charak
though in Indian contemporary history, we always regard him as the father of medicine. It is our duty through these webinars to tell the world that not only is he the father of Indian medicine, he is the father of worldwide medicine, because Ayurveda, as we know in the ancient times, has laid down principles which then were stepping stones to the medicine that is known as the evidence-based medicine or the allopathic medicine. So the principles differ due to various factorials, which are not the subject of debate or discussion over here. It is always, important to believe in these principles, work on them, and have a research on them. Suryavanshi sir spoke about the Vimanstan. Vimanstan has its own very specific importances because it deals with the specific measurements, quantification, which again are, pointed out to Ayurveda as the fallout of, not gaining importance in the evidence-based system of medicine. Then the various references to toxicology, the various references to how a person should, carry himself through various seasons, what are the medicines that can be taken, are very important things to tell to the layman as well as to the whole world. Today, in the Amritkal of Ayurveda, as it is called, the world is turning towards Ayurveda and most probably to Charaka Samhita. So the importance of Charak, it is a great step taken today in this webinar. It really requires a big shout out to Dr. Dattatreya Patil and his team. So I would end my short speech. I'm too small a person, but extending my association's best wishes to Dattatreya Patil and his team, and a warm salute to all the dignitaries over here. Thank you. Thank you, sir. Now I would like to call himself as Dhanvantari and renowned practitioner Dr. Ramdasji Awad, sir, President, National Organizational Committee, Ayurveda Mahasammelan, New Delhi. Dr. Ramdasji Awad, sir, please. नमस्ते जी। नमस्ते सर। हेलो। हाँ सर, बोला। सबसे पहले आप सभी को चरक जयंती की ढेर सारी आयुर्वेदिक शुभकामनाएं। आज का दिन सही में बड़ा शुभ दिन, महान दिन है, क्योंकि आज आरस में नाग पंचमी और श्रावण का सोमवार, जो कि शिव जी चरक की जयंती आई है, तो ये आज एक त्रिवेणी संगम ऐसा एक दिन है। संगम का आज जो वेबिनार रखा है, ये है कि पर लगता है लास्ट में बैठे चल रही है, बाहर भी है। तो सतीजा मैडम साथ में मैंने थोड़ा सा सुना, तो आज दिन भर कितने महान वक्तों के यहाँ पे महान विचार हुए होंगे, ये मैं कल्पना कर सकता हूँ। मेरे मित्र और एक एक यदि हम पढ़ते हैं तो उसके ऊपर काफी सक्सेस मिल। आगे जाके कहना चाहूंगा कि एक श्लोक भी यदि हम प्रैक्टिस में लाते हैं तो हर एक की एक एक वैद्य की जिंदगी बन सकती है। जैसे मनुष्य नाम ये चरक है, तो इसका प्रत्यंतर कोविड पीरियड में देखा, क्योंकि मन शांत है तो अपने आप सब प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। ये कई पेशेंट ने देखे हैं, और कोविड के दरमियान ऑब्जर्वेशन किया कि एक 13 पेशेंट जो कि अनबिलीवेबल कह सकते हैं कि वो कभी प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं होगा, ऐसे पेशेंट कोविड के दरमियान रिलैक्स घर में थे। प्रेगनेंसी की कोई दवा नहीं चल रही थी, और प्रेगनेंसी तो रहने वाले नहीं, इस निगेटिव माइंड से या न्यूट्रल माइंड से थे, तो नेचुरल प्रेगनेंसी उनको रह गई। तो 13 के पेशेंट, और चरक का ये जो वचन बोला गर्भधारणा नाम, इसका प्रत्यंतर मैंने कोविड पीरियड में देखा। तब एक लोग है ज्यादा समय नहीं लेते हुए कि आज जितने भी वक्ताओं ने यहाँ पे अपने विचार प्रकट किए, को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ।
डॉक्टर दत्ता जी सर, आज रूपाली मैम भी काफी दिन के बाद दिखाई दी, तो इन सब व्यासपीठ पर और इस धन्वंतरि आप सभी ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, महाराज। धन्यवाद sir for reflecting your views and sharing your experience with our students and dignitaries. Now I would like to call Dr. Dhananjay Kulkarni sir if available. Today's day is a very special. If we have observed, the total session is organized and implemented by all our three Vaidyas. And I think this is a very good initiative taken by our coordinators and co-chairman or faculties. I would like to thank Dr. Govind Khatri sir and will ask for his presidential speech regarding this session and about this seminar. Dr. Govind Khatri sir, President Vishwa Ayurved Parishad Maharashtra. Khatri sir. नमस्कार। 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 अभी तक जो सेशन चल रहे हैं और अनेक वक्ताओं ने अपनी भावनाएं व्यक्त की कि अभी भी जैसे आभार सर ने एक सूत्र के बारे में बताया कि जिस सूत्र से उन्होंने कोविड के दरमियान जिस प्रकार से उन्होंने अपने पेशेंट के लिए लाभान्वित बोला है और कहा है, इस प्रकार से ये अपने को अपने जीवन में और चिकित्सा में किस प्रकार से चरक संहिता लाभान्वित होती है, यह ऑब्जर्व करने की बात है। मैंने शुरू में पहली वक्तव्य में यह बोला था कि चरक संहिता के हर सूत्र में हमें कुछ ना कुछ तो मिलता ही है और जितना हम ज्यादा पढ़ेंगे उस प्रकार से हमको यह लाभान्वित होता है कि हर सूत्र कुछ ना कुछ काम का है। एक भी सूत्र ऐसा नहीं है कि जो हमको कुछ ना कुछ दे सके। हम सारी सूत्र को, और अभी जो पहले वक्ता ने सिद्धिस्थान के बारे में बोला है या अनेक वक्ताओं ने अलग अलग अपने भाव प्रकट किए हैं, इस प्रकार से हमको ये पता चलता है कि चरक संहिता का कोई भी अध्याय 120 अध्याय तक एक किसी प्रकार से उसका कोई भी सूत्र निरर्थक नहीं है और जितना हम अध्ययन करेंगे उतना ही हमको लाभान्वित होगा, यह हमारी मान्यता है। चरकस्तु चिकित्सते यह हम सेमिनार का आज का विषय था और चरकस्तु चिकित्सते करते हुए पहले अध्याय से लेके जो चिकित्सा के अंतिम अध्याय तक जो हम पठन करते हैं कि सिद्धिस्थान में सारा पंचकर्म भरा है, फिर भी पंचकर्म की व्याख्या दी है। फिर भी पिछले दो हमारे जो वेबिनार थे उसमें एक डॉक्टर अभिजीत सराफ ने हमारे कि जिन्होंने तंत्र युक्ति पे भाष्य किया था और उनकी मास्टर भी है तंत्र युक्ति पे, तो तंत्र युक्ति का कहाँ किस प्रकार से उपयोग होता है ये भी हमको अध्ययन करना बहुत आवश्यक रहता है। इस प्रकार से हर सूत्र का हमको अर्थ विशद करते हुए उसकी उपयोगिता भी हमको ध्यान में रखनी चाहिए। इस प्रकार से ये अभी चरकस्तु चिकित्सते ये सेमिनार का मैं शांति से ये सुन रहा था। हर वक्ता का जो कोई कुछ उनका मंतव्य था वह भी मैं सुन रहा था, तो मुझे बड़ा संतोष हुआ कि हम जिस प्रकार से चरक संहिता का ये अध्ययन करना चाहते हैं और प्रचार प्रसार करना चाहते हैं वहाँ फलान्वित हो रहा है। ये तीसरा साल है और लास्ट में प्रो वीसी ने हमको प्रॉमिस किया है कि अगले साल का जो सेमिनार होगा वह ये वेबिनार प्रत्यक्ष में होते हुए नासिक में होगा। तो दत्ता पाटिल ने वैसे 4 टीम के बारे में बताया था, लेकिन एक साल है हमको किस प्रकार से हम इसको कार्यान्वित कर सके और ज्यादा से ज्यादा लोग रूबरू हो सके खुद को। ये बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो हमको सिर्फ कैमरा पे मिलते हैं लेकिन प्रत्यक्ष में नहीं वो मिल नहीं पाते। जब हम प्रत्यक्ष में बोलेंगे तो उसका अर्थ अलग होगा
और ज्यादा से ज्यादा हम अभी अधिक संख्या में बढ़ के चरक संहिता पे अच्छा अध्ययन कर सकेंगे। मैं इस मनोकामना के साथ मेरे 2 शब्द को विराम देना चाहता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद सर। सुबह से शुरू हुए इस महर्षि चरक जयंती के सेमिनार का कंक्लूडिंग करने के लिए मैं वोट ऑफ थैंक्स के लिए भावना बलमे मैडम नागपुर इनको आमंत्रित करती हूँ। बलमे मैडम। थैंक्स रूपाली मैडम। एम आई ऑडिबल? या मैडम। ओके। चरक जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित चरकस्तु चिकित्सते इस नेशनल वेबिनार के समारोह में मैं उपस्थित सभी मान्यवरों का आभार व्यक्त करती हूँ। आज के इस समारोह के अध्यक्ष माननीय गोविंद हट्टी सर, प्रेसिडेंट विश्व आयुर्वेद परिषद, इन्होंने अपने आरोग्य व्यवस्था में से समय निकालकर और इस कार्यक्रम की नींव उन्होंने डाली है और यह पूरा कार्यक्रम यशस्वी करने के लिए उनकी हमें बहुत मदद मिली है, इसलिए मैं उनका आभार व्यक्त करती हूँ। उसी तरह से इस कार्यक्रम के कीनोट स्पीकर्स माननीय डॉक्टर तुषार सूर्यवंशी सर, प्रेसिडेंट नीमा MSB, माननीय धनंजय कुलकर्णी सर, सचिव आयुर्वेद व्यासपीठ, माननीय मनगिरीश रांगणेकर सर, माननीय धनंजय कुलकर्णी सर और माननीय US निगम सर, उपाध्यक्ष विश्व आयुर्वेद परिषद। उसी तरह से आज हमारे लिए समय निकालकर आए हुए माननीय रामदास आवाड सर, प्रेसिडेंट नेशनल ऑर्गेनाइजेशनल कमिटी आयुर्वेद महासम्मेलन न्यू दिल्ली, इनका मैं आभार व्यक्त करती हूँ। उन्होंने अपना वक्तव्य यहाँ पर प्रस्तुत किया। इसलिए आजादी का अमृत महोत्सव से यह हमारा चरक जयंती का कार्यक्रम शुरू हुआ है, जिसमें दत्ता पाटिल सर ने पुढाकार लेकर यह प्रोग्राम जो है शुरू किया है। माननीय खट्टी सर इस कार्यक्रम की संकल्पना यहाँ पर लाई, प्रस्तुत की, इसलिए और उन्होंने हम सबको इसमें सहभाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया, इसलिए मैं उनका आभार व्यक्त करती हूँ। उसी तरह से कार्यक्रम के लिए माननीय मिलिंद आवारे सर, फैकल्टी डीन, इन्होंने समय निकालकर व्यक्तिशः सबको कांटेक्ट करके सहभागी किया है, इसलिए मैं उनका आभार व्यक्त करती हूँ। इसी तरह से महेश हारित सर, संजय सातपुते सर, श्याम सुंदर भुतड़ा सर, प्रदीप भाबड़ सर, विनोद पाटिल सर, विजेश मिश्रा सर, राजू ताटेवार सर, नारायण पाटिल सर, प्रशांत खाड़े सर और डॉक्टर जया जाने मैडम, इनका मैं इस वेबिनार के लिए सहकार्य प्राप्त हुआ, इसलिए मैं उनका आभार व्यक्त करती हूँ। इस कार्यक्रम के लिए अपार मेहनत लेने वाले और सबके लिए संपर्क करके टेक्निकल सपोर्ट देकर कार्यक्रम को यशस्वी करने के लिए मैं विशेषतः डॉक्टर दत्ता पाटिल सर का आभार व्यक्त करती हूँ। इस कार्यक्रम को यशस्वी करने के लिए हमारे उद्घाटन सोहरा के और साइंटिफिक सेशन के सभी एंकर्स, चेयरमैन, को चेयरमैन, कोऑर्डिनेटर, इन्होंने सबके साथ संपर्क करके यह सभी सेशन यशस्वी किए हैं, इसलिए मैं उन सभी का आभार व्यक्त करती हूँ। समय के लिए मैं यहाँ पर सभी का नाम लेना नहीं चाहूंगी, लेकिन सभी लिए मेरे आदरणीय है। आज के वेबिनार के गेस्ट स्पीकर डॉक्टर शुभांगी कामरे मैडम, डॉक्टर वैशाली माई मैडम, इन्होंने अपने वक्तव्य को बहुत ही अच्छी तरह से सादर किया है, इसलिए मैं उनका आभार व्यक्त करती हूँ। हमारे रजिस्ट्रेशन कमेटी के लिए मैं विशेष आभार यहाँ व्यक्त करती हूँ। कल शाम को 7 बजे तक के हमारे रजिस्ट्रेशन जो है 8,589 हुए थे और रात में 9 बजे मैसेज आया है कि 10,000 के ऊपर ये जो है गए हैं। तो हमारा जो उद्देश्य था कि हमारे 10,000 से ऊपर रजिस्ट्रेशन होने चाहिए, तो वो हमने पूरे किए हैं। इसलिए मैं रजिस्ट्रेशन कमेटी के लिए 11,778 हो गए थे मैडम। ओके सर, 11,700-1800 ऐसा ही अभी हम आगे जब करेंगे तो इससे अधिक कोशिश करके और ज्यादा रजिस्ट्रेशन करेंगे सर। तो इसलिए मैं रजिस्ट्रेशन कमेटी के लिए जो सदस्य है माननीय पेठे सर और माननीय सवई सर, इनका मैं विशेष आभार व्यक्त करती हूँ। ऑनलाइन पेपर पोस्टर प्रेजेंटेशन में सहभागी सभी आयोजक, एग्जामिनर्स, इनका भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ।
सभी महाविद्यालयों के विभाग प्रमुख ने हमें बहुत ही सहकार्य किया है, उनका भी मैं यहाँ पर आभार व्यक्त करती हूँ। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उपलब्ध करने के लिए सभी टीम का मैं यहाँ पर आभार व्यक्त करती हूँ। उसी तरह से माननीय निकुम सर और आवारे सर, इन्होंने अगला हमारा चरक जयंती का कार्यक्रम जो है महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ यहाँ पर करने के लिए आश्वासन दिया है, इसलिए मैं उनको धन्यवाद देती हूँ। मुझे इस वेबिनार में बोलने के लिए संधि दी है, इसलिए मैं आयोजक का यहाँ पर आभार व्यक्त करती हूँ। और आखिरी में मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि पूर्ण विराम यह आखिरी नहीं होता है, एंड नहीं होता है, क्योंकि पूर्ण विराम के बाद भी हम लोग सेंटेंस लिखते हैं। उसी तरह से आभार प्रदर्शन ये एंड नहीं होता है, तो यह अगले नए कार्यक्रम की हमारी शुरुआत होती है। धन्यवाद, धन्यवाद सर। ओवर टू रूपाली मैडम। थैंक यू मैडम। पाटील सर, राष्ट्रगीत घ्यायचं का शेवटी? यस यस यस, मैं सभी को राष्ट्रगीत गुजारिश करना चाहूंगा, वह अपनी जगह पे राष्ट्रगीत के लिए खड़े हो जाएं और एक साथ राष्ट्रगीत शुरू करेंगे। शुरू कर। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना उत्कल तव शुभ नामे गाए, तव शुभ आशीष गाए, तव जयगाना। जन गण मंगलदायक जय भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय जय भारत माता की जय। On the behalf of the coordinators, we declare this seminar to be concluded, and we will meet at Nashik 2024. Yes, yes. Thank you. Thanks everyone. Thank you.